here, it is pointed out that parties to counsel, it is pointed out that in uh, this appeal, there is no need to issue notice to the respondent number one and one, because the award is jointly and severally against the owner, driver, and the insurance company. Insurance company is already represented. List this case for hearing along with the record. 709, 710, 711. 12 हैं? 12 11 की 12? 12 11 नहीं है, 12 कर दीजिएगा। My lord, yesterday Honorable Division Bench passed this order, my lord. दिखाइएगा। क्या ऑर्डर्स हैं? तो आईजी साहब का एफिडेविट हैं? आईजी साहब का एफिडेविट था 11/7 अच्छा, last line. हाँ हाँ, It is directed that the present superintendent of police shall place the order sheet which is being filed today before the court along with the application moved by the head constable and the TI before the inspector general of police. there is a stay of the order dated 11/7/2023. चलिए बताइए, by the division bench. So also all further proceedings are stayed accordingly. List this case after decision in WA 1059. आप लोग यहाँ कुछ कहते हैं, वहां कुछ कहते हैं। आप ही ने कहा था कि आईजी का एफिडेविट करवा दीजिए। लिखिएगा, उसमें लिख लीजिएगा, देयर इज एम्बिग्विटी इन द स्टैंड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इन दिस कोर्ट, the stand of the state government was that affidavit of the IG be called for and not of the Director General. And the stand taken before the Honorable Division Bench is contrary to the stand taken before this court. It is a serious and sad matter that state, which is supposed to be the guardian of the litigant, is acting in a ambiguous and dual manner. But since there is a stay, list this case before another bench after decision in WA 1059 of 23. I'll not trust you now. हाँ, डाल दीजिएगा, सबका नाम डाल दीजिएगा। लिस्ट अनदर बेंच, मेरा नाम डाल दीजिएगा। आपको जो बेंच पसंद आती है वहां जाके केस किया करिए। आप लोग ये जो ड्युअलिटी अपनाते हैं, यहाँ कुछ कहते हैं, वहां कुछ कहते हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। Now, whatever you say it in writing. No oral instructions will be taken on record. चलिए बताइए। She was sued for नाम ले लीजिए, उनका नाम ले लीजिए डलवाने के लिए। she sued for ejectment was filed before the court below, Lordship. जी, Now, Lordship, Annexure P2 is the civil suit at page 18, Lordship. पेज 18, 18, sir. जी, Sir, I am the टेनेंट। Prativadi John Chokse. Now, he has expired. I'll ask on record, Lordship. जी जी, Lordship, may kindly appreciate कि according to them, they are the owner of Lordship Para 1, यह है कि मकान नंबर 58D 58 गली नंबर 10 मोतीराम कंपाउंड सदर बाजार जबलपुर पंजीकृत बंटवारा नामा दिनांक 14/3/84 के माध्यम से वादीगण के पूर्वज श्रीमती ललिताबाई पत्नी श्री कन्हैया लाल चौक से एवं श्रीमती ग्यारसी बाई। सो सर, इन्होंने बोला कि इनके यहाँ के मालिक हैं
और हम इनके किराएदार, इसके बेसिस पर इन्होंने, और वी आर नॉट पेइंग देम रेंट and therefore there is a violation of provisions of section 12 of the MP Land Revenue Code. Now, Lordship, after uh, service of notice, we filed Annexure P3 our return statement, Lordship. जी Page 31, sir. जी सर इसमें हमने स्पेसिफिकली ये बात स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पैरा? रेज किया है पैरा सर, पैरा 1 itself, पैरा 1 पेज 31 सर, Annexure P3. यह कि कंडिका 1 में वर्णित कथन भ्रमात्मक एवं बेबुनियाद है, जिनसे स्पष्ट इनकार है। इस कथन से स्पष्ट इनकार है कि मकान नंबर 58D, गली नंबर 10, मोतीराम कंपाउंड, सदर बाजार, जबलपुर, पंजीकृत बंटवारा नामा दिनांक इत्ते के माध्यम से वादीगण के पूर्व श्रीमती ललिताबाई पत्नी श्री कन्हैया लाल चौकसे एवं श्रीमती ग्यारसीबाई पत्नी श्री लक्ष्मण प्रसाद चौकसे को प्राप्त हुई थी तथा उपरोक्त संपत्ति दोनों की संयुक्त संपत्ति थी। इस संपत्ति में प्रतिवादी किराएदार के हैसियत से निवास कर रहा है, जबकि वास्तविक टर्मिनोलॉजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि उपरोक्त वादग्रस्त संपत्ति जो कि श्री मोतीराम एंड सन्स की संपत्ति है, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वे निसंतान मृत्यु को प्राप्त हुए। उक्त संपत्ति जो कि छावनी परिषद जबलपुर के स्वामित्व अधिकार की है, जिसमें मोतीराम का कब्जा था और छावनी परिषद में उनका नाम अधिकृत ऑक्यूपेंसी राइट होल्डर के रूप में दर्ज है, और वादग्रस्त स्थान पर प्रतिवादी के नाना स्वर्गीय वीएन सारंगम लगभग 100 वर्ष पूर्व से निवासरत थे। उनके द्वारा छावनी परिषद जबलपुर टैक्स अदा किया जाता रहा। उक्त स्थान पर प्रतिवादी की मां स्वर्गीय आरोग्या मेरी परिवार से ही निवास थी। प्रतिवादी अपनी नाना के जीवन काल से अपने माता पिता परिवार के साथ वादग्रस्त तौर पर निवासरत है, और प्रतिवादी छावनी परिषद के वादग्रस्त स्थान पर टैक्स अदा किया जा रहा है, अर्थात प्रतिवादी वादग्रस्त स्थान पर स्वत्व अधिपत्यधारी है। व्हाट इज रॉन्ग इन द इम्प्यूग्ड ऑर्डर? आपने एक दस्ता आवेदन लगाया। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल कोर्ट में ऑफ कोर्स आई से दैट्स अ वेरी प्रॉपर ऑर्डर, लॉर्डशिप, दैट देयर इज नो ambiguity in the order, that it is for the plaintiff to choose to whom he want to arraign on it. Now, Lordship, the very important aspect is to bring a suit for ejectment. Two very conditions are important, Lordship. Their ground is for one first ground is for their own requirement, that is 12(1)(e). Lordship, it very specifically says that person should be owner and the landlord. नॉलेजशिप तो आप तो 110 की एप्लीकेशन। हाँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। 110 से किसको जोड़ना चाह रहे थे ये बता दीजिए। हाँ सर, कैंट बोर्ड को सर जोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि सर ये प्रॉपर्टी मोतीराम एंड सन्स को मिली थी, और सर है वो आपकी 110 वो प्लेंटिफ डिसाइड करेगा उसको किसको पार्टी बनाना। नहीं सर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ पेज 41 पे आइए सर। पेज 40 बनाइए। यस सर, यस। He will face the consequences. वो सर आपकी surrender of necessary party के लिए खारिज हो सकता है। सर वो मैं, मगर ये देखिए सर, पेज 41 देखिए सर, ये 95 98 का इनका ये डॉक्यूमेंट इनका फाइल किया हुआ है। ठीक है, नॉट में काइंडली अप्रिशिएट। ये हाउस नंबर 58, नेम ऑफ द ओनर मेसर स्वर्गीय मोतीराम एंड सन्स। ठीक है। ज्ञान प्रकाश, दैट इज वन ऑफ दैट इज डिफेंडेंट। ग्यारसी बाई, ललिता बाई, ये सब सर, ये हम सब ऑक्यूपेंट हैं। Now he is saying that he is the owner of 58D and I am the tenant. Now Lordship, I say when this is the document, एविडेंस का मैटर है ना। नहीं सर, एविडेंस नहीं, ये इनका एडमिशन है। लॉर्डशिप में काइंडली अप्रिशिएट। ठीक, मैं सर इनका जो जवाब एक आया है उसमें आप थोड़ा सा, क्योंकि इफ देयर वुड नॉट हैव बीन एन एडमिशन, द सिचुएशन वुड बी डिफरेंट सर। ये सर एप्लीकेशन फॉर टेकिंग डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड सर है। इसमें सर इन्होंने जो नीचे एप्लीकेशन 110 की एप्लीकेशन का जवाब दिया था। आइए नंबर, तो ये आइए नंबर तो मैं वो नहीं आपके पास नहीं ये 11392 सर, 11392 बटे 2022 मेरे उसमें क्योंकि आइए नहीं है सर जी। मैंने फाइट किया जवाब सर। उसके साथ एक जवाब इन्होंने हमारी जो 110 एप्लीकेशन का सर, पैरा 2 सर, ये देख लीजिए जी। यह कि कंडिका 2 से पूर्णतः इनकार है। वादग्रस्त संपत्ति छावनी परिषद जबलपुर में स्थित है, यह स्वीकृत तथ्य, और छावनी परिषद ही जब वादग्रस्त संपत्ति की स्वामी है, किंतु छावनी परिषद जबलपुर में जितनी अचल संपत्तियां स्थित हैं वह सब छावनी परिषद के स्वामित्व भूमि पर निर्मित की गई हैं, किंतु वादीगण छावनी परिषद की भूमि पर बने बिल्डिंग और मालिक स्वामी पंजीकृत विक्रय बंटवारा नामे के माध्यम से उनके द्वारा प्रतिवादी को अपने स्वामित्व का बिल्डिंग का हिस्से पे किराए पे दिया है। नाउ लॉर्डशिप, आई से व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक एडमिशन, नाउ लॉर्डशिप, नाउ दिस वेरी aspect was very well considered. I had given the judgment also, lordship, जी।
This is AIR 1999 Supreme Court 2294. दीजिएगा Now, Lordship, the Honorable Supreme Court, while dealing with this very situation, जी Lordship, may kindly come to para 12 at page 2297. Comment. Under the cantonment land, Lordship, got it. जी जी Under the Land Cantonment Act Administration Rules 1925, general land registers are being maintained in respect of Sagar Cantonment. These registers were produced before the High Court and were also produced before us. These are old registers maintained in the form prescribed by the said rules. In these registers, the property in question is shown as being held by S.N. Mukherjee on old grant basis. As explained by Mittal in passage cited above, the tenures under which the permission was given to civilians to occupy government land in the cantonment for construction of bungalow on the condition of right of resumption of the ground, if required, came to be known as old grant tenures. Such tenure were given to in accordance with the terms of the order number 179 issued by the Governor General in Council in the year 1836. These requires that the ownership of land, these requires that the ownership of land shall remain with the government and land cannot be sold by the grantee. Only the house or the property thereon may be transferred. Such transfer would require consent of the officer commanding the station when the transfer is to a person not belonging to the army. In respect of old grant tenure, the government retains the right of resumption of land. Now, Lordship, may kindly appreciate, this is an admitted position. The old grant land was to the Motiram sons. Now, Lordship, uske baad, that land was sold to them. I said there is no approval by the cantonment authority. जी And Lordship, may kindly appreciate my application for 110. That is at Annexure P5, जी page 62. जी And Lordship, may kindly appreciate the document annexures at 64 and 65, sir. where is the allotment in your favor? No, Lordship, No, please. mere favor. Where is the allotment in your favor by the cantonment? Because the same logic when applied in this case of the Chief Executive Officer versus Surendra Kumar, Vakil, then you are required to show allotment in your favor. So, therefore I say, Same. हाँ, बिल्कुल. Same logic will be applicable. Similar logic will be applicable to me also. But we say, Lordship, because Motiram and Sons के servant quarters में हमको permissive possession से we were permitted, and cantonment board till date has not removed us. ठीक And till 95 I had shown the record which is filed by the plaintiff. ठीक Now, Lordship, I kindly appreciate जी page 64 of my petition, sir. Yes. जी This is a notice dated 13/5/2000. जी सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जबलपुर छावनी क्षेत्र में रक्षा संपत्ति अधिकारी एवं छावनी परिषद के प्रशासनिक प्रबंध मैनेजमेंट के बंगले, जमीन एवं मकानों की खरीदी बिक्री बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए ना तो बेचे खरीदे और ना ही उनकी खुली संपत्ति पर किसी प्रकार के अवैध निर्माण करें। सभी बंगले, मकानों की जमीनों की मिल्कियत रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की है। खुली जमीनें बने हुए स्वीकृत प्राप्त किए गए बनाए गए रहवासी मकान आदि को बेचना खरीदना छावनी परिषद अधिनियम 1924 आईपीसी सीआरपीसी के तहत दंडनीय अपराध है। पूर्व में छावनी परिषद कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति द्वारा भी ऐसे सूचित किया गया था। रक्षा संपत्ति अधिकारी छावनी परिषद के प्रशासन और निम्नलिखित बंगलों में अवैध खरीदी बिक्री कर खुली जमीन पर अनाधिकृत निर्माण अगर किया जाता है तो दंडनीय अपराध होगा। उन पर छावनी परिषद 1924 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लॉर्डशिप, काइंडली कम टू सीरियल नंबर 13 जी 58 मोतीलाल कंपाउंड। ठीक है और इसी तरीके के आगे भी सर, दिस इज द नोटिस। ठीक आई से आई डोंट क्लेम एनी राइट, आई से टाइटल। नाउ दे से दे आर द लैंडलॉर्ड एंड द ओनर, एंड एडमिटेडली दे आर नॉट द लैंडलॉर्ड। ठीक एंड लॉर्डशिप में काइंडली अप्रिशिएट दिस इज वन जजमेंट दैट इज 2002 MPHT जी पेज 3232। पैरा 10 सर। जी पढ़िए क्या है। Now, Lordship, while dealing with the requirement, bona fide requirement, नहीं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, सॉरी। No, bona fide requirement is not to be seen. सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, sorry. This is, You sir, are exceeding. No, only 110 application. No, no. Bona fide requirement is not required to be सर seen. मैं उस पे नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ what I am submitting, only one line I want to say, sir. For bona fide requirement, sir, landlord and ownership is a That is a different issue. no, that is an important issue. ठीक है, वो सूट फेल हो जाएगा उनका, it will be dismissed. But I say, Lordship, and this is an ठीक, admitted. चलिए लिखिएगा।
Shri Deepak Awasthi, learned counsel for the petitioner. Ms. C.V. Rao, learned counsel for the respondents. This petition under Article 227 of the Constitution of India is filed, being aggrieved of order dated 2/8/2017, passed by learned 10th Civil Judge Class 1 Jabalpur in RCSA 26000016/15, rejecting an application under Order 1 Rule 10 CPC filed by the defendant petitioner. Next para. Petitioner's contention is that the said application has been inappropriately dismissed. Full stop. It is submitted that plaintiffs claim that they are the landlord of the suit property is not made out. It's a property of the cantonment under the management of the chief executive officer of the cantonment. Full stop. Relying on the judgment of Supreme Court in Chief Executive Officer, etc. versus Surendra Kumar Vakil and others, AIR 1999 SC 2294. It is, and reading paragraph 12, it is submitted that under the Cantonment Land Administration Rules 1925, general land registers are being maintained in respect of Sagar Cantonment. Full stop. It is pointed out that these registers were produced before the High Court and were also produced before us. There are तो पैरा 12 ही पढ़ा था ना आपने? हाँ जी सर, मेरा यही कहना था कि बिना परमिशन के Full कोई stop. ट्रांसफर नहीं। It is mentioned in para 12 that the ownership of land remain with the government and the land cannot be sold by the grantee. Only the house or other property thereon may be transferred. Such transfers would require consent of the officer commanding the station when the transfer is to a person not belonging to the army. In respect of old grant tenure, therefore the government retains the right of resumption of land. Full stop. Reading this judgment, it is pointed out that petitioner had filed an application for impeding cantonment board as a party, in as much as there is a notice issued by the cantonment board contained in page 65 of the 64 and 65 of the writ petition to the effect that property cannot be sold and transferred without the consent of the cantonment board. Thus, placing reliance on the said judgment and the notices issued by the cantonment board, it is pointed out that plaintiffs are not the owners of the land and therefore they could not have transferred the property through mutual consent. Full stop. It is further submitted that Moti Ram died intestate and petitioner being in permissive possession cannot be evicted by taking a plea of ownership. Next paragraph. Ms. C.V. Rao supports the order. After hearing learned counsel for the party and going through the judgment in Surendra Vakil jo bhi naam hai, Supra, it is evident that there is embargo on transfer of land. It is held that grantee cannot transfer the land. Ownership is of the government and government can resume the land in its favor as and when it desires. However, there is no embargo on transfer of the house as is apparent from the ratio of law laid down in para 12 of the said judgment cited by Shri Deepak Awasthi. Therefore, house being the subject matter of this suit where eviction is being sought and it is not in dispute that any property has been sold or alienated subsequently. नहीं सर यहाँ थोड़ा फैक्ट्स नहीं सर, फैक्ट्स में गलत हो जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। which is the ownership of the central government, plaintiff being the dominus litis has a right to choose as to whom he wants to prosecute and whom he does not want any relief. He will face the consequences as held by the learned 10th Civil Judge Class 1. There is no illegality in the impugned order denying application under
Order 1, Rule 10, read with Section 151, filed by the defendant petitioner, or calling for interference in the supervisory jurisdiction of this court. Appeal petition fails and is dismissed. सर एक फैक्ट्स पे सर बस मेरा ये कंटेंशन था, they are claiming ownership and they are claiming that they are the owner and landlord. And lordship, second is that they had subsequently purchased the property. अरे हम तो सिर्फ 110 नहीं सर, फैक्ट में आपने लिख दिया कि subsequently सर हमारी कंटेंशन ये है कि that without permission it cannot be sold. Next. So at least fact. Lordship kindly pass over. Lordship senior counsel Siddharth Sahib argument. फाइनल आर्गुमेंट वाले दिन पास ओवर नहीं होता है. दिस इज अ सेटल्ड नॉ. फाइनल हियरिंग 2:15 से लेता हूँ मैं, उस दिन पास ओवर नहीं करता हूँ. Lordship इसको मंडे के लिए रख ले. मंडे नहीं लिखिएगा. वो मनीष साहब argument. For the petitioner, praise for time as arguing counsel is not available. List after 2 weeks. Milad, my submission that I am for item number 2.1. ठीक है होगा. Milad, this is case साथ को सब साथ में लगा दीजिए. pending since Milad Who is responsible? April 2013. Who is responsible? My application Milad. Who is responsible for? Milad, I never made any. ठीक है आपने नहीं किया. आप you are all sailing in the same boat. चलिए. Lordship my presence behalf of हाँ लिख के ले दीजिए पर्ची पे आ जाएगी. 2.3 में का. आ जाएगी. Serial number 3. Your Lordship item number 95 kindly grant to permission Your Lordship for filing for reply. कितने साल से वकालत कर रहे हैं आप? अभी 2 month हुआ है. हाँ तो आप अपने सीनियर कौन है आपके? ऋत्विक पराशर सर. उनको बुला के लाइए. इस तरीके से बीच में खड़े होकर परमिशन नहीं मांगी जाती है. 10:15 बजे कहाँ थे आप? Sorry Lordship. आपको सिखाया नहीं गया है वकालत कैसे की जाती है? Aware नहीं थे Your Lordship. यू शुड बी सॉरी. इनको कोई परमिशन मत दीजिएगा. सुबह 10:15 बजे खड़ा हुआ जाता है. बीच में खड़े हो जाते हैं आप किसी भी समय. बुला के लाइए अपने सीनियर को. उन्होंने सिखाया नहीं आपको. Sorry Lordship. देखिएगा there is adjustment of the arguing counsel. Case is adjourned. List after 4 weeks. After 3, Huh? 3 is my lord. हाँ 3 में adjustment है. दोनों साथ में सुने जाएंगे. No, my lord. I'm ready, my lord. You may be ready. Adjustment is my lord. मेरे colleague का है, my lord. मेरा नहीं. कलीग का 3 नंबर में है. उसमें लिखा है ना. पर एडजस्टमेंट का नोट क्यों लगाते हैं आप लोग? My lord, मेरे colleague का है, my lord. मेरा नहीं है इसमें. चलिए बताइए क्या My है. lord. This is my lord. Both applications are, my lord, arising out of one crime number, my lord. This, my lord, the NDP matter of NDPS, my lord. जी. My lord, in item number 3, my lord, the 2 kilo 100 gram is, my lord, seized from the possession of the applicant, my lord. In item number 3.1, my lord, the 2 kg 400 gram, my lord, has been possession from the joint possession of the applicant. Charge sheet is already been filed. पहले 3 पे बहस करें ना. 3 में 2 kg 100 ग्राम हुआ है. Yes, sir. जी. फिर And there's सेकंड no पेल एप्लीकेशन है ये. Yes, my lord. हाँ फिर क्या हुआ इसमें? But the charge sheet is already been filed, my lord. जी. Charge sheet is filed, my lord. सीजर विटनेसेस हो जाने दीजिए, उसके बाद आइएगा. Praise for withdrawal of the application with liberty to renew prayer once Caesar witnesses are examined before the court of law. 3.1 में भी सेम ऑर्डर कर दीजिएगा. चलिए. Serial number 4. Serial number 4. Water Singh. हैं? Kindly give the liberty my lord. क्या हुआ? File first appeal my lord. देखिए, praise for withdrawal of this miscellaneous appeal. 711 Orders to file first appeal. Yes. Let certified copy of the order be returned to the appellant counsel on his production of photocopy. Serial number 5 drop. Serial number 6. My lords, The application, but there was a direction for the contempt record, right? जी. There is a direction for. CCP का my lords had summoned the records of contempt 897. 17. आ गया रिकॉर्ड. रिकॉर्ड आ गया. वो बंच था ना साथ. 89 897 of 17, my lord. 897 जी. उसमें क्या हुआ? ये भी लगा था उस दिन. जी No जी. doubt रिकॉर्ड about it. बुलाने के लिए आप बोल रहे अब आपने बुलवाया था.
एडॉप्शन ऑफ रिप्लाई लिखा है 8/2, उसके बाद क्या हुआ? इन्हें जवाब प्रस्तुत किया था उस कंटेम्प्ट पिटीशन में, am I right? Right. You want to Yes. draw the copy of the order, right? रिकॉर्ड ऑफ द कंटेम्प्ट पिटीशन सिविल नंबर इतना इतना 897। Right. आज तो लगाने क्यों नहीं लगा है ये? Right. क्यों नहीं लगा ये कंटेम्प्ट पिटीशन? See, so that's 897. लगी तो है। नहीं, रिकॉर्ड आया होगा, इट्स डिस्पोज्ड ऑफ, सो नॉट शोइंग इन द हाँ, लिस्ट। ठीक है, रिकॉर्ड है। हाँ, ठीक है, क्या करना क्या है इसमें आज? So in fact, I have made an application, my lord, for recall, my lord, of the order, which was passed in the writ petition, my lord. जी, That was WP 8887 of कॉल ऑफ द 2017. ऑर्डर की एप्लीकेशन बनेगी कि रिव्यू बनेगा? उसमें नहीं किया हमने. Actually, when I was arguing the matter in the IA, जी, which is for recall in WP number 8887 of 2017, जी, the counsel for the respondent requested this honorable court for requisitioning of the record of this contempt matter. that has come, that has come। For it is for him to demonstrate why he called for that records. बताइए ना क्यों बताया, बुलाया था आपने? क्योंकि हमारा ये कहना है, may I मतलब make my submission then why, my lord, I made that prayer for calling for the record? जी, My lord, the main order is passed in WP number 1660 of 17 on 21st of April 23. जी, On that date, 4 bunch matters were listed before your lordships. The main order is passed in WP 1660 17, Lord. जी, Then there are 2 other writ petitions, and then the contempt is also disposed of by the same identical order. The grievance of these petitioners is identical in all these cases, Lord. They say that there are already repeated orders of this court for framing the scheme of regularization, and the petitioners were not given the benefits, my lord, and the contempt was also filed for that purpose. So in the contempt, my lord, the Nigam, whom I represent, the Adivasi with Kalyan Nigam, they have filed a compliance report in 2017 itself, bringing on record Annexure R1, which is an order of 4517, saying that this is a communication from the state government that the scheme of regularization. लिबर्टी दी तो है that they can challenge that So communication with that the what state I am saying is that 2017 में जो कंटेम्प्ट में रिप्लाई आया उसमें वो ऑर्डर था कि स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम रिजेक्ट कर दी है। ठीक है। 17 के बाद उस कंटेम्प्ट में कोई काउंटर नहीं आया, दैट कंटेम्प्ट कंटिन्यूड विद द बंच। माय लॉर्ड टुक नोटिस ऑफ दैट रिप्लाई ऑफ कंटेम्प्ट because that order was placed on record only in contempt. So we relied on that. That virtually, my lord, ठीक है, I have understood। तो उसको चैलेंज नहीं किया है, तो वो कह रहे हैं यही तो लिखा है हमने इनको, वो लिबर्टी दिया है। Petitions are disposed of with liberty in favor of the petitioners, जी। that if they so desire, they may challenge the validity of the communication of the state government dated 4/5/2017 in appropriate proceedings, and if they succeed, then they may be entitled to the consequential benefit। Their contention is that in the can I submit, please, please? please। Can I submit, Please, please। My lords, this IA comes in 8887 of 2017, my lords, Ji. which my lord was kind enough. We were not able to present that day, my lords, on the presentation with the council for respondent number for the Adivasi Vikas Nigam. The petitions, my lord, were disposed of with a liberty, my lords. Ji. My prayer to my lords is twofold, my lords. Number one, which we spell it out in our para 9 of a present application, my lords. Yes, let us see your para 9 of your My application. That is Where IA you number. want to say? The IA number would be, my lords, 6330 of 23, Ji. filed on 8/5/20. Yes, come to para 9, yes। With my lords, that when WP number 8887 of 17, along with connected cases, were posted for its consideration on 21/4/23 in absence of petitioner's counsel, after In hearing the absence of counsel- petitioner counsel, ऐसा highlight किया जाता है जैसे we prevented the counsel to appear। No, we don't say that. We were not present, my lord. This is what we're trying to bring it out to my lords. In the after hearing the counsel for the respondents, this honorable court was pleased to dispose of the said petitions with liberty to applicants for assailing the validity of the order dated 4/5/17 in appropriate proceedings. With due respect, there's a manifest error on the face while passing the order on 21/4 in WP number so and so for the following and connected. A, while passing the order under review, this honorable court has failed to consider and appreciate that petitioner's counsel was not present. The absence is bona fide. That counsel for respondent number 4 deliberately misrepresented the facts inasmuch as in WP number 8887 of 17 and other connected petitions, no return were filed by the respondents, and neither order dated 4/5/17 was brought on record.
Now, this is important, which I'm trying to bring it out. Besides, in connected WP number 1660 of 2017, return came to be filed by respondent number 2, Board of Director of Adivasi with the Evam Vikas Nigam. The council was different. And on date is important. And on 21/9/17, that is, after passing of the alleged order of 4517, my lord, where my lords have been kind enough to give us the liberty to challenge, on 21/9/17, on affidavit basis, the Adivasi informs his honorable court what? In para 6 of his return, it has been stated that matter is still pending before the state government and there is no whisper regarding passing of the order dated 4/5/17. Right. Then, So therefore, our submission is, my lord, in fact, the council, without filing any reply, my lords, was requested this court, my lord, since they can challenge it. Now, we could challenge it subject to, in a connected matter, the return is filed. And they say that still it is pending before the state government. So 4/5/17 loses its sunlight because it's on an affidavit basis. okay. Had that return not been filed, my lords, things would have been a little different. I would have come in review. But you were representing parties in contempt petition also. Yes. Contempt, irrespective. This has come subsequently, my lords. No, just a minute. Shri Rahul Chaube, learned counsel for the applicant. Right. Rahul Chaube is your assisting counsel. Very right. Now, in this contempt petition, Right. which is in which you were also represented, you were the counsel. Right. Reply was filed, and a copy of reply was also given. Yes. Yes. When was that, my lord? 17. When was that? In 17. 24/7. So, That is prior. It was prior to 21/9/17. again, there may be It makes a world of difference. it will not make a lot of difference. Why? Because presuming that this now, even if I allow them to bring this, the fate will be the same. My lords. Fate will be the same. My lords, it is a misrepresentation by the Adivasi with before this court. The reason is, if in one of an identical matter, another counsel brings a return with an affidavit that the matter is pending, while on the other way, the counsel says, no, the matter has already been adjudicated on 4/5/17, my lords, which is to be believed. Okay. Okay. It's Anything the else? latter. So my submission to my lords would be, in fact, if it has not been adjudicated upon, my filing another writ petition, my lord, Ji. does not call for it. And therefore, Okay. recall Okay, becomes it important. is the only liberty given to you. You may not file it. देखिएगा. Srimati Shobha Menon, learned senior counsel, assisted by Shri Bedi. WP 8887 में लिखिएगा. Heard on IA number 6330 of 23, an application for with review/recall of common order dated 21/4/23. Full stop. Reading from para 9, Srimati Shobha Menon submits that firstly, order dated 21/4/23 was passed in absence of petitioner's counsel. However, she has clarified this aspect in capital A, subpara capital A of para 9, where she has admitted that counsel could not appear as they were arguing before another court. Full stop. It is submitted that in the reply which was filed in WP 1660 of 2017 on behalf of the Managing Director of Adivasi Vitt Evam Vikas Nigam on 21/9/2017, it is mentioned that the matter is still under consideration of the state government, whereas as per the contention of Sri Siddharth Gulati, reply was filed in contempt case number 897 of 2017, wherein a copy of the order of the state government dated 4/5/2017 is enclosed. Full stop. It is submitted. Next para. It is submitted that there is misrepresentation on behalf of the council for Adivasi Vitt Evam Vikas Nigam in as much as in WP 1660 of 2017, it is mentioned that matter is still under consideration. Copy of order dated 4/5/2017
was neither enclosed in WP 1660 of 2017 or WP 8887 of 2017, and therefore no direction could have been given to the petitioner to assail the order dated 4/5/2017. Full stop. Next where Shri Gulati submits that in the contempt case number 897 of 2017, counsel who usually appears is Mr. Rahul Chaube, assisting counsel to the senior advocate Srimati Shobha Menon. Full stop. Copy of the reply was furnished to the respondent counsel's associate, the petitioner's associate on 24/7/2017. Full stop. Thus, once a reply in the contempt petition was given to the counsel, and ये सतीश खरे किसी में petitioner है, किस petition में है? इसमें सर सतीश खरे is petitioner in which WP? Lord, he is in the contempt only. He had filed only contempt. Contempt. He is not a party in WP. He was in the earlier round, so he had filed contempt. Counsels are common and same in all cases. And counsel are common and same in all the three petitions and the contempt petition, then there may be a clerical slip of not bringing the said order dated 4/5/2017 passed by the state government on record. But the fact of the matter is that ultimate fate of all the petitions will be that petitioners are claiming benefit of regularization in terms of the policy framed by the Adivasi, जो भी नाम आया, वित्त विकास निगम, which was subject to the approval of the state government, and since state government has refused to give approval, unless that order is challenged, knowledge of which was available to the petitioners counsel as it was supplied to them along with contempt petition number 897 of 2017. Unless that order is challenged, and for that petitioner had sufficient time to challenge the said order passed by the state government in the name of and by the order of the governor of Madhya Pradesh, no effective relief can be granted to the petitioner. Thus, there is no error apparent on face of record to call for review / modification of the order. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, few things needs to be put in a correct chronological order. Next, firstly, there was no intimation from any of the juniors of the learned counsel appearing for the petitioners that case be adjourned because counsel is busy in some other court. Full stop. Courts are not required to presume the reasons for the absence of the counsel. Full stop. Firstly, it was mandatory for the counsel to have remained present when the case is called up. Full stop. In absence, if an order is passed on the basis of the facts narrated in the writ petition and described by the opposite counsel, who cannot be said to be irresponsible unless the submission made is shown to be erroneous on face of record, then indulgence and at a subsequent stage by filing an application for modification recall without showing any error apparent on face of record is not called for. Full stop. Moreover, as pointed out by Shri Gulati and noted by this court, in the contempt petition, same set of counsel, including the senior counsel, were appearing. Full stop. There was a notice. They were aware of the order passed by the state government in as much as reply was filed in that petition and copy was received on behalf of the Menon Associates, as is apparent from the note appended on the copy of the reply. Full stop. Thus, Menon Associates had
knowledge of the said order dated 4/5/2017 passed by the state government, they had sufficient time of almost 6 years to have taken up that matter and should have amended the petition. Therefore, under the facts and circumstances, when the impugned order is passed, comma, court was acting in its equitable jurisdiction and was protecting the interests of the petitioners by giving them a liberty to challenge the order of the state government, which petitioners should have challenged in the first place, as they were aware of that when it was filed along with the contempt petition. Therefore, there is no error apparent on face of the court to revisit the order merely because counsel had failed to appear in the first instance. I crave indulgence, my lord. Much has been said about the Menon Associates. If it only could be added that here I present again before my lords, and I am emphasizing that a return was filed in an identical matter on a date after. That I have already mentioned. It has not come, my lord, when my lord was kind enough to put across. Please read the order. No, it has come in my the early submissions. If it could come that, and it could be taken care of, my lord. My lord may reject it. But let us come on record, please. लिख लीजिएगा, एक लाइन बीच में जोड़ लीजिएगा. This contention of learned senior counsel. But this is my prime basis, my lord. ठीक है, that in the return filed in the connected WP 166 जो भी recalling की application ही नहीं है. They have accepted Second, that order. the return, we referred to that. 1660, You never filed any return. 1660, there was a return mentioning that the instructions of that the matter is under consideration of the state government is though pertinent, but it loses its shine because of the fact that same set of counsel are appearing in the bunch of the petitions, and same set of counsel as noted above was given a copy of the reply in the contempt petition, enclosing therewith orders of the state government rejecting the scheme of the corporation. Greatly obliged, my lords. My lord, with your lordship's permission, my lord had called for me. My lord, my junior had come to seek permission. 1:30 बजे बताइएगा. My lord, Your junior, you should teach your junior as to what time he's supposed to. I apologize, my lord. Yes. I apologize, my lord. बाद में फाइल करिएगा. My lord, highly obliged, my lord. Your juniors think that lawyers think that it is their right, they can interject at any point of time because they are in majority, they can dominate the court and do whatever they like. My lord, it is my fault, my lord. It is your fault, then you should be apologetic. I am apologetic. That's end of the matter. लॉर्डशिप में रिकॉर्ड आ गया नरदपुरम से होशंगाबाद से जी रिकॉर्ड आ गया रिकॉर्ड की मांगी गई थी हाँ ठीक है क्या मैटर है ये My lord, an application under section 178 MPLRC was filed. हाँ That is allowed by Tehsildar, हाँ affirmed by SDO, जी and that orders passed by Tehsildar and SDO is reversed by the additional commissioner. ठीक है बताइएगा क्या है My lord, may come to directly to the order passed by the subdivisional, the commissioner, my lord, the impugned order. जी On two grounds, my lord, the order has been reversed. जी Paragraph 14, if I can read. Page 14, paragraph 8. page 14 paragraph 8, sir, top of the page. जी प्रकरण का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्क का परिशीलन किया गया. विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय के उत्तरवादी गण क्रमांक 1 से 8 जरिए अधिवक्ता मौजा सो के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया. प्रश्नाधीन भूमि खसरा नंबर सो आवेदिका गण इस न्यायालय में उत्तरवादी क्रमांक 1 से 8 एवं इस न्यायालय के अपीलार्थी गण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज थी एवं खसरा नंबर 260-263/1 पर अपीलार्थी गण उत्तरवादी गण क्रमांक 1 से 8 तथा सब्बू सिंह वल्द सो का नाम संयुक्त रूप से अभिलिखित था. विचारण न्यायालय के प्रकरण में संलग्न हल्का पटवारी के स्थल पंचनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि खसरा नंबर सो सह खातेदार सब्बू सिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके विधिक वारसानों में सो हैं. विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश 24/8/17 में भूमि नंबर सो में नक्शा दुरुस्ती हेतु पृथक से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया है तथा उक्त नक्शा दुरुस्ती उपरांत बंटवारे के लिए पृथक प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु लेख किया है तथा पारित आदेश से प्रश्नगत खसरा नंबर सो रकबा सो भूमि में से
0.221 भूमि रामरती बेवा सो एंड सो तथा उक्त सर्वे नंबर हेक्टेयर भूमि विपदा सो एंड सो को बंटवारे में प्रदान की गई है, किंतु उक्त खाते के सह खातेदार सब्बू वल्द फुसलया के वारसानों को कोई भी भूमि बंटवारा में प्रदान नहीं की गई है, जो मान्य योग्य नहीं है। अतः उक्त स्थिति में देन द ऑर्डर इज सेट असाइड। नो मैम बताइएगा उनका रिलिंक्विशमेंट कहाँ पर है? सर रिलिंक्विशमेंट तो उनके एक सेकंड जी, जब पार्टीशन होगा फैमिली के सह खातेदारों के बीच में, तो या तो उनका सह खातेदारों का रिलिंक्विशमेंट होना चाहिए कि जो है हम इस जमीन को लेने में या संपत्ति को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तब तो बाकी सह खातेदारों के बीच में संपत्ति का पार्टीशन होगा। बिल्कुल। इन एब्सेंस ऑफ रिलिंक्विशमेंट कैन देयर बी अ पार्टीशन between among some of the parties leaving some of others? बिल्कुल नहीं हो सकता सर। बस that is the only crux of the matter। यहाँ ये इशू ही नहीं है सर। फिर क्या मैटर है? वही मैं कह रहा हूँ सर, ये जो जिसकी बात कर रहे हैं कि इनकी जमीन का तो हमने लगाया ही नहीं है पार्टीशन का। हाँ सर एक्चुअली 2 persons आर को ओनर, बोना एंड सब्बो सिंह जी। कौन? बोना एंड सब्बो सिंह। हाँ, बोना BONA एंड सब्बो सिंह। ये बोना एंड सब्बो सिंह। हाँ। जो पार्टीशन की एप्लीकेशन है वो सब्बो सिंह की जमीन छोड़ के लगी हुई है, सब्बो सिंह की जमीन का है ही नहीं। किसके बीच में हुआ? तो बोना के बस बोना के वारसानों ने किया है सर। तो बोना की जमीन क्या का नंबर क्या है सर? ये एप्लीकेशन एक बार देख लें सर, उससे सब क्लियर है। बोना का नंबर तो बताएं जी सर। बोना की कौन सी और सब्बू सिंह की कौन सी है? एक पेज 16 पे आ जाए सर। पेज 16 है, इसमें फैमिली ट्री भी दिया हुआ है सर। हाँ हाँ। ये फैमिली ट्री के नीचे वाला जो पैराग्राफ है ये रेलेवेंट है, ये पढ़ देता हूँ सर। यह कि सब्बू सिंह के समस्त जीवित वारसानों से आवेदक गणों का वादग्रस्त संपत्ति को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। सब्बू सिंह का नाम वाद खसरा नंबर 260 में सह भूमि के रूप में दर्ज है। सब्बू सिंह द्वारा उक्त भूमि में से रजिस्ट्री के आधार पर कुछ भूमि क्रय की गई थी। उक्त रजिस्ट्री के आधार पर शामिल में सब्बू सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया था। सब्बू सिंह की रजिस्ट्री की सीमा तक सब्बू सिंह का पृथक बंटवारा किए जाने में आवेदक गण को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। तो सब्बू सिंह की जमीन ऑलरेडी अलग हो चुकी है सर। ठीक है, चलिए फिर आपकी जमीन बताइए। हाँ सर, इसका एक पोर्शन जो सब्बू सिंह का है उसका छोड़ के, और ऐसा नहीं है सब्बू सिंह इस पार्टी मतलब इसमें एक बार ये भी देख लो। सब्बू सिंह में भी पार्टी इशू इज, जब सब्बू सिंह की जमीन का बंटवारा ही नहीं हो रहा तो सब्बू सिंह क्यों पार्टी बने? नहीं, हमने उसको पार्टी बनाया, फिर भी क्यों बनाया? इसलिए बनाया सर कि यही ऑब्जेक्शन ना आ जाए। नहीं। और ये आगे पढ़िएगा, अगला पैरा पढ़िएगा जी। यह कि आवेदिका गण एवं अनावेदक गण की खानदानी भूमि सो एंड सो बैतूल में खसरा नंबर। बोना का नाम कहाँ आ रहा है? सो बोना वाज द ओरिजिनल ओनर। कहाँ है बोना का नाम? गोरेलाल लिखा है ओरिजिनल ओनर का नाम गोरेलाल, पे विनोदी फौत, किशोरी फौत जी। गोरा का नाम, बोना का नाम कहाँ आ रहा है? मैं बता देता हूँ सर। Where is name of बोना in the family tree? बोना इज वाइफ ऑफ गोरेलाल। Where is गोरेलाल? गोरेलाल सबसे ऊपर है टॉप में सर। अच्छा, मूल पुरुष। हाँ, तो फिर इनकी वाइफ है बोना एक्चुअली। कहाँ लिखा है सर? इसमें ये जो एप्लीकेंट्स हैं इनकी कहाँ लिखा है बोना इज वाइफ ऑफ गोरेलाल? उसके बाद तो 4 पीढ़ियां बदल गई। ऊपर ही लिखा है सर, ये नहीं पैराग्राफ 2 में लिखा है सर। इसको मैं पढ़ देता हूँ। यह कि प्रकरण के सुलभ निराकरण हेतु आवेदक गण एवं अनावेदक गण का वंश वृक्ष निम्नानुसार है। सह खातेदार बोना बेवा गोरेलाल की मृत्यु हो जाने से एवं बोना के समस्त जीवित वारसान पहले से ही अभिलेख पर होने से। बोना के वारिसान में तो सब्बू सिंह भी आएंगे सर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सब्बू सिंह का जो है शेयर वो दे दिया, और सब्बू सिंह ने कोई अपील भी नहीं फाइल की सर। नहीं। तहसीलदार का जो ऑर्डर है। अपील किसने फाइल करी? वही मैं बता रहा हूँ सर, जो अपील फाइल हुई थी नीचे जी। पहले तो सर बेवा किशोरी, ये किशोरी वाली जो ट्री ये है, एक विनोदी का है और एक किशोरी का है। तो अपील जो फाइल हुई वो किशोरी के जो डिसेंडेंट्स उन्होंने फाइल करी है। हाँ, फिर सब्बू सिंह ने तो पेश ही नहीं की सर। ठीक है, तो और मतलब उनके अगेंस्ट किशोरी का तो जो डिसेंडेंट्स हैं उनका भी तो हक है ना बोना की संपत्ति में। तो उनको पार्टी बनाए बगैर कैसे हो जाएगा पार्टी? नहीं, उनको तो बनाया ना सर। कहाँ बनाया बताइएगा सर? ये जो एप्लीकेशन है इसमें पहले तो सब ये विनोदी के हैं सर। हाँ। जो आवेदक गण है। हाँ, ठीक है। और 1 से 5 तक किशोरी के हैं सर। हाँ, ठीक है। और बाकी जो 6 से 19 तक है सर, इनका कोई लेना देना नहीं, बट फॉर दी सो दैट इन फ्यूचर नो डिस्प्यूट अराइजेस इनको पार्टी बनाया। ये सब सब्बू सिंह वाले हैं सर। अच्छा, फिर अपील किसने लगाई? कमिश्नर के सामने? किशोरी ने लगाई है सर। सब्बू सिंह ने अपील भी फाइल नहीं की। किशोरी की उन्होंने लगाई ना। हाँ। उन्होंने क्या कहा किशोरी की? उन्होंने व्हाट इज देयर स्टैंड?
इनके जो ग्राउंड्स है सर, पैरा 3 पेज 12, इसमें सर उन्होंने प्रोसीजरल पार्ट को लिया है पेज 24 पे पैराग्राफ 2। एक सेकंड, पहले ये तो पढ़ लें, पेज 12 में तो पढ़ लें। जिस ग्राउंड मैटर तो रिमांड ही किया है ना इन्होंने, कमिश्नर ने। सर जिस ग्राउंड पे कमिश्नर के ऑर्डर में कोई भी, कमिश्नर ने रिमांड किया है, सभी पक्षकारों को सुनवाई का मौका देके दोबारा बंटवारा हो जाएगा। लेकिन एक बार सर 2 ग्राउंड्स पे रिमांड किया है। हाँ एक तो सब्बो सिंह के एलार्स रिकॉर्ड पे, सब्बो सिंह के एलार्स को कोई शेयर नहीं दिया। हाँ अब सब्बो सिंह का सर ये ग्राउंड तो अपीलेंट्स ने कभी रेज ही नहीं किया और ये ग्राउंड बनता भी नहीं क्योंकि सब्बो सिंह का खाता अलग हो चुका है। जी। ये मैंने एप्लीकेशन से सर दूसरा ग्राउंड जिस पे रिमांड किया वो कह रहे हैं कि 260/1 का नक्शा पहले दुरुस्त होना चाहिए और फिर रिमांड होना चाहिए। अब वो 260/1 का पार्टीशन ही नहीं हुआ है सर। जी जी जो तहसीलदार का ऑर्डर वो देख लें सर, दोनों जो ग्राउंड्स हैं जिस पे रिमांड किया है, जी। दोज ग्राउंड्स आर नॉट सस्टेनेबल, उसमें कोई मतलब नहीं सर। ये कैसे सस्टेनेबल नहीं है? इसलिए सर कि नंबर 1 तो सब्बो सिंह के जमीन का बंटवारा ही नहीं करवा रहे सर, हम उसका तो क्लेम ही नहीं है, वो अपीलेंट नहीं है। 263/1 कौन है, किसका है? अभी आपने पढ़ा था 263/1 तो सब्बू सिंह का ही है सर। वो उस जो उनका शेयर है वो ऑलरेडी पार्टीशन हो गया भाई, सहभूमि। तो पहले तो सब्बू सिंह से पार्टीशन होगा, तब तो जो है आगे का पार्टीशन होगा सर। वही तो है पार्टीशन बिटवीन सब्बू सिंह एंड यू in relation to survey number 263/1 and 260/1 has taken place. Where is that partition? सर ये हमारी एप्लीकेशन में लिखा है, आप बोलेंगे तो मैं डॉक्यूमेंट ला दूंगा। पेज 21 बोलेंगे नहीं सर, एक बार पेज 21 देख लें। हाँ पेज 21 दिखाइए। जिस जमीन का पार्टीशन हुआ है वो 3 खसरे नंबर है सर। हाँ बताइए। 237 हाँ पेज 21 पे, 523/1 और 263/1। हाँ 263/1 का पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि सब्बू सिंह और आपके मध्य पार्टीशन हो गया था, तभी तो 263 का जो आपका हिस्सा है उसी का पार्टीशन होगा। एक तो मैं ये बता देता हूँ सर, दूसरा ग्राउंड ये है कि 260/1 का बोले नक्शा दुरुस्त होगा फिर पार्टीशन होगा। सर ये ग्राउंड तो मैं मीट आउट कर जाता हूँ क्योंकि 260/1 का पार्टीशन ही नहीं हुआ है। अब मैं सब्बू सिंह की बात पे आ जाता हूँ। हाँ जी, सब्बू सिंह का सर सब्बू सिंह को हमने पार्टी बनाया, उनके एलार्स को, और विद दिस कि भाई दे हैव ऑलरेडी बीन गिवन शेयर, they did not participate। सर ये है ना एप्लीकेशन में लिखा हुआ है सर, ये पेज 15 पे एप्लीकेशन है। हाँ। ये 6 से लेके 19 तक तो ये सब्बो सिंह की। ठीक है ना। और सर आप उसी में लिख रहे हैं, और उसी में हम लिख रहे हैं कि आप खुद ही पढ़ लीजिए यहाँ पर जी। पैरा 3 में आवेदिका गण एवं अनावेदक गण की खानदानी कृषि भूमि मौजा लिखड़ी इतना इतना एवं उसमें ये 263/1 260/1 है। कुल रकबा 5.354 हेक्टर राजस्व अभिलेखों में शामिल शरीक दर्ज है जी। उपरोक्त कृषि भूमियों में से आवेदिका गण के पिता विनोदी वल्द गोरेलाल ने अनावेदक गण के पिता किशोरी वल्द गोरेलाल से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 1 सेकंड के माध्यम से 7792 को खरीदी गई भूमि को छोड़कर शेष भूमियों में आवेदक गण एवं अनावेदक गण का आधा आधा हिस्सा पृथक कर ऋण पुस्तिका प्रदाय किए जाने तो आवेदन प्रस्तुत है जी। प्रस्तुत है सर। अगर सब्बो सिंह होता तो सर सब्बो सिंह कुड हैव फाइल्ड अपील। सब्बो सिंह ने तो अपील ही नहीं फाइल की है। उसने नहीं की होगी तो सर तहसीलदार का ऑर्डर अफर्म हो गया है। अगर इन एब्सेंस ऑफ चैलेंज टू तहसीलदार ऑर्डर बाय सब्बो सिंह, तो तहसीलदार के ऑर्डर में तो सर जो शेयर दिया है वो भी केवल इन्हीं 2 पार्टीज को दिया है। एनीथिंग एल्स? यस
रिमांड हुआ है। लिखिएगा, this petition is filed under article, this petition under article 227 of the Constitution of India is filed by the petitioners being aggrieved of order dated 19/1/22, annexure P1 passed by learned additional commissioner Narmadapuram division Hoshangabad, Narmadapuram in case number 0035 oblique appeal oblique 2018-19, whereby learned additional commissioner has remanded the matter to the Tehsildar for correction of the map in regard to survey number 260/1, and after affording opportunity of hearing to the co-owners pass fresh orders of partition. Full stop. Next paragraph. Shri Avinash Jargat, placing reliance on the application for partition as contained in annexure P3, submits that firstly, survey number 260 is not a subject matter of partition of the land between the parties, and partition was to take place in relation to land contained in survey number 237, 523/1 and 263/1. Therefore, correction of map is an erroneous finding by the additional commissioner. Full stop. Secondly, it is pointed out that since legal heirs of Sabbu Singh have not challenged the partition, which they may have been entitled to in view of the fact that Sabbu Singh had 50% share in the lands contained in survey number 260/1 and 263/1. Therefore, there was no occasion for the learned additional commissioner to have remanded the matter. Full stop. Next paragraph. Shri Premlal Verma, learned government advocate, and Shri राजीव बड़पुर Ji राजीव बड़पुर Rajiv बड़पुर Balkur for the non-applicant supports the order and submits that there is no illegality in the impugned order. Full stop. From the family tree extracted in annexure P2, which is an application for partition before the Tehsildar, Amla district, Betul, in para 3, it is mentioned that an application is filed for division of land contained in relevant survey numbers between the applicants and the non-applicants who are the legal heirs of Sabbu Singh, starting from non-applicant number 6 to 13. Full stop. It is pointed out that without a partition being effectively taking place between legal heirs of Sabbu Singh and the applicants, no effective partition could have taken place in regard to survey number 263/1. Full stop. Firstly, partition was required to be effected in regard to survey number 263/1 and 260/1, which was admittedly a joint property of the petitioners and the legal heirs of Sabbu Singh, and after that other properties could have been partitioned. Full stop. There is no error apparent in the impugned order calling for interference. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, certain facts are necessary to be reproduced. Full stop. Firstly, it is mentioned that concerned parties were not given opportunity of hearing. Full stop. Will which was recorded in favor of Satish Chandra Kishori was not on 11/5/2004, and which is a registered will, was not taken into consideration. Full stop. When these aspects are taken into consideration, coupled with the fact that Sabbu Singh was though made a party,
but no effective partition was brought on record, and without delineating the lands belonging to Sabbu Singh in the relevant survey numbers 260/1 and 263/1, no effective partition could have taken place between the petitioners and the contesting respondents, comma. This court is of the opinion that there is no illegality in the impugned order passed by the learned additional commissioner. Full stop. Parties are directed to appear before the concerned Tehsildar and produce evidence in favor of their claims, but prior to that, Tehsildar shall, after giving opportunity of hearing to the legal heirs of Sabbu Singh, carry out partition in relation to the joint properties owned by the present petitioners and the Sabbu Singh, and thereafter shall effect partition between the present petitioners and the contesting respondents. And let this exercise be completed within 3 months of receipt of certified copy of the order. Petition is disposed of. My lord, annexure P1 is under challenge. On the ground, my lord, this order is without, my lord, jurisdiction, because application under section 5 of Limitation Act has been, my lord, rejected by the SDO. And as per section 46, my lord, no appeal lies against that rejection order, my lord. क्या हो गया फिर से बताइए. My lord, on application under section 5 was rejected by the SDO. जी. In appeal preferred by the respondent. जी. And against that, my lord, second appeal preferred before the commissioner, yes, which is not maintainable, my lord. And commissioner passed the order, my lord, in appeal. Annexure P1 is the order. बताइएगा कि सेक्शन 5 की एप्लीकेशन के खिलाफ अपील मेंटेनेबल नहीं होती है. Section 46, my lord. 46 of MPLRC. No appeal against certain orders, notwithstanding anything contained in section 44. No appeal shall lie from an order, number 1, allowing or rejecting an application for continuation of delay on the ground specified in section 5 of Limitation Act 1963. ठीक है, तो merely against section 5 application appeal will not be, but does it prevent parties from filing second appeal on its own merits? Once, my lord, if, my lord, that has not been decided on the, my lord, merits, because, my lord, application has been rejected, then appeal has not been decided, my lord. Against that, only one revision preferred was, my lord, prescribed before the collector. So without availing the remedy of, my lord, revision before the collector, This petition is filed on the singular ground that appeal under section, as per the provisions contained in section 46 of MPLRC, since SDO had rejected the first appeal on the ground of limitation, no second appeal was maintainable. Issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days. Till then, or execution of the order of the additional commissioner dated 31/5/2023 shall remain effective. I am okay. And parties shall maintain, and parties shall maintain status quo. Not in this matter, petitioner is challenging the award passed by the Labour Court, my lord. Yes. Whereby the Labour Court has allowed the application, allow the case of the respondent, my lord, and not give direction to petitioners to reinstate him. ये बताइए क्या गलत है? My lord, para number 16 is 16. Yes, ma'am. At page number 39. Yes. द्वितीय पक्ष साक्षी अशोक के साक्ष्य कथन और प्रथम पक्ष गौरव द्वारा प्रस्तुत सेवा समापन आदेश प्रदेश P1 से दर्शित होता है कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उसके कार्य में लापरवाही करने, सौंपे गए कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं रहने और समय का पाबंद नहीं रहने पर उसकी सेवा समापन की गई, किंतु सेवा समापन
के पूर्व प्रथम पक्ष को उसके कार्य में सुधार लाए जाने हेतु कोई लिखित नोटिस अथवा चेतावनी नहीं दी गई और न ही कोई जांच की गई, इसलिए सीधे ही प्रथम पक्ष की सेवा समापन को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रथम पक्ष की सेवा समापन के पूर्व प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया, जिस कारण प्रथम पक्ष को सुनवाई का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। तथा दिनांक 31/1/2018 को द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष की सेवा समापन अवैध होना निर्धारित किया जाता है। Now my lord, kindly come to para number 11. My lord, we have raised the question that we are not covered under the definition of 2J of Industrial Dispute Act, my lord. Issue notice to the respondents on the ground that petitioner is not covered under the definition of industry as defined in section 2J of Industrial Disputes Act 1957, and therefore the London Labour Industrial Court had no jurisdiction to hear and decide the dispute. ये इशू बना था कि आपने मान लो इशू नहीं बना था, बट हमने ये अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम का जो हमने रिप्लाई दिया था उसमें हमने ये रेस किया था। नोटिस कर दीजिएगा। चलिए ओब्लाइज मैम। Serial number 10, Kumar Dubey. Not in this case, my lord. The respondent has filed an application or under section 178(1)(10) of the MPLRC, my lord, which has been dismissed, my lord. Yes. My lord, the kindly see Annexure P2, my lord, is the family partition. Yes. Page number 16, my lord. The Ram Sujan has partitioned his land, my lord, to his son and wife, my lord. Yes. Annexure P2, my lord. Yes. Thereafter, my lord, the names are recorded in the revenue record, the page number 19, my lord. ऐसा पार्टीशन एक्सेप्टेबल है क्या लॉ में? No. ये ऐसा पार्टीशन परमिसिबल है? बताइएगा कहाँ है? No, my lord. फिर my lord, ये तो इस तरीके से तो फिर सारी स्टैम्प ड्यूटी की चोरी होती रहेगी। Yes. Lord, रजिस्टर्ड पार्टीशन के Yes. Lord, then you have got the answer. There's nothing in the petition thereafter. My lord, the main issue is that, my lord, the daughter of the petitioners, daughter of the deceased, my lord, Ram Sujan, has filed the application for mutation, my lord. That application has been rejected, my lord. Thereafter, my lord, the land mutation on the basis of this partition. No, my lord. They are claiming, my lord, the right after 40 namantran. 23 years. No, my lord. 40 namantran, my lord, the name of the petitioners, my lord, recorded in the revenue records in her mother's, my lord. Along with her mother's, my lord. Thereafter, my lord, the petitioner sold the property to his sons, my lord. And sold the property. Where is the registered sale deed? Sold, my lord, the partition deed, my lord. Partition और sale में फर्क होता है? Yes, partition, my lord. And except page number 22, my lord. फिर क्या हुआ? My lord, thereafter, my lord, the respondent moved an application before the SDO, my lord, under section 5 of Limitation Act, because they filed the application for mutation after 23 years, challenging the 23 years, my lord. That application has been allowed, my lord. Page number 30, my lord. Yes. And order passed by 32, my lord. Yes. And thereafter, my lord, the petitioner being aggrieved of the said order, my lord, he preferred the appeal before the भूमि स्वामी है, ठीक है। 2005 के अमेंडमेंट के बाद में आपकी बहनों को भी बराबर का हिस्सा है। हाँ, लेकिन सर चूंकि इनके फादर की जो डेथ हुई है वो 1994 में हुई। क्या हो गया? आपने गलत नाम दर्ज करा लिया पार्टीशन के आधार पर। जी, ठीक है जी। इसमें सर चूंकि इनके फादर की डेथ 1994 में हुई थी और इन्होंने सर जो है 23 साल बाद उसका ये किया है और जब जानकारी मिली तब कर लिया। नहीं सर, इसमें इन्होंने लिखा है सर काइंडली सी। फिर इस ऑर्डर की सेकंड अपील भी तो होती है। नहीं सर, न्यायालय कमिश्नर के यहाँ सर ये हुई है 44(2) की हुई है। हाँ, कहाँ है वो? ये है ना पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 क्या कहा कमिश्नर साहब ने? कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि पैरा 4 में कहा मिला,
प्रकरण का अवलोकन किया गया। नामांतरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हल्का पटवारी के द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 62 में राम सुजान के मृत्यु होने पर सिजरा लेकर अशोक कुमार पुत्र व मुसम्मत चंद्रवती पत्नी को वारिश मानते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने पर राजस्व निरीक्षक के द्वारा 11/5/1994 को वारिशाना नामांतरण आदेश पारित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी व्यवहारी के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र सरपंच द्वारा दिए गए सिजरा के आधार पर उत्तरवादी को पुत्री मानते हुए जोड़े जाने का आदेश दिया है, जबकि हल्का पटवारी से इस संबंध में न तो कोई सजरा मंगाया गया और न ही अनुविभागीय अधिकारी व्यवहारी के द्वारा प्रकरण में तहसीलदार व्यवहारी को राम सुजान के समस्त वारिसों का पता लगाकर फौती नामांतरण किए जाने का निर्देश दिया है। ऐसी स्थिति में के संबंध में विधिवत जांच कर सिजरा प्रमाणित होने पर विधि अनुकूल व्हाट इज रॉन्ग इन इट? Lord, that Lord is I am challenging in the order, Lord, on the ground that Lord, the father of the petitioners, father of the respondents, has died in the year 1994. The Succession Act come in the year 2005, Lord, 9 September 2005, Lord. The amendment is incorporated in the section. ऐसा कहाँ ग्राउंड लिया आपने अपनी अपील में? बताइएगा, आपकी अपील में पढ़ के बताइएगा. Where is this? Where is the ground? ये सर ये पैरा 41 में सर जजमेंट के पैरा 41 को छोड़ दीजिए, अपना अपील में ग्राउंड बताइए. आपने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी अपील लगाई है. जी जी. इसमें कौन से ग्राउंड लिया है आपने? ये सर पैरा 8 पढ़िएगा. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानून की जानकारी लेना भी उचित नहीं समझा है कि वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि 2005 के बाद के राजस्व रिकॉर्डों में बहनों को भी अधिकार प्राप्त होगा, उसके पूर्व का नहीं होगा। लेकिन रिस्पोंडेंट के द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 62 आदेश दिनांक 11/5/94 तो उसके लिए क्या आवश्यक था? 1994 की स्थिति में जी जो है वो स्टेटमेंट लेता, बहनों से बोलता कि उनका कोई शेयर नहीं है, वारिसान में अकेले अशोक का नाम कैसे लिख के कर देगा नामांतरण, फौती नामांतरण? बाकी इश्तहार तो करेगा तहसीलदार, इश्तहार करके बुलाएगा, तो कुछ भी नहीं किया उसने, सरपंच के कहने पे कर दिया. इश्तहार का नहीं किया सर, फिर प्रोसीडिंग ही गलत है उसकी. अब आप वहां बताइएगा तहसीलदार के सामने सारी बातें. जी देखिएगा. विड्रॉ करेंगे कि मेरिट पे लिखाना है? श्री विनोद दुबे, लर्नेड काउंसिल फॉर द petitioner. This miscellaneous petition under Article 227 of the Constitution of India is filed, being aggrieved of the order dated 5/6/2023 passed by the Commissioner Schedule Division Schedule in Revenue Case number 56/Appeal/2019-20, whereby Learned Commissioner Schedule has remanded the matter to the Tehsildar for conducting an inquiry as to the legal heirs of Ram Sujan and pass proper order in accordance with law. Next para. Learned Counsel for the petitioner submits that Ram Sujan died in 1994. Full stop. A partition was effected between the parties, that is the father Ram Sujan, his wife and son Ashok Kumar Tiwari, full stop, before the Sarpanch, full stop. On the basis of the partition, land had come in share of the petitioner, full stop. आपकी माँ की मृत्यु कब हुई? माँ की मृत्यु का सर डॉक्यूमेंट इसमें नहीं है सर, क्योंकि 3 हिस्से हुए थे ना, आपके पिताजी ने, आपकी माँ और आपके. जी 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 जी. ठीक है. The copy of the partition deed dated 15/6/93 is available on record as Annexure P2. Full stop. It is Lord, my second main ground is Lord, the SDO has passed the order without implementing the party, Lord, these Ravi Kumar and Prakash Kumar. it is mentioned in the partition deed that after his death and demise of his wife, Ashok Kumar will be the owner of the land. Full stop. It is not brought on record by Shri Dubey as to when
mother of the present petitioner died. That will be a vital starting point for limitation. Full stop. However, when the impugned order is perused, comma, since admittedly there are procedural glitches in the earlier order of the Revenue Inspector Bihari dated 11/5/1994, comma, that order has been rightly set aside by the Commissioner and that does not call for any interference in the supervisory jurisdiction of this court. Petition fails and is dismissed. Media number 11 से Kapil Patwardhan. Issue notice on delay condonation as well as admission call for the record. 11/12. Media number 30 Pin Kumar Sudla. My lord, by way of the instant petition, my lord, I am challenging the Annexure P4, my lord, page number 21, whereby the Commissioner Division Review has set aside the order of the sub-divisional officer. The actual dispute is that, my lord, the present petitioner is the purchaser of the disputed land, my lord. Earlier, the suit application of the partition has been allowed by the Tehsildar between the other partner of the disputed land, my lord. The partition has taken place, my lord, on the basis of the pulley, which is submitted by the landowners, my lord. Thereafter, the sub-divisional officer has passed the order and dismissed the appeal of the one Ram Sundar Kushwaha, my lord. Later on, he preferred an review petition before the sub-divisional officer, my lord, which is allowed by the sub-divisional officer. The finding is recorded by the जमीन किस किस के नाम पर थी? जमीन जो है ये रघुनाथ काछी के नाम पर। जी, रघुनाथ कुशवाहा, उसके जो वारिस है वो 5 लड़के हैं। जमीन किसकी है? रघुनाथ काछी की है कि उनके पिताजी की है? नहीं, रघुनाथ ये बिरझानी कुशवाहा उनका फादर, बिरझानी कुशवाहा उनके बिरझानी कुशवाहा जी। तो फिर जब पार्टीशन होगा तो रघुनाथ काछी की मृत्यु हो गई जी, तो उनके वारिसान एक तरफ रहेंगे एक हिस्से में और बिरजान काछी के अन्य भाई अन्य बेटे दूसरे हिस्से में रहेंगे। भाई कितने बेटे हैं बिरजान काछी के? इनके जो है 5 है। रघुनाथ 5 हिस्से होंगे ना जी। एक हिस्सा 1/5 रघुनाथ के वारिसों को मिलेगा, बाकी उनके अन्य भाइयों को 1/5 मिलेगा। उसने यही तो कहा अपीलकर्ता ने कि हमारा हिस्सा ना देकर जो है उन्हीं से मैंने परचेज किया। पहले एसडीएम साहब सेल डीड आपने जिसको परचेज किया आपने सेल डीड तो नहीं पेश की। फिर कैसे आ जाएगा? फिर कैसे मालूम पड़ जाएगा परचेज किया? नहीं है, उसमें मैंने खसरा एंट्री लगाई। खसरा एंट्री से सेल पेज नंबर 32 में है। 32 पढ़िएगा। ये राजबोहर का है। क्या लिखा उसमें? 282/3 जो है कहाँ लिखा है? राजबोहर पिता सत्य का नंबर बता दीजिए, सेल डीड का डिटेल्स बता दीजिए। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक आदेश दिनांक 4/5/22 के अनुसार भोगले का अधिकृत न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक द्वारा भोगले, इसमें उसका हवाला तो नहीं दिया, मैं उसको पेश कर देता हूँ। नहीं सब मत करिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजबोहर जायसवाल। हाँ, किसने विक्रय किया है? ये रविलाल कुशवाहा अंडर 10 की तरफ से विक्रय किया गया मुझे। और इनका जो सिविल सूट चल रहा था उसमें इन्होंने कोर्ट के बाहर आउट ऑफ टाइम टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड द सेल डीड्स through which property was purchased, property in dispute was purchased by the petitioner. He is granted 2 weeks time to do the needful list after 2 weeks. Serial number 14, which William Goyal. Lordship, I'm challenging annexure P5, part of the order, Lordship, by which the appellate court, Lordship, he had quashed the order passed by the trial court, granting temporary injunction in favor of the petitioner's Lordship.
Lordship, petitioners, number one is the daughter-in-law of the respondent number 3, Lordship, and the petitions number 2 to 4 are the grandchildren's, Lordship. Since the husband of the petition number 1 was had died, Lordship, therefore the father-in-law. बताइए आप आपका तो टाइट Lordship. May I read first, Lordship, the order of the learned trial court, Lordship, who is granted the interpretation. इसको पढ़ते हैं, इस पे समझ में नहीं आएगा तो उसको भी पढ़ेंगे. Lordship, by this order, the appellate court has decided 2 applications, Lordship. जी. And my application is relevant to the question number 2, Lordship. That is 3912. The petition which was granted by the trial court has been vacated by the first appellate court. ठीक है. That is the issue on the. उसी के लिए 3 issues देखने हैं हमें. आपका prima facie case, balance of convenience and irreparable injury. Question has been decided by the appellate court at page number 44, Lordship. नहीं, पहले मैं बोल रहा था पैरा 2 में पेज 44 भी देख लेंगे. पैरा 2 में फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर 44 पे आ जाते हैं. Lordship. वादीगण के द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन संक्षेप में यह है कि ग्राम रिठौरी, तहसील पनागर, जिला जबलपुर, पटवारी नंबर 100, निरीक्षक मंडल महाराजपुर, खसरा नंबर 13 एवं खसरा नंबर 538/2, रकबा 100, उनके ससुर आजा प्रतिवादी क्रमांक 3 गोपाल केवट के स्वामित्व की है. वादी क्रमांक 1 प्रतिवादी क्रमांक 3 की बहू एवं वादी क्रमांक 2 लगात 4 उनके नातीगण है. उक्त भूमि वादीगण की पैतृक संपत्ति है, जो कि प्रतिवादी क्रमांक 3 गोपाल केवट के नाम पर राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में भी दर्ज है. प्रतिवादी क्रमांक 3 गोपाल प्रसाद के पुत्र का स्वर्गवास होने के कारण उसने अपने पुत्र शिवराम केवट की पत्नी एवं पुत्र पुत्रियों को उक्त वादग्रस्त भूमि खेती करके अपना भरण पोषण करने के लिए दी थी. प्रतिवादी क्रमांक 1 ग्राम रिठौरी का पंच है और पैसे वाला है. प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 3 के स्वामित्व एवं वादीगण के आधिपत्य की उक्त वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से खेती की जा रही थी एवं मना करने पर लड़ाई झगड़े के लिए एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा. मतलब गोपाल केवट के स्वामित्व की है जब, तो फिर पैतृक संपत्ति कैसे हो गई? इनका नाम तो वादीगण की पैतृक संपत्ति है जो कि के नाम पर राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में दर्ज है. प्रतिवादी क्रमांक 3. अच्छा, आपके क्या पति नहीं है क्या? नहीं, हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई. आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, संजो भाई शिवराम केवट. ठीक है, अब चलें आगे बढ़े. केवट के नाम पर दर्ज है. प्रतिवादी क्रमांक 3 गोपाल प्रसाद के पुत्र का उसने अपने पुत्र शिवराम केवट की पत्नी एवं पुत्र पुत्रियों को उक्त वादग्रस्त भूमि खेती करके अपना भरण पोषण करने के लिए दी है. एक सेकंड. प्रतिवादी क्रमांक 1 ग्राम रिठौरी का पंच और पैसे वाला है. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 3 के स्वामित्व व वादीगण के अधिपत्य की उक्त वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से खेती की जा रही एवं मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं. प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन. पहले आप अपना टाइटल तो बता दीजिए उस जमीन पर से. आप पेज 44 पर आ जाइए. नाउ लेट अस डील विद द appellate court, Lordship. He had passed the order relying on the some additional documents which has been filed by the respondent at the time of appeal, Lordship. After the appellate court had allowed the by this impugned order, Lordship, he had allowed the application under order 41 rule 20. गोपाल केवट का क्या स्टैंड है इसमें? गोपाल प्रसाद गोपाल केवट is not disputed, Lordship. This appeal has been filed only against. नहीं. गोपाल केवट ने ये आपके वादियों के कंटेंट को एडमिट किया है क्या? हाँ, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं. I am not claiming any relief against Gopal Kevat. He is not disputed. So why Gopal Kevat has not come in the suit? If his land which is recorded in his name is being alienated or misused by some private person, then why he has not filed a suit? No, he has, Lordship, because this land was given for cultivating to maintain the livelihood. आपका पोजीशन हो सकता है. इलीगल इनका हमारा पोजीशन तो है, Lordship. अभी एक सेकंड समझिए थोड़ा बात को. गोपाल केवट ने आपको दी, उसका क्या दस्तावेजी साक्ष्य है? अभी एविडेंस तो हुआ ही नहीं, Lordship. फिर लेकिन
ये इनका कोई डिस्प्यूट नहीं किया, इन्होंने कहा कि दिस इज दैट एडमिटेड, even though the trial court has said so in his reply, even the appellate court has admitted it. This is not disputed कि उन्होंने हमको जमीन दी हमारे मेंटेनेंस के लिए. This issue is not disputed by either of the by any of the parties. But the contention is that ये जो this order has been reversed. आपको ये बिल्कुल ठीक रिवर्स हुआ है. ये दावा लाने का अधिकार गोपाल प्रसाद केवट को था, आपको नहीं है कोई अधिकार. आपको अगर यूज करने के लिए कोई जगह दी गई थी गोपाल प्रसाद केवट द्वारा, and if your possession was being interfered or any other obstruction was carried out by some other person, then Gopal Kevat should have filed a suit claiming injunction. What is your title in the land? The court has rightly held that unless you show your title in the land, you cannot, no injunction can be given. There is no prima facie case. Merely somebody saying that I was given a cultivating right will not create a prima facie case in your favor. But Lordship, my humble submission, the findings which has been given by the appellate court, Lordship, kindly appreciate para 14, Lordship. Para 14. Of the improved order, page 45. 45, yes. Page 45, Lordship. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के द्वारा अपील के लंबित रहने के दौरान वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 538/2 के संबंध में अपीलार्थी एवं गोपाल प्रसाद केवट के मध्य की गई कार्रवाइयों के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. गोपाल प्रसाद केवट के द्वारा उक्त आवेदन के जवाब में उक्त समस्त तथ्य झूठे एवं मनगढ़ंत होने एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पूर्णतः फर्जी होना लेख किया गया, किंतु उसके द्वारा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में विशिष्ट रूप से इनकार न करते हुए सामान्य रूप से इनकार किया गया. न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लिए गए. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के पिता बालकिशन रजक को गोपाल प्रसाद केवट एवं उसके भाई हरिलाल केवट के द्वारा दिनांक 1971 को रजिस्टर विक्रय पत्र के माध्यम से ग्राम रिठोरी स्थित भूमि खसरा नंबर 430/2 में से 1 एकड़ कृषि भूमि विक्रय की थी. उक्त भूमि गोपाल प्रसाद केवट एवं हरिलाल केवट के स्वामित्व की न होने के कारण अपीलार्थी अशोक रजक के द्वारा पुलिस अधीक्षक जबलपुर को गोपाल प्रसाद केवट एवं हरिलाल केवट के विरुद्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट की गई थी, जिसके पश्चात हरिलाल केवट एवं गोपाल प्रसाद केवट के द्वारा अपीलार्थी अशोक रजक के साथ भूमि खसरा नंबर 430/2 रकबा 1600 हेक्टेयर के स्थान पर अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 538/1 एवं 538/2 में से आधा एकड़ जमीन कुल भूमि रजिस्टर विक्रय पत्र निष्पादित कर कब्जा सौंपने का अनुबंध किया था, जिसके पश्चात हरिलाल केवट के द्वारा भूमि खसरा नंबर. यहीं से गोपाल प्रसाद केवट की बेईमानी समझ में आ जाती है. वो एग्रीमेंट करते हैं. But my submission, no such agreements has been done, and these documents, Lordship, these are the matter of evidence. ठीक है. But prima facie, Lordship, because I am in the possession, my name is recorded. Where is your name recorded? The name of the. Where is your name recorded? The name of the father-in-law is recorded in the revenue. Why father-in-law did not file a suit? We understand all this design. Why father-in-law did not file a suit because his name is recorded? I am asking you from the beginning. लिखिएगा. Lordship, humble submission. For this, Lordship, there is a citation, Lordship. दे दीजिए citation दे दीजिए. I may be permitted day after tomorrow. No. Just now or no. Lordship, because this practice, no. This is not. This is a high court. You should have come. लिखिएगा. Because Lordship, I could not bring it today, Lordship. Sorry. I am humble submission. No, I am sorry. Kumari Neelam Goyal, learned. Tomorrow, Lordship. No. It will not be. After hearing for such length, I will not adjourn the case. Lordship, I am sorry. You should have said this in the first instance that you are not prepared. Case be adjourned. Lordship, After arguing and disclosing my mind, I will not. No, Sorry. Only for the citations, Lordship. No. Sorry. Only for the citation, I may be. You may challenge this order. लिखिएगा. Now don't disturb. This miscellaneous petition is filed. आप लोगों ने बिल्कुल वकालत को मजाक बना दिया है. Because under Article 227 of the Constitution of India, being aggrieved of order dated 21/6/2023, passed by learned 10th Additional District Judge, Jabalpur in MCA number 299 of 22, setting aside the orders of the trial court, whereby injunction was granted by the learned 4th Civil Judge Junior Division, Jabalpur in RCS 206A/22 in favor of the present petitioners. Next, ma'am.
petitioner's contention is that the land in question contained in survey number 538/2 belongs to and survey number 13 belongs to their father-in-law, Gopal Kevat. Gopal Kevat, upon death of husband of petitioner number 1, Srimati Sanjobai Kevat, that is late Shivram Kevat, granted cultivating rights in favor of the petitioners. Full stop. They are cultivating the said land, but the private respondents are trying to interfere in their peaceful possession. Therefore, trial court granted injunction. Now, on the basis of certain documents which were produced under Order 41, Rule 27, CPC by the defendants, Learned First Appellate Court has dismissed the injunction or has set aside the order of injunction granted by the trial court and has vacated the stay. Full stop. Next paragraph. Kumari Neelam Goyal extraneously submits that the impugned order is illegal and arbitrary. Full stop. It has failed to take into consideration cultivating possession of the petitioners into consideration. Full stop. She submits that she has a judgment in her support, which she proposes to file subsequently in a day or two. Full stop. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties, for the petitioner and going through the record, it is necessary to revert to the basics of law, namely to obtain an order of injunction, parties are required to establish 3 ingredients, namely prima facie case, balance of convenience and irreparable injury. Full stop. Next paragraph. Firstly, if there was any interference in the land being owned by Gopal Prasad Kevat, then locus was available with Gopal Prasad Kevat to file a civil suit claiming injunction. Full stop. Gopal Prasad Kevat admittedly did not file any civil suit. Full stop. Admittedly, petitioners do not have any title in the suit land. Full stop. By virtue of children and please not children of the deceased son of Gopal Prasad Kevat and wife of deceased son of Gopal Prasad Kevat, according to them, they are cultivating the said land. Full stop. There is no agreement brought on record by which land was given to them for cultivation. On the contrary, defendants produced along with an application under Order 41 Rule 27 CPC certain documents to point out that Gopal Prasad Kevat and his brother Harilal Kevat had executed a registered sale deed in favor of Balkishan Rajak for selling land situated at village Retori contained in survey number 430/2. Full stop. When it was discovered that said land was never recorded in the names of Gopal Prasad Kevat and his brother Harilal Kevat, a report with the police was lodged for commission of fraud. Full stop. Thereafter, to save themselves, Gopal Prasad Kevat and Harilal Kevat executed an agreement to sell land contained in survey number 438/1 and 438/2 in equal portion, constituting 1 acre. Full stop. Thereafter, sale deed was registered in regard to land contained in survey number 538/1 in the name of mother of Balkishan Rajak. Sorry, in the name of wife of mother name, wife of Balkishan Rajak. Full stop. Full stop. On 24/2/2021. Full stop.
Gopal Prasad Kewat did not register land contained in survey number 538/2, which is the subject matter of the agreement to sell, full stop. Taking all these facts into consideration, learned First Appellate Court has rightly held that none of the three ingredients for grant of injunction are available in favor of the plaintiffs, who are neither the owners nor the title holders of the suit property, and therefore has rightly rejected the has rightly dismissed the order of grant of injunction passed by the trial court. There is no illegality in the impugned order, as petitioner in the present petition has also failed to establish three ingredients for grant of injunction. This order does not call for interference in the supervisory jurisdiction. But Petition fails and is petition dismissed. number 2 to 4, Lordship, they are entitled, Lordship, as a legal बताइए, Lordship, because लिखिएगा at this stage श्रीमती Miss Neelam Goyal, after committing a professional misconduct of not bringing the judgment to the court and seeking time to produce judgment, submits that petitioners are entitled to inherit the said land and therefore their right could not have been taken away, full stop. This argument is erroneous on face of record, full stop. Land is still in the name of Gopal Prasad Kewat. Nobody prevented Gopal Prasad Kewat from filing a suit, but probably Gopal Prasad Kewat was aware of the weakness of his suit in the teeth of the agreement which was executed by him to save himself from the police proceedings for committing fraud in relation to the earlier sale deed of 1971, and is apparently using his daughter-in-law and grandchildren as a cover-up, full stop. That cover will not provide them any they will not provide them with any material to show prima facie case. Therefore, again, this court is of the opinion that there is no material in favor of the petitioner to show indulgence. Chaliye. This is petition arising out of an order passed by the enforcement officer constituted, my lord, under the Real Estate Regulation and Development Act. The issue क्या है ये enforcement officer, my lord, has passed an order under the provisions of exercising the powers, my lord, under section 71 of the Real Estate Regulation and Development Act. क्या है 71? And it is a case where, my lord, the Real Estate Tribunal says such delegation to enforcement officer is not proper. पढ़िएगा क्या है power to adjudicate क्या है ये? My lord, 71 says, my lord, power to adjudicate for the purpose of adjudging compensation under section 12, 14, 18 and section 19, the authority shall appoint in consultation with the appropriate government one or more judicial officer as deemed necessary, who is or has been a district judge to be adjudging officer of the holding for holding an inquiry in the prescribed manner, after giving person concerned a reasonable opportunity of being heard. So adjudicating authority is, my lord, constituted to deal with such complaints, and who happens to be a district judge, my lord, not below the rank of a district judge. So the intention of the act, my lord, these all adjudications have to be made by a judicial officer. Now, my lord, there appears to be some internal delegation, whereas the power to adjudicate have been delegated to enforcement officer. And the enforcement officer, my lord, this complaint which was made, any enforcement officer का order कहाँ है बताइएगा? My lord, that is the order at Annexure P5. Page number? प्रवर्तन अधिकार 34. 34. क्या लिखा है उसमें? इसमें तो उन्होंने उनका क्लेम अलाउ कर दिया. एक सेकंड समझे तो. My lord. DN शुक्ला प्रवर्तन अधिकारी. Yes. ये क्या है DN शुक्ला? ये प्रवर्तन एनफोर्समेंट ऑफिसर. इनका स्टेटस क्या है? डीजे है. ये ब्यूरोक्रेट्स हैं सर, ये ब्यूरोक्रेट है. DN शुक्ला इज अ ब्यूरोक्रेट. कहाँ लिखा है आपने? सर इसमें लिखा नहीं है, बट he is not the enforcement. अरे ऐसा कहाँ लिखा आपने? He is not a judicial officer. We don't know that designation of this officer, but प्रवर्तन अधिकारी, my lord, that has been differently. My lord, इसमें kindly have a look. Show me from the record that he is not a judicial officer. Where is the stand taken by you that he is not a judicial officer? वो हमने लिखा तो है सर petition. जी. We have mentioned it. Where have you mentioned that? The tribunal itself has observed. Where is the observation of the tribunal? My lords, may kindly have a look at the order passed at 48.
Page 40. P7. That is the order passed in some other case, but these are the orders which are being consistently passed by the enforcement. My lords, may kindly have a look at para 2 at page 49. It reads, my lord, from the scheme of the Act and Rules 2017 as amended by the Amendment Act 13/9/2019, a new forum, namely executing officer, has been created for execution of the orders passed by adjudicating officer or authority or tribunal, and powers conferred by the Act on the authority or the tribunal is vested in the executing officer. This is further observed that by an administrative order dated 1/9/2021, the designation of the executing officer created by the rules framed by the state of MP has been changed to enforcement officer. It is thus clear that since the creation of the office of the executive officer is not by the Act, but by the rules so framed under Section 85 of the Act, Section 44 of the Act does not confer power for entertaining appeals by the tribunal filed against the order passed by the executing officer, are now under the changed designation by the enforcement officer. Further, it is not clear whether the order passed by the enforcement officer in the capacity of enforcement officer or under delegated power as referred to above. Thus, from the foregoing, it is established that this tribunal does not have jurisdiction under Section 44 of the Act to entertain appeal against impugned order passed by the enforcement officer. ये कहाँ कि enforcement officer का order illegal? My lord, what the tribunal is saying, my lord, Mr. Counsel, once you take a particular line of argument, yes, then you are required to my justify line it. of argument is Your that, line of first line of argument with which you opened the argument is that in terms of this provision contained in section 71, yes, a person who is not of the rank of district judge cannot be appointed as adjudicating authority. Right? Now, when I asked you that, please show me from the court that this D.N. Shukla is not a judicial officer, then you referred to this order. That particular aspect, my lord, you will inquire upon, and but my primary submission, my lord, the office of enforcement officer and the adjudicating officer Who are you? Now let us are come with separately created under the Act. Who are you? Who are you? I am, my lord, the promoter and builder. Promoter and Yes. builder. And what is the order against you? Order is that, my lord, a project was, my lord, booked, in a project, my lord, a flat was booked by the private respondent in 2015. Yes. And an agreement was signed. Yes. According to the agreement, my lord, the payment was scheduled, and according to the payment, my lord, the construction was also scheduled. Yes. The booking amount was given by him, my lord, is 3 lakhs, and thereafter, my lord, he did not follow the schedule of payment which was there in the agreement. Thereafter, my lord, the COVID came, my lord, and 15 में कोविड आ गया था, 15 में कोविड आ गया था. उसके पहले सर वो डिमोनेटाइजेशन आया, फिर दूसरी प्रॉब्लम्स आई, तो उसमें दोनों पार्टीज के बीच एक एग्रीमेंट हुआ. He wished to withdraw from the project, my lord. He has taken back the entire amount of booking, and he agreed that the similar flat, my lord, would be provided to him by the builder in some other project. Having agreed to that, my lord, he moved an application. So we for refund of his 10 lakh rupees. Yes. वो उसमें आप इतना बता दीजिए कि आपने 10 लाख रुपए ऑलरेडी लौटा दिए हैं. नहीं, उसमें ये था कि उसके 10 लाख रुपए का वो हमने कह दिया था कि आपको दूसरे प्रोजेक्ट में कंपनसेट, तो उसने बुकिंग अमाउंट कैंसिल विड्रॉ कर लिया. नाउ मैं कहां है आपका एग्रीमेंट, कहां है जिसमें आपने कहा कि आप दूसरे प्रोजेक्ट में दे देंगे? पेज नंबर वो सब प्लीडिंग्स में आया है. प्लीडिंग्स में नहीं है, एग्रीमेंट दिखाइए. सॉरी सर, उन्होंने भी these facts are undisputed. नहीं, sorry, I'll not go into all this, otherwise this petition, you know what will be at stake. It happens, my lord. Show me the agreement. No, we know. My lord, this was an admitted fact that, my lord, booking amount was taken back. He has accepted it in the complaint itself. No, you have only two choices: either to show me an agreement where he has agreed to adjust his remaining amount in another project, or if there is no agreement, then please execute this order. My lord, this order is otherwise not executable, my lord. Even you have to pay that 10 lakh rupees along with interest. My lord, that compensation claim was separately placed before the adjudicating officer. My lords, may kindly have a look. There was 2 adjudication on the similar issue, one by the enforcement officer and one by the adjudicating authority himself. क्या किया adjudicating? उन्होंने claim reject कर दिया. ये कह के कि जब having agreed to withdraw from the project, there was no cause to move an application. Under section 18, my lords, may kindly have a look at annexure P6. Page number? 44. And this was an order passed by the adjudicating authority under section 71. Page, you are referring to page 47. 47. 47 में सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जो ब्याज दिया है adjudicating authority ने,
उसकी लाइट में अलग से कोई क्षतिपूर्ति दिलाया जाना उचित नहीं समझते। पढ़िए लास्ट 4 लाइनें। आवेदक ने अन्य मद में किसी नहीं चाहे प्रकरण की उपरोक्त परिस्थिति एवं प्रवर्तन अधिकारी द्वारा आदेशित ब्याज दर को देखते हुए अन्य किसी भी मद में क्षतिपूर्ति क्लेम फॉर डैमेजेस हैज बीन ऐसा रिजेक्टेड। इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि पैरा 8 में उन्होंने फाइंडिंग्स दी हैं इसकी कि why the claim was not maintainable। चलिए पढ़िएगा। अनुबंध के अनुसार आवेदक गणों को दिनांक 25/8/18 तक आधिपत्य देना था और आवेदक द्वारा संपूर्ण राशि के भुगतान के पश्चात अथवा कम से कम 80% या 90% राशि के भुगतान के पश्चात अनावेदक गण दिनांक 25/8/18 तक निर्माण कार्य पूरे कर आधिपत्य प्रदान करने हेतु। जब तक स्टे नहीं हो तब तक आपका कोई लोकस नहीं है। इट इज बिटवीन कोर्ट एंड द स्टेट हैज नो। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, मैं यही बता रहा हूँ इनको। किसी भी केस में जब तक स्टे नहीं होगा तब तक आप आई विल बी डीलिंग विद यू डिफरेंटली। जब आपका लोकस हो तब खड़े होइए और जो बात कहना हो लिखित में कहिए। ठीक है, बैठ जाइए। आप लोगों की क्रेडिबिलिटी बहुत लो है। मैं कंटिन्यू। और बिगर किसी उसके खड़े हुए आप तो कॉस्ट लगा दूंगा। हाँ प्लीज कंटिन्यू। 90% राशि के भुगतान के पश्चात अनावेदक गण द्वारा दिनांक 25/8/18 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर आधिपत्य प्रदान करने हेतु कार्रवाई न करते या दिनांक 25/8/18 माइनस पैरा 8। हाँ, अनुबंध के अनुसार अनावेदक गण को दिनांक 25/8/18 तक आधिपत्य देना था और यदि आवेदक द्वारा संपूर्ण राशि के भुगतान के पश्चात अथवा कम से कम 80% या 90% राशि के भुगतान के पश्चात अनावेदक गण दिनांक 25/8/18 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर आधिपत्य प्रदान करने हेतु कार्रवाई न करते या दिनांक 25/8/18 के बाद आवेदक शेष राशि अदा करने के लिए तत्पर होता किंतु अनावेदक गण शेष राशि की मांग कर निर्माण कार्य के पश्चात आधिपत्य देने में कोई रुचि नहीं दिखाते और भुगतान की राशि वापस करने पर उसे वापस न करते तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता था कि आवेदक भुगतान करने हेतु तत्पर था। अनावेदक ने निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने की शर्तों को उल्लंघन किया है, किंतु जहां यह तथ्य निर्विवादित है कि आवेदक अनुबंध हेतु निर्धारित अवधि दिनांक 25/8/18 के पूर्व सौदा निरस्त कर भुगतान की गई राशि वापस की मांग किया, वहां यह स्पष्ट है कि आवेदक परियोजना से प्रत्याहरण अर्थात पृथक होने का आशय रखता था। वह अनुबंध के अनुसार निर्धारित अवधि में आधिपत्य नहीं चाहता था। ये डैमेजेस के लिए है ये, but that will not entitle you to retain the amount which has been paid by the। वो 10 लाख तो हम I am liable to refund it। liable to refund along with interest। वो तो हम देंगे, उसमें कोई हमारा वो नहीं है। उसके बाद और क्या बचा? उसमें सर कंपनसेशन है, इंटरेस्ट भी दे दिया है। सिर्फ इंटरेस्ट है, कंपनसेशन इंटरेस्ट भी है ना सर उसमें। हाँ तो इंटरेस्ट तो देंगे ना। Have you not used that money? That issue, my lord, whether there was any fault on my part, but my lord, I am on the issue of my lord competence. My lord, may kindly have a look at the administration which is being prevailing in the authority. There was an defective delegation to the enforcement officer. Enforcement officer, my lord, is definitely defined। आपसे पूछा हमने, आपने कहीं रिकॉर्ड पर दिखाया नहीं डिफेक्टिव डेलीगेशन। हम तो आपको पहला सवाल यही पूछा था आपसे सर। वो उसमें सर your lordship was pleased to my lord ask me put me a question whether he is a judicial officer or not। My answer to is that my lord, that is altogether a different authority, irrespective whether he is a judicial authority or not. He is the enforcement officer, my lord, who is not delegated powers under section 71। 71 adjudication, my lord, is altogether different adjudicating authority में है। और ये जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है my lord, that is already my lord subject matter of adjudication before the TB1, my lord। Whether that particular, my lord, due, because my lord, what is happening against this order passed by the enforcement officer, my lord, I am losing the forum of appeal because the tribunal is not taking up these appeals। भाई, this is an admitted fact that you had accepted certain deposit. He applied for withdrawal from the scheme for your failure to complete it in time. It is an admitted position that for intervening circumstances you could not complete the project. Now you say that he had agreed to shift his money to another project. You are not able to demonstrate it through any documentary evidence. Then is he not entitled to refund of the money? That is the basic and good question. My lord may give me 10 minutes time to ask me for my client, because my lord, that amount whether is paid or not, because this amount is liable to be refunded back if we are not so we'll say that if the amount is not refunded, then it will be refunded in terms of this. My lord, here I am against the orders passed by the enforcement officer, my lord. If that refund in terms of the orders of the enforcement officer. Ask your client to be more fair. The most unfortunate thing is that such persons are not fair.
That is the impression. That is not the impression. But that is available from the record. We have been fair enough, my lord. We have refunded the amount, and even we No, are you have not accommodating refunded. You have not refunded the amount. Where you have said because जब readings में पढ़ के बताइए आपने कहाँ लिखा कि आपने पैसा लौटा दिया है? नहीं, वो बाकी पैसा तो उसका दूसरे प्रोजेक्ट में अकोमोडेट करने को तैयार है ना? नहीं, कहाँ है वो? वो हमने लिखा है ना उसमें? नहीं, अरे वो एग्रीमेंट कहाँ है? नहीं, कहाँ है वो एग्रीमेंट? वही तो आपसे पूछ रहे हैं सर। वो ओरल एग्रीमेंट वो दोनों ने अपनी अपनी प्लीडिंग में एडमिट किया है। इसको भी ले जाइए रेट अपील में, लिखिएगा श्री समदर्शी तिवारी, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। My lords, mention my primary objection that enforcement officer, my lords, सुनिएगा, तीनों चीजें सुनिएगा। My lords, this petition is taken up for admission. Shri Samdarshi Tiwari submits that petitioner is aggrieved of the order dated 24/11/2022 passed by the भू संपदा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण मध्य प्रदेश, that is Real Estate Regulation and Development Authority Madhya Pradesh, in case number N-BPL-21-0229-AU instituted on 17/1/2022 at the instance of the respondent number 3 herein, full stop. By said order, a division bench of the said authority has directed for refund of ₹10 lakhs deposited by the private respondent number 3 herein, along with interest at the rate of 16.45% bracket में simple interest within a period of 2 months. Next para. Petitioner's first objection is that as per the provisions contained in section 71 of the Real Estate within bracket Regulation and Development bracket close Act 2016, adjudicatory power is vested in a person who has been a district judge. It cannot be delegated to any other person. Full stop. According to the petitioner, division bench हटा देना, sorry गलती हो गया, division bench. According to the petitioner, the regulatory authority is not a judicial officer. Full stop. Second objection is that there is no provision for appeal against the orders passed by the executing officer. Enforcement officer. Enforcement officer. In support of this contention, attention is drawn to order dated 11/10/2022 passed by a division bench of the Real Estate Madhya Pradesh Real Estate Appellate Tribunal in MJC number 96/22. Full stop. In fact, next para. In fact, petitioner started reading this order to show that executing officer has no right to pass orders as is the subject matter of the impugned order dated 24/11/22. Full stop. Next para. It is submitted that there was an agreement between the petitioners and the complainant to the effect that his balance amount of ₹10 lakhs will be shifted in another project, and therefore he was not entitled to claim refund of said amount along with any interest. Next para. Shri Samdarshi Tiwari has also drawn attention of this court to the order dated 17/1/2023 passed by ये क्या होता है, न्याय निर्णायक अधिकारी, adjudicatory officer in case number N-BPL-21-221/AO, whereby claim for damages has been rejected. Full stop. Next para. After hearing learned counsel for the petitioner, this court wanted to know and
asked the petitioner's counsel to show from record an agreement to substantiate the ground that petitioners had entered into an agreement with the complainant for agreeing to transfer his deposited amount of rupees 10 lakhs in another project. Full stop. Shri Samdarshi Tiwari is not in a position to demonstrate any such document from record. Next paragraph. Please. Shri Samdarshi Tiwari was again asked to show that what is the status of Shri D.N. Shukla, enforcement officer. Full stop. He did not bring any documentary evidence to show that he will not fall within the definition of Section 71 of the Act of 2016. Therefore, this ground too is not available. However, he admits that original agreement was executed in the year 2015, but because of demonetization and intervening circumstances like COVID, money could not be returned. Full stop. However, his objection is to the high rate of interest. Full stop. Next para. After hearing Shri Samdarshi, this ground is also not made out. In 2015, there was no corona. Full stop. Demonetization was a fiscal decision taken by the Union of India. It had effect on each and every one. Full stop. In fact, petitioner is tacitly admitting that because of regularization of black money, his project could not undertake black money on account of demonetization. His project could not take up. Full stop. However, that ground is not sustainable in the eyes of law. Moreover, as is mentioned by the Tribunal Authority in order dated 17/1/23, that on 25/8/2018, complainant had already made a request for refund of his amount and had decided to withdraw from the project. Full stop. Therefore, at that time, COVID was not in vogue. COVID came in March, April 2020. that argument. Full stop. नहीं, अभी सब आर्गुमेंट आने दीजिए, आपको मदद मिलेगी ऊपर। होता यही है दिक्कत कि यहाँ कुछ बहस की जाती है, फिर वहां जाके बताया जाता है हमारी बहस लिखी नहीं गई। लिखिए, चलिए, हाँ ठीक है, हो गया। क्या लिखा? Therefore, the sufficient time was available to the petitioners to refund the amount if they had clear intentions. Full stop. When impugned order is tested from this aspect, then it is evident that the amount was admittedly utilized by the petitioners for their project. Full stop. They are liable to refund the same. Full stop. There is justification for the interest rate of 6.45 in as much as that is the prime lending rate for a commercial project. Full stop. Authority has been kind enough to award only simple interest, whereas prime lending rate for commercial projects is on compound interest basis. Full stop. Even otherwise, request for payment of compensation and damages has been denied by order dated 17/1/2023. Therefore, there is no illegality or infirmity in the impugned order. Petitioner cannot continue to be enriched at the cost of a poor consumer. He has to refund the amount. Full stop. Such petitions cannot be allowed to be entertained so to protect unscrupulous interests. Full stop. Petition fails and is dismissed. Only one argument may be noted, because that adjudicating authority is said, my lord, कि इसने भी उसका अनुबंध का उल्लंघन किया है. He has also violated the terms of the agreement. ठीक है, चलिए वहां बताइएगा. Oblation. क्या रिप्रेजेंटेशन है मैडम आपका? लॉर्डशिप इन एग्जैक्ट P2 पेज नंबर 49 पे लॉर्डशिप। क्या है ये? लॉर्डशिप ये है कि ये एसटी सीट थी लॉर्डशिप, और इस पे ये जो लेडीज का सिलेक्शन हुआ लॉर्डशिप, उस पे आकाश सर्टिफिकेट नहीं लगाया, एक एफिडेविट दिया गया
एफिडेविट में उसने बताया थाना कि प्रभारी हटाते हैं क्या पंचायत नो के नो लॉर्ड, सरपंच को? नो थाना प्रभारी आपसे क्या गलत ऑर्डर करवा रही हैं? आपने पढ़िएगा, पहले ऊपर पढ़िएगा, प्लीज पढ़िए पहले। यस यस श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना मझगावा, जिला सतना। यस लास्ट की 3 लाइन पढ़िएगा। अतः आवेदन प्रस्तुत कर विनय है कि ग्राम पंचायत मझगावा की निर्वाचित सरपंच को उनके पद से पृथक करते हुए उसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने की कृपा की जाए। Yes, Lord. कौन पृथक करता है पद से? लॉर्डशिप इसमें पेज नंबर 50 हमने कई लगाए, मतलब हम कई नहीं है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आप भी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करिए, लॉर्ड प्रोविजन है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिकॉल ऑफ द सरपंच. For that you have to follow the procedure as provided under the पंचायत एक्ट. आप रिकॉल का प्रावधान है, आप उनको वापस बुलवा सकते हैं. लॉर्डशिप सॉरी, इस तरीके की पिटीशन एंटरटेन नहीं होंगी. आप ये तो कन्विंस करिए या हम इसको डिसमिस करेंगे मेरिट पर. लॉर्डशिप में यही बोली कि हमने पेज नंबर 50 पर देखिएगा, देखो, मैंने मुख्य this कार्यपालन petition- अधिकारी को कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होता. अनुविभागीय अधिकारी को प्रावधान है उसमें, दीजिएगा पंचायत एक्ट दीजिएगा. पढ़ के बताइए मिस्टर शुक्ला, कौन सा प्रोविजन है रिकॉल के लिए? Ms. Ranno Rajak, learned counsel for the petitioner. Shri Vijay Kumar Shukla, learned penal lawyer for state. Petitioner has though made an innocuous prayer to direct the authorities to decide her representation contained in Annexure P2. But when the representations contained in Annexure P2 are minutely examined, then the ulterior motives of the petitioner are writ large. Petitioner is seeking twin reliefs. Firstly, removal of the Sarpanch of Gram Panchayat Majgawa, and secondly, registration of FIR against the said Sarpanch of the Gram Panchayat. Full stop. As far as first relief is concerned, there is a provision for recall of an elected representative, be it a Sarpanch or a Panch, under the provisions of Madhya Pradesh पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993. इसको निकाल के दीजिएगा मुझे प्रोविजन, लिखा दूं, बीच में गैप छोड़ दीजिएगा, प्रोविजन लिखा दूंगा. इतना इतना. Therefore, if petitioner is not satisfied with the working of the Sarpanch, then petitioner can invoke that provision for which Gram Sabha is authorized to pass a resolution. Full stop. इस चार्ट में देख ही लूं उसको. सेक्शन 21A में है. सेक्शन 21A नहीं है, ये कहाँ पढ़ लिया आपने? 21 में ही है. और चलेगा. There is a provision under section 21
to bring no confidence motion against Sarpanch and Up-Sarpanch. Full stop. Similarly, Section 21A deals with recalling of office bearers of Gram Panchayat. Full stop. Thus, as far as prayer for removal of the Sarpanch is concerned, there are ample provisions contained in Section 21 and 21A of the Act of 1993, and no blanket directions can be issued in favor of the petitioner. Full stop. As far as second aspect is concerned, that is the registration of FIR, petitioner is always free to file a private complaint bringing out the criminal acts of the Sarpanch or other persons on record and get a FIR registered if FIR is not being registered by the SHO, Majgawa district, Satna. Full stop. Thus, on both the grounds, since alternative statutory remedy is available, petition is not maintainable. It is liable to be dismissed and is hereby dismissed. क्या है P6? In this case, what happened with the private respondent number 5, who is holding an additional charge under section 68, he has granted permits. There are more than 32 petitions has been filed before this honorable court. Notices has been issued and stay has been granted. Further, thereafter, Lord, on 22/6, it is heard and reserved for orders. कहाँ रिजर्व हुई है? 22 से को हुई नोट कोऑर्डिनेट बेंच पे. तो देखिएगा, list this case subject to the on decision in the WP number 5957 of 22. 5957 of 22, which has been reserved by a coordinate bench on 22/6/2022 for judgment. पावर्स वाला ही केस है मान 68 में आपने भी सुना था, वही वाला केस है. हुआ होगा, लेकिन अब कहाँ यार हार्ड हो गया 22 से. 32 पिटीशंस थी, हमने तो नहीं सुना. नहीं. क्या रिप्रेजेंटेशन है आपका? इसमें 2017 में गजट में संशोधन किया गया कि मीसाबंदी जो है उनको जो 1 महीने से कम समय से बंद है उनको 8,000 रुपए महीने सम्मान निधि दी जाएगी. मैनेजर P2 में है महिला जी. Petitioner claims himself to be a Misabandi. He has made a representation to the Commissioner, Riva Division, Riva, for revision of Samman Nidhi in terms of GAD circulars dated 29/9/2017. Full stop. This innocuous prayer is not opposed by Shri Piyush Jain, learned government advocate for state. Accordingly, this petition can be disposed of with a direction to the Commissioner, Riva Division, Riva, to consider and decide petitioner's representation. Collector filed afresh within 15 days from today. Within further period of 45 days, this court has not expressed any opinion on merits. इसमें कलेक्टर को पावर है. आपने कमिश्नर को क्यों किया अभ्यावेदन? कमिश्नर को भी किया, कलेक्टर को अभ्यावेदन हमने कलेक्टर को भी दिया है. जब तो कमिश्नर का लगा हुआ है, कलेक्टर का भी है मैनेजर P4 में. तो कलेक्टर को बोलना है, कमिश्नर को बोलना है? कलेक्टर को बोल दीजिए. कलेक्टर रीवा विल डिसाइड. चलिए. My lord, in this case, my lord, on the basis of force complaint, my lord, respondent ने my lord हमारे खिलाफ FIR रजिस्टर्ड कर दिया my lord by annexure P1 my lord. इसमें my lord इसके रिगार्डिंग my lord जो कंप्लेनेंट है my lord उन्होंने एफिडेविट दिया है P2 में कि इस तरह की कोई घटना ही नहीं हुई. ये हमारे ऊपर एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि ट्रक से जो है एक्सीडेंट हो गया. उस एक्सीडेंट का पुलिस ने झूठा केस. इस एफिडेविट का हम क्या संज्ञान लें बताइए? माइलर पुलिस फाइनल रिपोर्ट पेश होगी, उसमें जो है आप इनको एग्जामिन करा के या आपके समर्थन में एविडेंस दे देंगे, केस खत्म हो जाएगा. वो जबरदस्ती उनसे ऐसा कराने का प्रयास भी किया, उसकी भी हमने कंप्लेंट की है साहब. आई एम नॉट गोइंग टू ऑल दिस. ये पहले कंप्लेंट करते हैं. आई विल आस्क, ठीक है आपको रिलीफ देता हूँ, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का बोल देता हूँ, झूठा केस दर्ज कराने के लिए 340 की तो कार्रवाई हो सकती है ना. माय सबमिशन
My lord, ये पेन ड्राइव में मैंने जो As फाइल pen किया, drive, I am not going to look ये into it. सारे High Court is not required to scrutinize the evidence. इसको तहसील कोर्ट बना दीजिए आप, आपकी पेन ड्राइव भी देखें, सब कुछ देखें. आप लोग तो चाहते ही हैं कि ये तहसील कोर्ट हो जाए, because there is no regulation in the High Court that who is entitled to practice. एफआईआर फाइल होगी, या तो आपके उस शपथ पत्र के ऊपर पुलिस आपको एग्जोनरेट कर देगी, और नहीं करती है तो फाइनल रिपोर्ट लगेगी, आप एग्जामिन होइएगा, अपने इसको एग्जामिन कराइएगा कंप्लेनेंट को, आपका एक्यूटल हो जाएगा, जब तक जाके बेल लीजिए. My lord, वो पुलिस अथॉरिटी के एक्ट, पुलिस अथॉरिटी ने जो एक्ट किया है my lord, हाँ, उसके रिगार्डिंग हमने जो है तो कंप्लेन किया है. मानव अधिकार आयोग चले जाइए आप, आपको लिबर्टी देते मानव अधिकार आयोग जाकर इनके खिलाफ, ये जिनको आपने पार्टी बनाया है, कंपनसेशन क्लेम करिए, झूठी शिकायत लगा दी है. देखिएगा, श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, एक छोटा सा prays for withdrawal of this petition as he proposes to approach Human Rights Commission making complaint in regard to police officials for lodging a false report and harassing the petitioner. Full stop. With the aforesaid liberty, petition is dismissed as withdrawn. मैंने एक छोटा सा निवेदन और, इसमें जो है, जो कंप्लेनेंट है उन्होंने एफिडेविट दिया, रिकॉर्डिंग के साथ हमने पुलिस अथॉरिटी को दिया होगा, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन में बताइए, उसी के एफिडेविट के ऊपर तो आपकी कंप्लेंट बनेगी. और साहब वो एसपी ने जब उसमें जांच की तो कंप्लेनेंट को लाके उसको फिर से मारा पीटा गया. तो कंप्लेनेंट क्यों नहीं आ रहा? आप इतने चिंतित क्यों हैं कंप्लेनेंट के लिए? सर कंप्लेनेंट क्यों नहीं आ रहा है हाई कोर्ट में कि उसको मारा पीटा है? सर उसको आप मुझे नेक्स्ट वीक कर दें, मैं उसको प्रोड्यूस कर. नहीं, ये मैं फिर वही बोल रहा हूँ, ये आपने तहसील कोर्ट मत बनाइए कि आप उसको नेक्स्ट वीक कर दीजिए, अगले साल कर दीजिए, प्रोड्यूस कर दूंगा, कल रख दीजिए. सुबह से 3 केस देख चुका हूँ कि हाई कोर्ट के वकील जो है जजमेंट लेकर नहीं आ पाते, वो बहस करने के बाद बोलते हैं कि जजमेंट के लिए टाइम दे दीजिए. में माय लॉर्ड क्लियर लिखा हुआ है कि उसको बुलाया गया माय लॉर्ड. ठीक है, उसको आपने पार्टी नहीं बनाई, ही इज नॉट अ पार्टी एंड यू आर नाउ वेस्टिंग टाइम. Petitioner belongs to scheduled tribe lordship. जी, Petitioner belongs to scheduled tribe lordship. He want to sell his land lordship, but he had filed application before the collector lordship. जी. How can High Court give an approval? There is a procedure prescribed under the Land Revenue Code. No, already appeal is, he has preferred the appeal. I have also filed appeal lordship. Appeal is pending, Lord. That appeal is pending. How this petition is maintainable? आप लोग चाहते हैं कि हाई कोर्ट को पार्टी बन जाए आपके काले पीले कामों में. कल को फिर जो है जब वो इलीगल जमीन की खरीद फरोख्त की बात आएगी तो जो है हाई कोर्ट का नाम आ जाएगा कि हाई कोर्ट ने अनुमति दी थी. Submission of the petitioner is the lordship. He had no son lordship. Of the petitioner is already pending before the commissioner. Therefore, this petition is misconceived and premature. Accordingly, I'm praying direction to decide the. No, I'll not direct. Sorry. Now all these orders will not be passed by the High Court. This is not our responsibility. Last 1 year, Lord. हाँ ठीक है. रुकिए एक सेकंड, इसको डिस्पोज मत करिए, इसमें लिखिए. It is submitted that appeal is pending before the commissioner since. कब से पेंडिंग है? The next पेज नंबर 21 में भी. पेज 21 कब से पेंडिंग है? 7/7/2022. Since 7/7/2022. Let affidavit of Commissioner Riva be called for. That why he has not decided the appeal for over 1 year. List this case. Let affidavit be brought on record within 7 days. List on. August 2023. He will also file, along with the affidavit, he will file the complete set of proceedings. Yes, ma'am. The record of this. आने दीजिए अब, ठीक है, यही तरीका बचा है. नहीं सर, इसकी भी रिट अपील करिएगा, आपको स्टे मिलेगा. करिएगा रिट अपील. The petitioner's land was acquired in 1980 and possession was taken, Lordship. The compensation was not paid. I came before this honorable court. The petition was allowed. They went before the writ appeal. That was dismissed. Now, thereafter, Lordship, I
made a representation for payment of compensation. 20% कंपनसेशन का हमारे लैंड का उनने जो प्रैक्टिस उनके यहाँ की पेज 15 है P1 देख लें लॉर्ड जी। लास्ट पैराग्राफ, याचिकाकर्ता की कुल भूमि के एवज में 20% के रूप में 2 लाख वर्ग फुट के विकसित भूखंड दिए जाने हैं। ये P15 क्या है, क्या ये इनका बोर्ड की मिनट्स ऑफ मीटिंग है जेडीए की, आफ्टर डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट उन्हें। अतः याचिकाकर्ता यदि सहमत है तो प्रथमतः 72,000 वर्ग फुट के भूखंड उपलब्धता के आधार पर अन्य योजना में तथा शेष भूखंड इनकी भूमि पर अतिक्रमण हटने पर भूमि स्वामी की भूमि पर दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। बोर्ड समझ विचार। फिर हमने बोला कि साहब पोजीशन हमारा आपने 80 में ले लिया है, अब हम उसमें इंक्रोचमेंट बाद में हुआ, आपने हमसे वैकेंट लैंड ली, पोजीशन बाद में हुआ या नहीं हुआ ये आपका डायरेक्शन, आप हम पर रिमेनिंग करके बोल रहे। तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर बोर्ड मीटिंग की और अभिमत लिया एजी का। एजी का अभिमत लॉर्डशिप एनेक्स P1 के पेज 34 में है, पेज 34 जी। इसमें भी उन्होंने अभिमत में बोला एजी साहब ने कि दिया जा सकता है। एजी का अभिमत क्या बाइंडिंग है क्या? फाइंडिंग मतलब उनसे ओपिनियन लिया था। ओपिनियन क्या? एजी इज जस्ट वन फॉर्मेलिटी होती होगी। नहीं, आप एजी का जो नाम इतनी जोर से ले रहे हैं वो अभिमत है, इज इट बाइंडिंग? नहीं बाइंडिंग बताया मैंने कि इसका क्या मतलब नहीं है। अब सर हमारा ओपिनियन ऑफ एजी हैज नो मीनिंग, इट इज जस्ट लाइक एनी ओपिनियन ऑफ एनी ऑर्डिनरी लॉयर। नहीं ये डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओपिनियन ऑफ द एडवोकेट जनरल एंड द ओपिनियन ऑफ एनी अदर लॉयर? हमारा एक है ना, हमारा जो था वो बोर्ड ने वो कंफर्म भी कर दिया कि भाई 20% को दिया जा सकता है। नोटिस टू रिस्पोंडेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ फीस लॉर्डशिप व्हाट माय सर रजिस्टर्ड इट पोस्ट विद इन 7 डेज रिटर्न। मेरा एक ही सबमिशन सर जी, एक कि इसमें जो इन्होंने किया एक्सपर्टाइट करने के लिए दे दे। बिगर जवाब सुने नहीं दूंगा, सॉरी। मैंने कॉपी रिसीव करा दी सर, स्टैंडिंग करा दी होगी, कोई किसी का नाम नहीं है तो कोई रिटर्नेबल डेट लगा दी, लोकल मैटर रिटर्नेबल इन द वीक कमेंसिंग 19 सितंबर 2023। सर 19 सितंबर बहुत लंबा हो जाएगा। 4 हफ्ते का नोटिस है, अभी आप पीएफ देंगे 7 दिन में, 4 हफ्ते उसके बाद सही लगाया है। हो सकता है उसके पहले तो हमारा हो ही जाएगा। ठीक है, हो जाए तो पिटीशन विड्रॉ कर लीजिएगा। My lordship, the patta issue wrongly, my lordship, and PO. My lordship, the P1 ये पट्टा इशू किया गया है और P2 इसके पति को इशू किया गया है माय लॉर्डशिप। और अदर माय लॉर्डशिप इसके पास एन एग्जैक्ट प्रॉपर्टी भी है और जो भूमिहीन जो होते हैं उनको पट्टा इशू किया जाता है। फिर क्या हुआ? माय लॉर्डशिप इसके कंप्लेंट किए हैं एग्जैक्ट P5। माय लॉर्डशिप इसमें इसने 2 पट्टे लिए हैं भूमिहीन बन के और जो इनके पास ऑलरेडी भूम है। रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने petitioner's contention is that petitioner has made a complaint in regard to respondent number 3 obtaining 2 pieces of land on lease from the state government, claiming herself to be a landless person. Full stop. Petitioner has already made a representation to the collector Riva pointing out this aspect, but collector Riva is sitting tight over the representation. Full stop. Let affidavit of collector Riva be filed in this regard as to what action is taken on the representation made by the petitioner. Let affidavit be filed within 2 weeks, list in the week commencing 7 अगस्त नहीं 14 अगस्त 2023। नंबर 23 this year 20। या आप चाहें तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दे कलेक्टर को डिसाइड करने के लिए, क्या चाहते हैं? कलेक्टर छोड़िए, एफिडेविट छोड़िए, कलेक्टर इज डायरेक्टेड टू डिसाइड द रिप्रेजेंटेशन 15 दिन 30 दिन थ्रू अ स्पीकिंग ऑर्डर। ठीक है ना, चलिए। This court has not expressed any opinion on the marriage. Speaking order under communication to the petitioner by registered AD post / speed post. क्या हो गया? Petitioner is not challenging any specific order, lordship. जी. Only seeking direction to take action against the
culprits, Lordship, those who are regularly assaulting to the person. His petitioner is, Lordship, the journalist, and he is 50% handicapped as per the P1, Lordship, may kindly be seen. Page number 13. In this, Lordship, this person, petitioner, is handicapped 50%. And Lordship, he is seeking relief only to direct the police authorities to take action and give police protection. Against whom? Against whom? You have not implemented anybody as a party. Lordship. How can a blanket direction be given? Culprits, gunda type of people against whom petitioner had disclosed. क्या उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया आपने? Lordship, allow me. जी? Allow me, Lordship. I want to make amendment. नहीं. किस तरीके की पिटीशन है ये? Lordship, गलती से. ये जर्नलिस्ट हैं ये, और कहाँ है इन्होंने कब एफआईआर दर्ज कराई बताइएगा? Lordship, complaints are there, Lordship. कंप्लेंट्स नहीं, इन्होंने एफआईआर कब दर्ज कराई कि इनको असॉल्ट किया गया है? शो मी दैट एफआईआर which he has lodged against such gunda type of person. This is publicity. और कोई ऐसा हैंडीकैप नहीं है, सिर्फ वेस्टिंग ऑफ मसल इन द लोअर लिम्ब है. बताइए इन्होंने एफआईआर किस तारीख को दर्ज कराई है? Lordship, इसमें पेज नंबर 27, Lordship. 27, yes. In this FIR register. एफआईआर किसने रजिस्टर कराई है ये? ये Lordship इसमें. नाम बताइए. जी. संतोष. कंप्लेनेंट है इसमें संतोष अहिरवार, आरक्षक 150. Yes, Lordship. कहाँ है आपका नाम कंप्लेनेंट का? एक मिनट. संतोष कोतवाली, इतना नालिशी, इतना विवेचना में लिया गया. DPS, Lordship. क्या कहाँ है नाम आपका इसमें कंप्लेनेंट के रूप में, बताइएगा तो. Lordship, इसमें पेज नंबर 30 पे, Lordship. हाँ, पेज नंबर 30 पर. विवरण फरियादी द्वारका प्रसाद उर्फ डीपी राजपूत निवासी शिव शक्ति. नाम आरोपियान इतना 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 इतना. विवरण फरियादी द्वारका प्रसाद डीपी राजपूत इतना इतना. टीकमगढ़ मिल सर्जिकल वार्ड पलंग नंबर 16 पर भर्ती दौरान मौखिक रिपोर्ट किया कि मैं टीवी चैनल वंदे भारत न्यूज में पत्रकार. तो आपकी रिपोर्ट लिख तो ली गई, फिर आप जब रिपोर्ट कर रहे हैं तब रिपोर्ट लिख ली जा रही है, तो और क्या एक्शन चाहिए आप? That is there, Lordship. Continuously. उसके बाद कंटिन्यूसली अगली एफआईआर बताइए. अगली एफआईआर बताइए. एक मिनट. ये Lordship, पेज नंबर 50. 50, yes. लास्ट 4 लाइन्स, Lordship. जी. करने लगे जबरन अपनी कार में बिठाकर पलेरिया के पास हम लोग कार से उतरकर मार. ये भी एफआईआर लिख ली गई. ये भी लिख ली. ये तो फाइनल रिपोर्ट है उसी केस की शायद. Lordship, we are only seeking. नहीं, ऐसा नहीं होता. You cannot seek indulgence of the court at your whims and fancies. Lordship, the honorable. दो एफआईआर दर्ज तो कर ली उन्होंने. Lordship, अब आपको क्या? SP में kindly be direct. नहीं, I will not direct SP to do anything. But Police has already taken cognizance of your complaint. They have recorded FIR. There is a complete procedure for investigation. I may kindly be allowed to aid the respondent also. Petitioner has filed. Petitioner who claims himself to be a journalist has filed this petition seeking issuance of writ in the nature of mandamus by directing police officials / respondents to provide police protection to the petitioner and his family on the basis of parity ground, relying on WP 10000 of 21 dated 4/8/21. कहाँ है वो 4/8/21 का आदेश? Lordship. Where is that order? Lordship. Page number? Page number, Lordship, 14. 14. क्या किया ऑर्डर? इसमें SP को डायरेक्शन दिया था, Lordship. ये तो दूसरा केस है ये. This is a different case, Lordship. लिखिएगा. Next. Shri Amit Sharma, learned government advocate, submits that petition is not identical to the relief claimed in WP 1000021. It is misconceived. Petitioner had lodged FIR on 2 occasions, and on both the occasions FIR was registered. Matter is investigated, petitioner has not filed copy of the final report to point out as to what was the final outcome of the 2 FIRs lodged by him. Full stop. Their petitioner has not, next para,
Petitioner has not impleaded any person by name as a party from whom he or his family has a threat. Full stop. There is no parity made out with the order dated 4/8/21 passed in WP 10000/21. Thus, petition being bereft of merits and no material is being produced to show any threat to the petitioner or his family, petition fails and is dismissed. Number 24. This may be linked with WP 11658 of 23, my lord. Because in that original matter, earlier interim order was passed by my lords. Then, Lord, it has been modified List by along with लिख के दे दीजिए कागज जी WP 15604. पर्ची पे लिख के दे दीजिए Sir. के बाद फिर नेक्स्ट केस Serial number 25. श्री राम शरण राठौर. इसमें एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट फाइल किया है कहाँ है वो 1958 नंबर 1958 है 1958 1958 जी 10/2/23 कौन सी एप्लीकेशन है भाई पिटिशनर्स की तरफ से कहाँ है देखिए ऑन आइए 1958/2023 आपको जवाब देना है क्या इसका चलिए Respondent number 3 to 5 are contesting. Nobody is appearing for Union of India. Ramesh Sharma submits that he is not required to file reply, as nobody is appearing for the respondent Union of India to contest this application. Same is allowed. Let necessary correction be carried out within 7 days. List thereafter. जी. Allow the amendment application. Serial number 26. Number 26. Sahil Agarwal. Satish Tiwari. My lord, 26 state, my lord has last date directed the state to file a reply, lordship. Reply and record your lordship. We have filed the reply. You have filed reply? Yes, we have filed reply. 25 साल कल किया लॉर्डशिप इन्होंने. लिखिएगा लेट कॉपी ऑफ रिप्लाई मिल तो गई आपको आप इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हैं नहीं मेरे सामने आया नहीं ना सर फाइल में भी नहीं है. आपके जूनियर को बताइए आपके जूनियर के साइन हो रहे हैं ये कोई राउत RAU ना क्लर्क है हमारा तो मैं ये फाइल में रखा नहीं ना इसकी वजह से सर क्लर्क को बोलिए लिखिए यस सर. Petitioners Council prays for time to file rejoinder to the return filed by the state government. Let rejoinder be filed within 2 weeks. List thereafter. Serial number 27. Manoj Kumar Raja. Lost. Please continue. Sir, in compliance to order dated 9/6/23, we have received the reply of respondent number 5, my lord. I request my lord 2 weeks time. रिप्लाई नहीं है मतलब एफिडेविट along with affidavit. तो फिर उसके बाद उसका क्या रिप्लाई होगा सर माननीय न्यायालय ने मांगा था कि एफिडेविट दीजिए कि उसकी जरूरत है कि जगह की कि नहीं है तो उसका एफिडेविट दे एफिडेविट आ गया बस My lord, we want to bring some additional documents on record, ma'am. लिखिएगा श्री Karnik Singh prays for and by way of last indulgence granted 7 days time to file rebuttal to the affidavit filed by the respondent number 5 mentioning therein that the land in question is required by them. Full stop. Apply, ma'am. Serial number 28. Girish Singh Dubey.
बताइए। इन दिस केस मिला कि चुरहटा थाने के पुलिस ऑफिसर ने हमारे खिलाफ 4 केस, 3 केस एक दिन में ही, और चौथा अब 2 दिन बाद 4 केस हमारे खिलाफ रजिस्टर किए फर्जी तरीके से। चारों केस में प्रेजेंट पिटिशनर एक्विटल हुआ है। और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पढ़िए ना, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा लगता है, पढ़िए सीआरपीसी में there is a provision for filing a case under malicious prosecution. Please file it. Who stops you? बताइए ना, malicious prosecution का दावा लगाने से क्या आपको हाईकोर्ट की अनुमति लगेगी क्या? Shri Dhiresh Singh Dubey prays for withdrawal of this petition as he proposes to file a case of malicious prosecution against the police authorities. The aforesaid liberty petition is dismissed as withdrawn. Number 29, Vidya Shankar Mishra. What's my senior counsel argued in another courtroom currently pass over. दूसरे कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं। पास ओवर नहीं होता है, फाइनल हियरिंग वाले दिन पास ओवर नहीं करते। 21/4 को भी आपने टाइम मांगा था, तो केस बढ़ गया था। बताइए क्या मैटर है? फाइल ही नहीं आपके पास? फाइल है सर, मैं पढ़ा नहीं हूँ। पढ़ के क्यों नहीं आए? सर जस्ट अभी सुबह मुझे फाइल मिली है। सुबह आज फाइल मिली, इसलिए पढ़ के नहीं। आपके चैम्बर की प्रॉब्लम है, देखिएगा। श्री शुभ नाम बताइए आपका? अंकेश मिश्रा है? अंकेश मिश्रा। Ankesh Mishra prays for time. He submits that he is not ready with the matter and he has received file today morning itself. Full stop. He submits that arguing counsel is busy in some other court. Full stop. Case was adjourned on 21/4/23 also. List after 4 weeks. See next week. Right. Number 30, Kumar Singh. My lord, this is a second visit of the petitioner before this honorable court, my lord. Here, my lord, may kindly check it. This is a DB matter, lordship. As per the roster, my lord, 3 का matter है, clause 4 में लोक परिसर। नहीं मालूम है। जी। लिखिएगा। श्री शुभ नाम बताइए आपका? नवीन दुबे सर। Naveen Dubey submits that as per the roster, this matter is required to be placed before the division bench, registry to examine and do the needful. नवीन दुबे, गवर्नमेंट एडवोकेट। इसमें हमारा इविक्शन का है, तो नेक्स्ट वीक कर दे, my lord. लिस्ट मंडे, my lord. लिस्ट बिफोर अप्रोप्रिएट बेंच ऑन, परसों लगा देते हैं। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हाँ, परसों। लिस्ट ऑन 28 जुलाई 2023। Serial number 31, Porto Shankar Jha. The order under challenge is next to P5, page number 27. The petitioners herein had purchased the suit land by way of a sale deed dated 14/11/2006. Thereafter, they preferred an application for mutation during the एडमिशन पे लगी है ना? In fact, my lord, may I submit, my lord, there is a development also in this case, my lord. The civil suit filed by the respondents were dismissed, my lord. Thereafter, my lord, the respondents preferred a first appeal, my lord. That is RCA 76 of 22, my lord. In that case, my lord, we have instructions that last night, yesterday, my lord, in the evening, an interim injunction has again been passed in favor of the respondents. We would like to place that order on record. It has not been uploaded yet, so we couldn't get the copy. Srimati Sanjana Sahani for the petitioner. Shri Aditya Adhikari, learned senior advocate, assisted by Shri Jagtendra Prasad for the respondents. Shri Aditya Adhikari submits that yesterday only interim protection has been granted by the learned first appellate court in favor of the respondents herein. Full stop. He prays for time to bring that order on record. Let record order be brought on record within 7 days. List immediately thereafter. Serial number 32. Number 32. the reply of the state is awaited, my lord. क्या मैटर है ये? May I submit, my lord, senior advocate Ravish Agrawal is engaged in the matter. As per my senior advocate Ravish Agrawal is engaged in the matter. My lord, I had instructions that the reply is awaited. If my lord is inclined to hear it on merits. Reply की कहाँ जरूरत है? और senior advocate का adjustment होता नहीं है. No, my lord, he is available, my lord, but for purposes of arguments on merits, my lord, he is engaged in the matter. ये सब मत बताया करिए. टाइम चाहिए, बस टाइम बोलिए.
Srimati Sanjana Sahani submits that she has engaged a senior advocate. She is not prepared with the arguments. Reply of the state government is awaited. आपको reply देना है इसमें क्या? 2019 notices. क्या? Then 2019 notices were issued. Notices were issued. It is different thing. This is against the order of the commissioner, additional commissioner. No, there's no particular order being challenged. There's inaction on part of the. Shri Lokesh Jain submits that no reply is required on behalf of the state government. List this case. Actually, letters were written क्या? earlier. Letters were written earlier. अच्छा लिखिएगा श्री लोकेश जैन prays for time to file return subject to payment of cost of ₹10,000 looking to the fact that petition is pending since 2018 and notices were issued on 5/11/19. 5/11/19 no return is filed, comma 4 weeks time is granted to file return list after 4 weeks. Cost be deposited in High Court Legal Services Committee and be recovered from the erring official and not to be debited to the public exchequer. Leader number 33 is Malam, in item number 33, Manoj, the reply of state as well as private respondent as well as intervener is awaited, Manoj. Is? Intervener. Is reply is awaited. All this. आप वाले में नहीं. In item number 33. हाँ 33. जवाब क्यों नहीं फाइल कर रहे भाई आप लोग? My lord, I am for respondent number 7 for intervener. My application has been admitted. My lord, in last occasion, I have requested the Mr. Counsel to supply the copy of the petition, but I have not received the copy of petition. It was never requested and चलिए आप आज फाइल कर दीजिए. To the best of my knowledge, it is not acknowledged. Shri Himanshu Shukla submits that the state government, comma private. आपने 11/1/23 का क्या आदेश था उसकी कंप्लाइंस कर दी? वो कर दी. इनका नाम जोड़ना था. That I have added. Intervener and किसने और जवाब नहीं दिया? R6 respondent number 6. R6 have not filed their reply. Counsel for the intervener submits that copy of the petition is not supplied to the intervener. That copy of the petition along with enclosures be supplied to the counsel for intervener during the course of the day under acknowledgement. Full stop. He may file reply within 4 weeks. In the meanwhile, counsel for state is granted time subject to payment of cost of ₹5,000 to file reply, as reply has not been filed though petition is pending since 2019 with an advance copy to the counsel for the state. So same order होगा not to be debited to the same. चलिए list after 4 weeks. हमारे बेटे में रिप्लाई फाइल का स्टेट की नहीं है आपकी. एक हमारे के हमारे बैकेटिंग स्टे भी लगा लो. ठीक है. तो उसमें 2 weeks दीजिए. फिर 2 weeks दीजिए. As Shri SD Mishra has serious objection to adjournment as he has filed an application for vacating stay. List on. In connected matter. Connected 33.1 में इनका स्टेट का जवाब नहीं है. 33.1 में भी नहीं. हाँ तो 5,000 रुपए कॉस्ट 33.1 में भी लगाइए और रिप्लाई के लिए 2 हफ्ते का टाइम दीजिए. और श्री SD Mishra has serious objection to long adjournment as he has filed an application for vacating stay. List on 17 अगस्त 2023. Top of the list with clear stipulation that if reply is not filed, then matter may be heard without reply. Lord, in this case, I am challenging the order passed by the collector, my lord. That is Annexure P5, my lord. By this order, my lord, my application for correction of record, my lord, in pursuance to the order passed by the SDO, that has been rejected, my lord. Now, appeal and revision, again, this order has been rejected by the Commissioner and Board of Revenue.
Now the case is like this, my lord. My forefathers, my lord, owned the lands in question, my lord. Now an inquiry under section 57 was initiated to find out as to whether the land belongs to government or not. The sub-divisional officer, my lord, conducted a detailed inquiry. इसमें स्टेट ने टाइम मांगा था जवाब फाइल करने के लिए, फिर क्या हो गया? Letter has been sent. फिर श्री संजय के अग्रवाल, learned counsel for the petitioner, Shri Jitendra Srivastava, panel lawyer for the state, submits that letter was sent to the authorities for filing reply, but no response is received from the state authorities. He prays for further time to file reply, subject to payment of cost of rupees 5,000 to be deposited in High Court Legal Services Committee and not to be debited to the public exchequer, but to be recovered from the erring official of the state government personally. 4 weeks time is granted to file reply. Just after 4 weeks. IR to continue. IR to continue. Number 35, Bhatin Patel. My lord, on 11/7, my lord, reply of the state has been filed. I pray 2 week time to file rejoinder, my lord. Shri Dharmendra Patel submits that. 9/2 की ऑर्डर शीट देखेंगे लॉर्ड, इसमें कंप्लायंस करना था इनको 9/2/2023 की. My lord, that is already on record, my lord. Submits that he has already made compliance of the order dated 9/2/23. He prays for and is granted 2 weeks time to file rejoinder to the return filed by the state authorities. My lord, order dated 29/5 का P1 is already on record, my lord. होगा ना, तो यही तो लिखा है कि आपने compliance कर लिया है. Any recommencing करनी है. What is it? हैं? Any recommencing करनी है. हाँ, लिखिएगा recommencing 21 अगस्त 2023. I have to be continued, my lord. IR to continue. Much of it. Number 36, Mantu Pula, Ankit Agarwal. Well, in this case, my lord, it is undisputed that the petitioner is owner of land, my lord. What is his grievance? That in column number 12, there is entry of one chowki. And despite fact that chowki has been destroyed and it is not existing since 1990, that entry was not deleted. Aggrieved by same, he had filed first of all, he had moved the application before the patwaris, and when no heed had been paid, they had moved an application before the Tehsildar. Tehsildar inquired the matter, called the report. In report, it was specifically mentioned that no jungle chowki exists. So the Tehsildar has directed to delete that particular entry from the khasra itself. Against that, respondent number 5, state has filed the appeal. That appeal was allowed solely basis on single ground that no opportunity of hearing had. Where is the order of the Tehsildar? That order of Tehsildar is annexed P4, my lord. P4. क्या लिखा है आपके तहसीलदार साहब ने? 34. आवेदक प्रकरण में पेज नंबर 34. नोटिस कहाँ दिया है अपोजिट पार्टी को? मध्य प्रदेश शासन पार्टी है. अरे मध्य प्रदेश शासन पार्टी है. इश्तहार जारी किया उन्होंने सर्व सामान्य के लिए. और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैटर है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नोटिस दिया उन्होंने. यहाँ पे पंचनामा जब जांच हुई थी, पंचनामा जांच से मतलब नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नोटिस दिया इन्होंने पंचनामा बनाने के पूर्व. नहीं, वहां पे तो वो पार्टी नहीं तो फिर क्या गलत है इस ऑर्डर में? सुनवाई करके दोबारा फ्रेश ऑर्डर पास करेंगे. देयर इज नो इलीगैलिटी इन द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर. मतलब नो प्रेजुडिस हैज बीन कॉज्ड बाय द हम्बल सबमिशन. Will not decide that. Principles of natural justice have been violated. Your Tehsildar was acting at your behest. Let the principles of natural justice be followed. मतलब this honorable supreme court judgment that point. दीजिएगा लाइए. एक तो आप प्रिंट आउट लेकर आया करिए. मतलब प्रिंट आउट नहीं, this is I am telling you again and again. Either you bring a book or should give a list of the books in the morning to my reader so that books are available to me, or you should bring a photocopy so that you can hand it across the board. This kind of practice is not acceptable to me. I just forgot in my table. My junior is on the way. He is coming with. I don't know. You are wasting time of the court. I am apologizing for. Principles of natural justice violate होंगे. I will not interfere. मतलब कुछ नहीं किया है, उसने एसडीओ ने सिर्फ रिमांड किया है मैटर को. There is no legal petition is filed against the orders of the Additional Commissioner Riva Division Riva, passed in appeal number 996
2012-13 on 22/8/2019 affirming the order of the sub-divisional officer revenue Tehsil Sehaval district Sindhi on 26/4/2013 passed on 26/4/2013 in case number 94/appeal/2011/12 setting aside the orders of the Tehsildar passed behind the back of the contesting parties. Full stop. Next para. The only dispute is at whether the entry made in column 12 of the Khasra in regard to the land owned by the petitioner could have been removed by the Tehsildar without affording opportunity of hearing to the forest department or not. Full stop. A sub-divisional officer and the additional commissioner have concurrently held that Tehsildar did not afford any opportunity of hearing to the rival parties and thus there was violation of the principles of natural justice. Therefore, the two courts below have shown indulgence. Full stop. लाई दीजिए सुप्रीम कोर्ट दीजिए. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ के वायलेशन में ऑर्डर पास किया जा सकता है. मगर तो बोलता है अगर प्रेजुडिस कास्ट नहीं होती तो इस आधार पर उसको क्वेश्चन न किया जाए. अच्छा चलिए बताइए. ऐसा कहता हूँ. हाँ मगर कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है? My lord. Reliance is placed on the judgment of Supreme Court in State of UP versus Sudhir Kumar Singh and others 2020 SCC online 847 where it is held that if no prejudice results from non-observance of the principles of natural justice, then natural justice is a tool to rectify injustice, if any, caused to a party. Courts apply it where a party has actually been prejudiced, not where natural justice would be an empty formality. However, in the present case, the chowki in question is said to be the one erected by the forest department. Therefore, the ratio of the judgment laid down in case of state of UP versus Sudhir Kumar has no application because without hearing the said forest official, no order could have been passed by the Tehsildar behind the back of the forest range officer. Full stop. Accordingly, the impugned orders passed by the sub-divisional officer and the additional commissioner seeking observance of the principles of natural justice cannot be said to be arbitrary or illegal. Calling for interference, petition fails and is dismissed. My lord, may kindly apprise, my lord, why this no prejudice has been caused, my lord. My lord, it is undisputed that land is mine. There is फॉरेस्ट चौकी खड़ी कर सकते हैं ना? नहीं, फॉरेस्ट चौकी 90 से है ही नहीं वहाँ पे. और इनकी रिप्लाई में भी ये नहीं कह रहे हैं कहीं पे भी कि हमारी फॉरेस्ट चौकी बनाना है. जांच करके मालूम पड़ेगा. इनका कहीं बोल ही नहीं रहे कि हमको बनाना है. ठीक चलिए नेक्स्ट केस. Lord, this is against Board of Revenue. R5 is the main contesting party. R5 is the main contesting. नाम आ रहा है सब किसी का क्लियर नहीं हो रहा है. सर्विस तो हो गई, रिप्लाई भी दे चुके हैं. नहीं आएंगे तो क्या होगा? सर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर है एनेक्चर P3. बिफोर आई टेक अ लॉर्डशिप नोट, आई जस्ट नरेट द फैक्ट्स इन नटशेल. Not I entered into an agreement to purchase the land of an Adivasi, R6. She is the respondent, R6. We had an agreement. Now that agreement could not be turned into a sale deed unless a permission is given by collector under 165. So my lord, the आदिवासी भूमि है क्या? नहीं, आदिवासी की है. हाँ वही. हाँ तो हाँ, वो उसमें 165 से परमिशन लेना था. तो she approached the collector, made an application for seeking permission. Collector ने केस रजिस्टर किया. He called for the report. Now report has come on 29th November 16th. It's an adverse report which says that permission should not be granted for these many reasons. The matter before the collector remained pending at that stage. तो 29/11/16 को adverse report आई और केस वहाँ pending था. Then my lord, suddenly in February 17 straight away a revision is filed before Board of Revenue. By whom? By in the name of that Adivasi lady. Against the proceedings pending before collector, not against any specific order, and saying that collector is not granting permission, so therefore Board of Revenue should exercise revisional powers and give permission. वो 8/2/17 को पेश होती है और 4 दिन बाद उसमें एक ऑर्डर हो जाता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से डायरेक्टली ग्रांटिंग परमिशन बाय पासिंग द कलेक्टर.
Now interestingly, वहाँ कहाँ है वो ऑर्डर? बोर्ड वो ऑर्डर सर P3 है पेज 20 पे, पेज 20 पर। और इसके बाद वो जो प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, nobody knows that this has happened. Collector proceeds with that proceeding, he takes the adverse report on record and then he passes a final order. ये तो ठीक है ना, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नाम ही पर्याप्त है। तो अब क्या बोलते हैं? क्वेश्चन कर देते हैं इसको। और वहाँ कलेक्टर साहब बाद में जब वो फाइल टेकअप करते हैं तो मेरिट्स पे फाइनल ऑर्डर करते हैं कि परमिशन रिफ्यूज्ड। ठीक है, वो ठीक है, उसको ऑर्डर को चैलेंज करिएगा जो नहीं, वो हम उससे अग्रीव नहीं है। हम तो ये इसको इस ऑर्डर को क्वेश्चन कर सकते हैं। लिखिएगा, दिस पिटीशन इज फाइल्ड being aggrieved of order dated 14/2/2017 passed by the member board of revenue in case number 8611 oblique dash ONE 1/17 district Chhatarpur, whereby in a on an application moved by किसने application respondent number 6 respondent number 6 that she had sought permission to sell her land, she belongs to scheduled tribe category and had sought permission from the collector Chhatarpur to sell her land, but collector Chhatarpur was sitting tight over the said file and has not given any permission, directly entertained the revision and without issuing notice. What this हुए? कुछ नहीं, वो first hearing पे allow. Without issuing notices to the other party on the very first hearing, passed the impugned order granting permission. Full stop. It is submitted that neither records were called for from the collector, which was mandatory while entertaining the revision, nor notices were issued to the other side with whom petitioner had entered into an agreement. Full stop. It is submitted that the impugned order passed by the Board of Revenue is laced with malafide and therefore and also from the observance of procedural proprietary. Full stop. Therefore, the order is liable to be set aside. Next para. After hearing learned counsel for the parties, petitioner, and taking note of the fact that though counsel for other respondents are represented, but none of them have bothered to appear, they are proceeded ex parte. Impugned order passed by the Board of Revenue cannot be given a seal of approval because the said order is cryptic and having been passed without calling for the record. Full stop. It is pointed out that in the meanwhile, collector, oblivious of the orders of the Board of Revenue, on the basis of a report, has refused the permission to sell land, and therefore the order of, and looking to these facts, order of the Board of Revenue being cryptic in violation of the principles of natural justice and laced with arbitrariness is hereby set aside. Petition is allowed and disposed of. दोनों सेम है? नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है। मतलब दिस मे बी नाउ adjourned not because the effect of your lordship's order will have to be seen on this case. इसमें म्यूटेशन नामांतरण सब हो गया था on the basis of Board of Revenue. Board of Revenue के ऑर्डर के बेसिस पे तो जब वो ऑर्डर ही सेटिसाइड हो गया तो ये सब देखिएगा, since this court has set aside orders of the Board of Revenue in WP 5503 of 2021, all the proceedings undertaken in pursuance of the order of the Board of Revenue will stand nullified. Therefore, nothing survives for adjudication in this petition. Problem. The state government has yet not filed the return. Now I have preferred an application pertaining to state government about amendment. So I would pray that you want to amend your petition. Yes, because all those facts relate to state government. They are still to file the return. ठीक है, लिखिएगा श्री अशोक ललवानी, heard on IA 10727 of 23, an application for amendment in record. आपको जवाब देना है क्या? इनका आ गया है। आपको जवाब देना है अमेंडमेंट एप्लीकेशन का? हैं? अमेंडमेंट अभी रेट का ही नहीं दिया इन्होंने। हाँ ठीक है। रेट का ही नहीं दिया उसी वाले। Atul Dwivedi, panel lawyer, prays for and is granted 4 weeks time to file reply to the amendment application. रिटर्न का इन्हें जवाब नहीं। कोई बात नहीं, मत देने दीजिए। वो पूरा जवाब तो वही कहलाएगा। ठीक है, पहले अमेंडमेंट अलाउ होगा, फिर अमेंडेड पिटीशन का जवाब आएगा, सीक्वेंस पूरा बदल जाएगा। चलिए 2 साल तो होगा। चलिए कोई बात नहीं। I will amend the petition, let them find the return तो जल्दी हो जाएगा। Let them file reply to the amendment application.
Bunch of matters which I have disclosed in para 5.7 note, where there were prior interim orders. It may be tagged with that note. All those matters are pending. क्या मैटर है? ये लगे ना आपके 41 क्या लगा? पूरा बंच लगा तो है 40, ये क्या है 41? नहीं, 39 मालूम है वो 41 अलग है सर, अलग है वो अलग। ये इसमें ऑलरेडी एक लिस्ट अलॉन्ग विद पर्ची पे लिख के दे दीजिए। जी। चलिए नेक्स्ट केस। लिखिएगा श्री राजकुमार त्रिपाठी फॉर द पिटिशनर श्री विजेंद्र सिंह चौधरी submits that today he is filing reply. Rejoinder if any may be filed within 2 weeks thereafter. List thereafter. सुबह आना चाहिए परमिशन, शाम को लीजिएगा 4:30 बजे। आज फाइल नहीं हो पाएगा, करिएगा 4:30 बजे, क्या कर सकते हैं? सुबह निकल के आइए टाइम से। हाँ ठीक है, IR if any to continue। चलिए। Sole petitioner has expired. I have moved an IA for the lead matter. मैटर क्या है ये सब? No, all these are colonizer where action has been taken for alleged. तो पिटीशन हम खारिज कर चुके सब कॉलोनाइजर वाली। सर ये उसमें IA सेम फेट आई हैव ऑलरेडी डिसमिस। वही आपके टीकमगढ़, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा की जो पिटीशनें थी। My lord, just let me have the benefit of seeing that order. Next week कर दें या कल लगा दें, मैं इसको amend कर दूं, इसमें LRs को रिकॉर्ड पे लिया, देख के मैं बहस करते तो। Heard on IA 8974/23 application for bringing legal errors on record. Same is allowed. Let necessary correction be carried out within 3 working days. List thereafter. चलिए। Obliged. In other cases, we are already filed the reply. ठीक। Number 42, राजेंद्र कुमार मिश्रा। ये इसमें इन्वेस्टिगेशन CID को ट्रांसफर हुआ था, दैट वाज चैलेंज, मतलब इट वाज स्टेट। इन द मीनवाइल चालान्स हैव बीन फाइल्ड, द पिटीशन ही इन्फ्रक्चर्स हो गई, क्या है? Your Lordship may observe that the order has lost the efficacy. लिखिएगा श्री राजेंद्र मिश्रा, learned counsel for the petitioner, fairly admits that after transfer of investigation, charge sheet has been filed and trial has progressed to some extent. Therefore, prosecution evidence is over. Man. Trial has progressed to some extent. That is, prosecution evidence is over. Therefore, petition has a full stop. श्री आप आ रहे हैं, आप इसमें गवर्नमेंट एडवोकेट हैं? श्री मोहन सौसरकर, गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट, submits that now petition has lost its efficacy. Accordingly, same is dismissed as having been rendered infructuous with passage of time. The impugned order has lost the efficacy. Impugned order has lost the efficacy. चलिए। I am obliged. My lords, I have filed IA in this matter, my lords, regarding adding respondent number 4 as a party. जी? Regarding adding respondent number 4 as a party, my lords. That is state information. Heard on IA 1717/23, an application to amend the petition, same is allowed. Let necessary correction be carried out within 3 days. Process fee be paid to serve newly added respondent within further period of 7 days, returnable 4 weeks. List thereafter. Serial number 44, Shri Kamlesh Kumar Devi. किसके लिए है आप? नंबर 12345। कब नोटिस इशू हुआ था इस केस में? Lordship, I am filed Wakalatnama 22. Lordship, actually. श्री कमलेश द्विवेदी for the petitioner. श्री आपका शुभ नाम बताइए? आदित्य सिंह। Aditya Singh prays for time to file reply. Full stop. This petition is pending since 2021. Full stop. Earlier also time was granted to file reply. Full stop. Subject to payment of cost of ₹5,000 to be deposited in High Court Legal Services Committee and not to be debited to the public exchequer
As a last time, 4 weeks time is granted to file reply list after 4 weeks. अरे आप लोग LIC बहुत बड़ी संस्था है भाई. हम लोगों को कुछ नहीं ऐसा. हाँ ठीक है चलिए. आपको थोड़ा देना है. डिलीगेंट ऑफिसर को देना है. हाँ ठीक है. ठीक है चलिए. कॉस्ट रिड्यूस कर दीजिए. My bid was found to be highest when the same was accepted. During COVID time, I had to pay one last installment, which I could not pay. But on the last date, the respondent was directed to obtain instructions. Who is appearing for the respondent? Mr. Parag Tiwari's name is there. क्या instructions हैं आपके? We received instructions that they are not willing to take this because they have altered the condition of the shop as per the Panchnama that we have filed with them. ठीक है लिखिएगा. This matter is to be contested as श्री आपका शुभ नाम बोलिए. आदित्य पचौरी. Aditya Pachori, appearing for the respondent on instruction, submits that they are not willing to accept the last installment as petitioner has altered the shop. They have prepared a Panchnama. Same may be brought on record. It's on record in the reply. It is already on record. Full stop. Case is to be argued finally. बताइए कब करेंगे? Sir, August का second week. List in the second week of August 2023. Top of the list. IR to continue till next date. Number 46. And for respondent number 7, number. For a dispute of demarcation. Dispute of demarcation. None for the petitioner. Shri D.C. Malik for respondent number 7. Shri Grishma Jain for respondent number 6. Shri Saurabh Soni, learned panel lawyer for state. As nobody is appearing for the petitioner, reluctantly case is adjourned. List. अच्छा ये स्टे लेके बैठे हैं किस चीज का? पोजीशन की. हैं? पोजीशन भी 250 पे. List after list in the week commencing 21 अगस्त 2023. चलिए. Clear number 47. My lord, sir, registration of FIR, my lord. My lord, kindly see the R3, my lord. R3? Yes, my lord. This is the order passed by the, my lord, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी. जिसके परसुएंस में FIR दर्ज की गई. Yes, ma'am. देखिएगा. None for the petitioner. Shri Saurabh Soni, learned panel lawyer for the state, submits that this petition is filed seeking quashing of FIR annexure P1, registering case crime number 212/2020 on 14/3/2020 under section 420/34 IPC. It is submitted that this FIR is registered as per the orders of the Judicial Magistrate First Class Katni Shri Ajay Kumar Yadu, who had directed wide order dated 13/3/2020 to register an FIR. Full stop. He submitted that FIR registered in terms of the orders of the JMFC, who exercised power under the provisions of section 156(3) CRPC. Then FIR cannot be quashed merely for the asking of the petitioner. There is no illegality in the impugned order, and petitioner has not challenged said order dated 13/3/2020 in this petition. Full stop. Unless that order is challenged, no substantive relief can be granted. Taking these facts into consideration, and also a fact that return was filed on 4 April 2022. Copy was received by the counsel for the petitioner on 5 April 2022, since FIR is registered in terms of the orders passed by the concerned JMFC, no infirmity can be attached to it. Petition fails and is dismissed. चलिए. None for the petitioner करके लिखिए पर clear. 48 to Kevin Dubai. हाँ? Display sir.
IT section को जाकर बताइए. That's where the I am supposed to run my court as per the files which are placed before me. I am not in charge of the IT section. If display board does not function, then report it to the Registrar General or the IT section. My lord, the order passed by the Commissioner, my lord, in appeal under section 44, that is small number 2 is under challenge, my lord. There is an application for vacating of stay by the respondent, my lord. Small number 5 and 6. The case is, my lord, that I, being the original owner of a land, my lord, I sold a particular part of the property, my lord, measuring, my lord, near about 10 into 20 into 109 square feet, my lord, to the private respondent in 2017. Now, in the sale deed, my lord, although the boundaries were mentioned, but that there was not a proper demarcation, my lord. Not taking benefit of the same, my lord, in 2017, they constructed a particular area, length for 5 rooms that was constructed. Now, when in 2018, my lord, when I started making construction on my part of the land, that was the unsold land, an application under section 250 was filed by them before the competent authority, first authority. Before the competent authority, my lord, I appeared, there was the Patwari. Declaration लीजिए ना आपकी जमीन. That's the ground. That's the ground. Now, first the application under section 250 was rejected by the competent authority. They moved an application under section 44(1). That appeal was also rejected. Now, the second appellate authority virtually has dwelt upon the issue as a civil court, my lord, and has virtually said that let there be a demarcation, let there be a report. If I am found to be in illegal position, I may be removed. If they are disputing the land, they are disputing the part of the that was, so they should have, he should have directed, relegating them to go to civil court. That is the ground. Virtually has acted like. Why don't you approach the civil court? Well, I am not having. Well, they are having dispute against me. I am not having any dispute. They moved an action application under section 250. पढ़िए ना इसको. 250 MPLRC. ये पढ़िएगा इसको, पेज 18 पर से पढ़िएगा. जी. रादर पेज 17 से पढ़ लीजिएगा सर. पैरा नंबर 5 से. वैसे पैरा नंबर 5 की लास्ट 6 लाइन से पढ़ेंगे. ऊपर से पढ़ लीजिए. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं. मैं पढ़ देता हूँ सर. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के श्रवण के करने के उपरांत अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के अभिलेख उनके द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया जाकर मनन किया गया. ये निर्वाचित तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि को प्रति अपलार्थी द्वारा अपलार्थी को विक्रय की गई थी. विक्रय पर दोनों के मध्य निष्पादित हुआ था. विक्रय पर में भूमि की चतुर्दिक सीमा में उत्तर में विक्रेता की भूमि, दक्षिण में रीवा सेमरिया की भूमि, पूर्व में दिलभरण प्रसाद की भूमि, पश्चिम में विक्रेता की भूमि अंकित है. ये निर्वाचित तथ्य है कि रजिस्ट्री में चतुर्दिक सीमा की लंबाई चौड़ाई अंकित नहीं है. ऐसी स्थिति में निश्चय किया जाना कि कितने फुट रीवा सेमरिया रोड की और दिलभरण प्रसाद की भूमि से चौड़ाई रहेगी एवं रीवा सेमरिया से विक्रेता की भूमि कितनी लंबाई रहेगी. प्रति अपलार्थी रीवा सेमरिया की तरफ 20 फुट लंबाई में 109 फुट गहराई में देने को राजी, परंतु भूमि को लेने अपलार्थी राजी नहीं है. इस विवाद के कारण ही संहिता की 250 का आवेदन अपलार्थी द्वारा अध्यक्ष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. आवेदक अपलार्थी का यह कथन कि आवेदन भूमि में रीवा सेमरिया रोड का समांतरण 50 फुट चौड़ाई पर उसका विधिवत कब्जा था, जिसके उसके द्वारा 50 वर्ग फुट चौड़ाई पर 5 कमरों की पक्की नींव बढ़ते हुए सच एंड सच रकबा पर कब्जा किया गया था. दिनांक 4/2/2018 के पूर्व कोई विवाद नहीं था. आवेदक के साक्षी संतोष तिवारी लल्लू प्रसाद द्वारा सच एंड वर्ग फुट भूमि पर प्रति अपलार्थी का कब्जा सौंपा जाना बताया जाता है तथा विक्रय के बाद 50/30 कुल 500 वर्ग फुट पर 5 कमरों की पक्की नींव आवेदिका द्वारा बढ़ने का कथन किया गया. अपलार्थी तथा प्रति अपलार्थी के मध्य हुए विक्रय पद का अवलोकन से स्पष्ट है कि संतोष तिवारी जिनके द्वारा आवेदिका को तक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, आवेदिका की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, पंजीकृत विलेख में उनके गवाह के रूप में भी हस्ताक्षर है. साथ ही उनके द्वारा कथन में 50/46.6 कुल 2180 वर्ग फुट यानी 0.020 हेक्टेयर भूमि विक्रय करना बताया है तथा 500 वर्ग फुट में 50/10 की माप में डिमार्केशन ही तो होगा जमीन का, और क्या होगा. नो मिलॉट. Here I say my lord, he say my lord, let there be action under 250. 250. I will modify. I will say that let demarcation be carried out. That's the grievance. And after demarcation is carried out, then proceedings be drawn under as per the law. Yes. देखिएगा. Till then parties will maintain status quo. वो order stays के होगा. ठीक है. This petition is filed being aggrieved of order dated 23rd December 21 passed by Additional Commissioner Riva Division Riva. It is submitted that admittedly petitioner had sold
part of the land contained in survey number 951/2/2 in favor of the 5 and 6. Respondent number 5 and 6, namely Surajvati, wife of Ramashray, and Kusumkali, wife of Sheshmani. Full stop. They had constructed, the total area under sale was 2180 square feet. यही है ना 2180? ये सर 0.020 एकड़. 0.0 or to 0.020 hectare. Full stop. RA में RA. RA कर दीजिए. 0.05 डेसिमल और 0.20 RA. तो 0.020 RA कर दीजिएगा. Full stop. It is submitted that when petitioner started construction, then allegation is made that petitioner is trying to encroach on the land already sold in favor of the private respondents. Full stop. It is submitted that under such facts and circumstances, order of demarcation can be upheld, but no proceedings unless and until demarcation is completed could have been undertaken under section 250. Full stop. To that extent, order passed by the additional commissioner is cryptic and arbitrary. Next para. Taking these facts into consideration and also taking this fact into account that counsel for the respondent number 5 and 6 have chosen not to appear despite service of notice. नहीं वो अपीयर हुए हैं सर यार. मोहन अपीयर. मोहन अपीयर on behalf of the private अच्छा, तो क्या कहना है आपको? मतलब the order is being passed कहाँ फाइल कहाँ है आपकी? The order which is Shri being passed Mohan Sosarkar for respondent number 6. Yes. आप 6 के लिए nobody is appearing for 5 for 6. 5 for 6. Opposes the prayer. Next. 5 and 6. 5 and 6 के लिए तो वो हटा दीजिए. Opposes the prayer. However, taking note of the fact that without demarcation, there could not have been any order of taking action under section 250. The order of additional commissioner is cryptic to that extent. It is set aside. It is directed that first demarcation of the property be undertaken by the revenue authorities within 30 days of receipt of order of this court, and thereafter, if it is found that any of the parties is an encroachment on the land of the other side, then proceedings under section 250 may be drawn. Above terms petition is disposed of. The parties may take recourse to the process in a court. तो यही आपको अवेलेबल ही है भाई. ये तो 250 में हमारे खिलाफ ही करने लगे. अरे ऐसा क्यों डर रहे हैं? आपने अतिक्रमण नहीं किया तो मत डरिए. पहले भी हो गए. चलिए नेक्स्ट केस. इसमें आपने कहा till then the party will maintain. Till then parties to maintain status quo. चलिए. Number 49, please sir. None for the appellant. This appeal is filed by the claimant being aggrieved of award dated 13/2/2021 passed by learned 23rd Additional Motor Accident Claims Tribunal Jabalpur in MACC number 3161/17 awarding only a sum of rupees 3,92,740 in favor of the claimants, overlooking the fact that accident had taken place on 23/11/17. Full stop. Doctor certified and tribunal admitted 15% permanent disability, yet income of the claimant on the date of the accident is considered at rupees 5,500 per month, which is on the lower side and arbitrary. Next para. Minimum wages on the date of the accident, that is 23/11/17, even for an unskilled laborer, were to the tune of इसके बाद वाला काम देखिए.
इसके बाद एक और कागज पर है। क्या डेट बताइए अभी? 23/11/17 was to the tune of rupees 7125 per month and computation should have been made accordingly. Next file. दिखा देंगे इसको चेंबर में 7125। डॉक्टर साहब मैं 49 में रेस्पोंडेंट कंपनी की ओर से रेस्पोंडेंट हूँ। नाम बता दीजिए आपका। शिवम पांडे। Later on, Shri Shivam Pandey appears for the respondent number 3. यस सर। हाँ। My lord, आइटम नंबर 64 WP हमारे वापस लेना बेटा करना 64 में लिख लीजिएगा। DS लोधी। क्या शुभ नाम है आपका? DS लोधी मालिक। श्री द्वारका सिंह लोधी prays for withdrawal of this petition. Accordingly, same is dismissed as withdrawn. बताइए। माय लॉर्ड मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। 29 केस नंबर मेरा 29 नंबर पे था मेरा। दरअसल सर मैं चूक गया थोड़ा सा। उसमें क्या था कि मैंने कुछ पंचायत से अपनी मांग के लिए निवेदन कर लिया था, तो उनकी शिकायत भी कर दी थी मैंने कुछ कलेक्टर महोदय को और एसपी। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सर विमल पटेल। तो वो बढ़ गया, आप आए नहीं। अब जब मैटर पुकारा जाएगा तब आइए। आए थे विद्याशंकर मिश्रा जी के जूनियर आए थे। हाँ ठीक है, बढ़ गया, चलिए। जी सर। आज हाँ बना था सर। आज पास ओवर नहीं है ना? पास ओवर नहीं, सीधे फाइनल ना? नहीं नहीं दे रहे थे किसी भी परमिशन
नंबर फाइनल हियरिंग 9 किसी और बेंच में हुआ है? नहीं, आपके यहाँ हुआ, आपने लेंदी ऑर्डर भी डिक्लेयर किया हुआ है। फिर क्या करना है? इसमें रिकॉर्ड कॉल हुआ था। हाँ, नाउ रिकॉर्ड इज अवेलेबल। रिकॉर्ड इज अवेलेबल। आप रिकॉर्ड देखना चाहेंगे कि कंटिन्यू करेंगे? सील बंद है, इन्होंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। नहीं, तो आप दोनों देख लीजिए। मेरी एक रिक्वेस्ट ये है, कोर्ट में बैठ जाइए और बैठ के देख लीजिए रिकॉर्ड। आप दोनों जने देख लीजिए। That will be cumbersome and we will not be satisfied. हैं? वो cumbersome होगा सर, 66 से मामला चल रहा है, कहाँ पर कौन सा रिकॉर्ड है, 3 अलग अलग मुकदमे। नहीं, आपको टाइम चाहिए या तो रजिस्ट्री में बोल दें, रजिस्ट्री में बैठ के देख लें। हाँ, आप कोर्ट में बैठ के देखना चाहते हैं तो कोर्ट में भी आई कैन परमिट यू टू सिट एंड। सर इट विल टेक एटलीस्ट 1 to 2 आवर। अब बैठिए ना, रिकॉर्ड ऐसा है। आपकी गार्जियनशिप में हम काम करेंगे, आप बैठिए ना, देखिए ना। सर एक और रास्ता मैं सुझाता हूँ। हाँ, बताइए। एजी ऑफिस में खुल के जो रिकॉर्ड्स हैं उसकी फोटो कॉपी कर लें। 4 डॉक्यूमेंट हो गए हर फाइल में, उसको ढूंढ दें। वी विल बिलीव इट। सर लेंदी दिस इज व्हाट, सुन तो लीजिए, पूरी बात सुनो। और उसको बंद करने के पहले अगर इनको लगता है चाहे हमको भी वहां बुला दें, हम भी चले जाएंगे, जो वर्केबल हो सर। आपका स्टेटस देखते हुए एजी ऑफिस में भेजना मैं उचित नहीं समझता। यू आर फॉर्मर एडवोकेट जनरल, नाउ यू मतलब। सर तो ऑफिस में दे दीजिए, हाई कोर्ट ऑफिस में दे दीजिए, रजिस्ट्री में बोल देते हैं। हाँ, और जिसको जो कॉपी लगे वो निकाल दे। नहीं, वो उसको सेकंड फेज में रखते हैं। हाँ। पहले आप रिकॉर्ड दोनों जने साथ में मिलके देख लीजिए। हाँ। रजिस्ट्री में डेट फिक्स कर देते हैं, आप अपनी कन्वीनियंट डेट बता दीजिए। ठीक है, दोनों जने मिलके देख लीजिए। ठीक है, मिलके देखने के बाद में जिन डॉक्यूमेंट्स का एक्सट्रैक्ट चाहिए उसका नाम लिख के दे दीजिए। ठीक है, हम रजिस्ट्री को बोल देंगे कि वो फोटोकॉपी करा कर दे देंगे। वेरी वेरी श्री अमित शर्मा। उसके बिना हम असिस्ट नहीं कर पा रहे हैं सर जी, वो डॉक्यूमेंट्स के बिना असिस्ट नहीं कर सक रहे हैं। नहीं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड दैट। श्री रवीश अग्रवाल, लर्नेड सीनियर एडवोकेट, असिस्टेड बाय श्री साकेत मलिक। आप बताइए, कल परसों सर कोई नॉन वर्किंग सेक्टर में रखते हैं तो उस दिन क्या है कि हम लोग अच्छे से बैठ के देख लें। अच्छा, ये सैटरडे तो ऑफिस में नॉन वर्किंग सैटरडे में बैठ जाते हैं। देखिए, वर्किंग डे में तक joint request of the parties parties are permitted to peruse the record which is received from the authorities below in a sealed cover before the registrar। कौन से रजिस्ट्रार क्या होता है इंस्पेक्शन है? प्रिंसिपल रजिस्ट्रार लिस्टिंग जोशी जी के सामने किसके यहाँ होता है? तो उनके प्रिंसिपल रजिस्ट्रार कौन है? Before the registrar J2 on 5th August 2023. Full stop. Record will be opened in presence of J2 and will be inspected in his presence, and thereafter petitioner and respondents will be entitled to make a note of the documents which are required by them, and if need be, then they can apply for obtaining abstract of those documents. Full stop. Therefore, for the present, उसके बाद एक आध हफ्ता और लगेगा आपको। डॉक्यूमेंट 5 तारीख को देख लिए तो उसके बाद कब लगाएं इस केस को बहस के लिए? 16-17 में लगाएं कि 23-24 में लगाएं? 23-24 मोर सेफ रहेगा। ठीक है। लिस्ट ऑन 23rd अगस्त फॉर फाइनल हियरिंग। चलिए सर, ये रिटर्न हम जो डॉक्यूमेंट्स मार्क करेंगे सर, उसकी कॉपी भी हमको मिल जाए। विल पे दी नेसेसरी एक्सपेंसेस। पेमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो तो आपके साकेत मलिक जी फोटो खींच लेंगे उनकी। सर रिकॉर्ड मुझे कोर्ट में जमा करना है या नहीं, फुल स्टॉप। Learned government advocate is requested to keep the record with him, and he will take this record to the J2 on
5th August at 11 a.m. Your Lordship. ठीक है ना? When a learned senior counsel or his assistant will make themselves available before the J2 and inspect the records jointly. Your Lordship. Very workable. We'll have the satisfaction of what us. जी 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 Number 19, please. TV of क्या मैटर है ये? Synopsis. हमने चैलेंज किया है एनेक्सर 11, 12, 13 और 14। ये 11 है मेमो कॉर्पोरेशन में जो रिजेक्ट किया मैप सैंक्शन के लिए। एक मिनट रुक जाइए। The Linkdina will be entitled to obtain extracts of the documents by applying for the same, or with the permission of the J2. Yes, who is appearing for the municipal corporation? मेन कंटेस्टिंग पार्टी तो वही है। अर्पण पवार जी का पावर फाइल होगा पावर, नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? सुंदर, सौरभ सुंदर, अर्पण पवार। ठीक है, आप शुरू करिए। स्टार्ट। थोड़ा सा पहले ये क्रोनोलॉजी बताइएगा। जी हाँ, इसमें कॉर्पोरेशन ने लीज डेट सैंक्शन किया था 30/6/98 को। कहाँ है वो डॉक्यूमेंट? दास के फेवर में, झमन दास के फेवर में। फिर से डेट बताएंगी प्लीज, डेट बताइए। 18/12/14। 18/12 30/6/98 अनेक्सर P1। 30/6/98 को लीज डीड सैंक्शन हुआ इन नेम ऑफ झमन दास। झमन दास जी। एनेक्सर P1। P1 जी। फिर who gave you this lease? This lease was executed by whom? Municipal corporation in favor of जामन दास। जी जी। जामन दास की डेथ हुई है 7/12/1977। झमन दास died on 7/12/1977। जी, ठीक है। उसके मरने बेटे एक मिनट पहले तो उनके मरने के बाद 98 में उनके नाम से कैसे स्वीकृत हो सकता है? जब उनकी 77 में मृत्यु हो गई तो 98 में लीज कैसे स्वीकृत हो जाएगी उनके नाम से? उनकी पत्नी पुतली बाई थी। अरे मैडम एक सेकंड, एनेक्सर P1 देखें। P1 is the indenture made on this। आप डेट गलत बता रही है, 30 जून 1958 है। तैयारी नहीं है आपकी।
ये आपने गलत क्रोनोलॉजी बनाकर दे दी है। पढ़िए पेज 15 पर, उसकी डेट है 30 जून 1958। इसीलिए हमने बोला कि झमन दास की जब मृत्यु हो गई 77 में, तो उनके नाम से लीज कैसे हो जाएगी? 58। हाँ, फिर सही करिए क्रोनोलॉजी सब। ये देखिएगा, Learned Council has not prepared a chronology in proper manner. Let chronology be, synopsis be, proper synopsis be prepared. List कल ले लें इसको, कल ले लेते हैं, कल आइए, इसको रहने दीजिए बस। लिस्ट चलिए नेक्स्ट प्लीज। नंबर 38 इसको लास्ट डेट में रिकॉर्ड फॉर्म। हाँ, रिकॉर्ड आया नहीं आया है? आया नहीं तो इसमें कॉस्ट दीजिएगा, लिखिएगा श्री संजय सरवटे, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, लर्नेड पैनल लॉयर फॉर स्टेट, श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 3। Record of the lower court was directed to be called for. Shri Jitendra Srivastava submits that record is not available. It is a sad state of affairs that record from the revenue authorities is not produced in time, wasting precious time of the court. This case is pending since 2005, subject to payment of cost of rupees 5,000 to be deposited in High Court Legal Services Committee. 7 days time is granted to call for the record, failing which किसके पास है रिकॉर्ड, कहाँ से आना है? एसडीओ जतारा। एसडीओ जतारा shall remain personally present. List next week. Number 22. Number 22. This is a matter, my lord, whereby the son of petitioner, my lord, who was studying in the respondent college, my lord. इसको कर ले, हाँ? कर ले इसको एफिडेविट सर हमने फाइल कर दिया उसमें। एफिडेविट फाइल कर लिया। हाँ, अच्छा ये वो डेथ वाला मैटर, इंश्योरेंस वाला। आपने स्पेसिफिक एफिडेविट मांगा था कि किस अथॉरिटी से आपने इंक्वायरी कंडक्ट करी कॉलेज के प्रिंसिपल ने, वो आपने माय लॉर्ड में सीधा ऑर्डर शीट इज ऑन 6/7/2000। हाँ, दे डिटेल ऑर्डर्स याद आ गया मेरे जी, उनका एफिडेविट आ गया। हाँ, पढ़िएगा एफिडेविट, पढ़िएगा ना उसमें। लेट रीजनल एडिशनल डायरेक्टर इतना be impeded as a party, respondent in place of इतना। Notice is accepted by Shri Saurabh Soni. Let regional additional director Riva file his personal affidavit that under which provision of law inquiry committee was constituted by the principal. Will also produce letter of appointment of the committee dated itna. He will also file his affidavit after calling the principal of the concerned government itna that if the committee had taken statements of some persons, then why those statements were not enclosed along with annexure R1. Prima facie, this report filed by 3 professors, namely R.D. Singh, A. Singh and M.N. Yadav, appears to be a bogus report. They have not mentioned as to which of the persons were contacted by them who had refused to throw light on the incident which resulted in death of deceased Ramakant Kushwaha. He will also point out that when admission was given in July 2003, then why policy was obtained in December 2003 as contained in Annexure P5, and how much was the coverage for each of the students under the policy, and why this amount for the failure of the state authorities for obtaining the policy under the scheme in time should be recovered from the instrumentality of the state. बताइए क्या एफिडेविट है, पढ़िए। हाँ, पढ़िएगा ना। कब फाइल किया आपने एफिडेविट? 17 जुलाई 2023। ये पढ़िए क्या लिखते हैं आपके। जो फर्स्ट क्वेरी थी सर, हाँ, the principal to principal there is no codified provision which empowered the principal inquiry committee. वो जो प्रिंसिपल थे सर वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, हो गया होगा रिटायर, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है। फिर सर ये दूसरी क्वेरी थी आपकी सर, पैरा नंबर 3 में। Deponent most respectfully submit that he tried to contact the members of the committee. Itna, both of them have expired. Third member of the committee has informed the deponent that the committee visited and he came to know about the factum of death. Has further informed that not a single person was
permitted the committee members to record their statement in right. Further, they have not even disclosed their respective names. ये तो बोगस रिपोर्ट है पूरी की पूरी। ये तीनों ने कमरे में बैठ के रिपोर्ट बना दी, 2 ऊपर चले गए। एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये है, उसकी बेसिक जो क्वेश्चन है सर कि उसकी डेथ हुई कहाँ, ये कैसे सर असरटेन होगा कि उसकी कॉलेज में ड्यूरिंग स्टडी पढ़ते समय हुई, या वो घर चला गया था, या घर में हादसा हो? नहीं, तो उसकी डेथ कहाँ हुई, प्लेस पंचनामा कहाँ है, लाश पंचनामा कहाँ नहीं है? लगाया सर इन्होंने। आप बताएंगे ना, वो थोड़ा ना लगाएंगे। आप बताइए कि उसकी, आपने 3 मेंबर्स की कमेटी बना दी, डेथ बॉडी कहाँ से रिकवर हुई थी? उसको शॉक लगा था, इलेक्ट्रिक शॉक लगा था जी। आपने पहले स्टैंड ये लिया कि वो अनऑथराइज्डली काम कर रहा था कॉलेज में? नहीं, कॉलेज में नहीं कर रहा था, हमने स्टैंड ये नहीं लिया था। हमने कहा था कि सर हम उसके घर पे गए तो कुछ लोगों ने हमें बताया कि वो टुल्लू पंप सुधार रहा था, उसके कारण उसकी डेथ हो गई। कुछ लोगों ने, कौन वो लोग थे? अब सर वो उसी चीज के आंसर नहीं, सॉरी, जब जो लोग आपके ऊपर इतने मेहरबान थे कि उन्होंने इतना बता दिया कि टुल्लू पंप सुधार रहा था और वो मर गया शॉक लगने से, तो वो लोग आपको अपना नाम भी बता देते। इसमें बेसिक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन फैक्ट ये है कि आपने पॉलिसी बाद में ली, उसके बारे में क्या कहा आपके? उसके लिए सर ये कहा है सर, पैरा नंबर 4 में काइंडली पैरा नंबर 4 पढ़िएगा। The answering on perusal of the record, my lord, it transpired that on 21/11/2023, a proposal was sent to the New India Insurance Company for insurance of 1156 students. हाँ, तो ये डेट कैसे 21/11 को जब आप एडमिशन ले रहे हैं, ये स्कीम जो थी? नहीं, एक्चुअली सर वो जो पॉलिसी होती है सर, वो जब लेते हैं जब पूरे स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है। अच्छा, तो एडमिशन आपके क्या लास्ट डेट थी बताइए? ये एडमिशन हुआ है सर, जो लास्ट स्टूडेंट वाज एडमिटेड ऑन 15/9। फिर और ये एक्सीडेंट किस तारीख को हुआ है? 11/9 को। फिर ऐसा कहाँ प्रावधान है कि जब हो जाएगा तो मास्टर पॉलिसी रहती है? प्रॉब्लम क्या होता है कि वहाँ प्रीमियम पर स्टूडेंट के हिसाब से भरना पड़ता है, तो पता चले कि अगर किसी ने 1000 स्टूडेंट वो एडमिशन हुआ है तो 1000 के स्टूडेंट की हो जाती है, किसी साल 900 हुए तो 900 की हो जाती है। बेसिक क्वेश्चन सर इसमें ये है कि इस चीज को पता लगाना पड़ेगा कि डेथ एक्चुअली हुई कहाँ है, वो आप बताइए ना, वही तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं सर, ये तो सर पुलिस का रिपोर्ट बनी होगी सर, प्रॉपर पंचनामा बना होगा, प्रॉपर एमएलसी हुई होगी उसकी, और उसकी डेथ कैसे हुई, ये पूरे रिकॉर्ड्स तो सर पिटिशनर को लाने पड़ेंगे। दैट्स द बर्डन ऑफ द पिटिशनर। आपके यहाँ एफिडेविट पे भी गलत बोल रहे हैं। That when fees was collected by the college at that point of time, when Rameshwar Prasad Tiwari was in charge principal, with effect from 28/5/2003 to 3/8/2003। पिटिशनर ने एडमिशन कब लिया था? पिटिशनर का डेट ऑफ एडमिशन क्या है दिखाइए? डेट ऑफ एडमिशन इज that form I have filed, that is annexure P2 P2 पेज नंबर 7 19/7/2003 जी। 19/7/2003 को ले लिया था इन्होंने एडमिशन। देन दिस, और डेथ कब हुई है इनकी? 11/9/2003। कहाँ पर हुई है? यही ascertain नहीं, मैं बता रहा था, मैं बता रहा तो दीजिए, आप तो कुछ नहीं कर पाते हैं। Lord, may see when this death occurred, then the entire claim was forwarded by the college itself by this covering letter dated P4, that is at page number 11. पेज नंबर 11 पढ़िएगा। It says, my lord, to the manager insurance company, it says छात्र रमाकांत कुशवाहा BA की बीमा राशि प्रदान करने से आपका पत्र दिनांक 26/12/2003 उपयुक्त विषय एवं संदर्भ में छात्र रमाकांत कुशवाहा BA प्रथम वर्ष का सुरक्षा बीमा पॉलिसी के दावे का भुगतान के संबंध में आपके कार्यालय द्वारा चाहे गए रिकॉर्ड की सत्यापित प्रक्रिया को संलग्न करके भेजी जा रही है तथा पुनः लेके विद्यार्थी सुरक्षा बीमा पॉलिसी रमाकांत कुशवाहा BA प्रथम वर्ष का दावे का भुगतान अविलंब करें इस कार्यालय को सूचित करें। FIR कहाँ है? इसमें सर FIR नहीं, इसमें आप सर ये जो इसमें इन्होंने जो रजिस्टर लगाया था उपस्थित रजिस्टर 6 नंबर वाला, ये मैंने फाइल किया है। It says he was not there on college on that day. That is P6 में लॉट, P6 पेज नंबर 15। इसमें आप आ जाइए सर, सितंबर 2021 में ऊपर से आप देखिए 11 तारीख वाली दिख रही होगी, उसमें प्रेजेंट है। क्या नाम है मृतक का? रमाकांत कुशवाहा, सबसे रमाकांत कुशवाहा प्रेजेंट लिखा तो है जी। फिर उसके बाद आप एक मिनट प्लीज रुक जाइए आप। अब आप आ जाइए, इनकी जो वो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो भी इन्होंने भेजी थी, वो मैंने लगाई सर रिजॉइंडर के साथ P8। ये 11/9 को इस पोस्टमार्टम, रुक जाइए, आपका रिजॉइंडर तो देखने दीजिए।
58, yes. जी, ये इसमें सर देखिए, आप सबसे पहला पेज 5 नंबर पे आइए, 11/9 डेट नीचे दिख रही है आपको। इसके बाद डॉक्टर की रिपोर्ट है, पेज 7 पे भी आप चाहेंगे 11/9 है। एक मिनट रुक जाइए। जी, पेज 7 पे क्या लिखा है डॉक्टर ने? ये सब परीक्षा, इसमें आप पेज 7 पे आ जाए, ऊपर से जो सब परीक्षा प्रतिवेदन में एकदम नीचे देखिए, सब परीक्षा का जांच पत्र तारीख 11/9 को 4:10 पे हुआ है। और अब आप पीछे पलटेंगे, जब इनकी जो सब 4/10 को सब परीक्षण हुआ, इसमें एकदम पेज नंबर 10 पे आ जाइए सर। एक मिनट रुक जाइए। When he is giving जी, पेज finding, the doctor say, in my given opinion, the so many type cause of death is electric burn shock. Duration of death is within 24 hours. ये 4:10 पे he is given. जी, इट्स नॉट ए केस कि हम घर में थे और 11 कॉलेज जो रहता, कॉलेज टाइम पे भी अगर होगा भी, बिकॉज ही एक्सपायर्ड, उसके बाद FIR कहाँ है भाई? सर FIR की कॉपी इनके, ये ही इज अ रस्टिक फेलो, ही केम विद दिस डॉक्यूमेंट्स ओनली। अरे सब रस्टिक हो जाते हैं फिर। हाँ वो ठीक सर, इसका अगर रिकॉर्ड आ जाता है पूरा पुलिस रिकॉर्ड FIR का, क्योंकि एक बार में मिलना चाहिए था। नहीं, इन्होंने भेजा था सर, ये देखिए जो कवरिंग लेटर भेजा है। FIR कहाँ है? प्रिंसिपल ने भेजा, तो उस पे FIR किसने दर्ज कराई थी बताइए? ये देखिए पुलिस रिपोर्ट भी लगी है, पेज नंबर 11 पे आप आ जाएंगे तो पुलिस रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, छात्रों की बीमा की सूची, पत्र रजिस्टर, ये कॉलेज के पास है ये FIR की कॉपी। कॉलेज नहीं करवाई होगी, सब पूरे डिटेल कॉलेज नहीं भेजे थे। और जांच की भी बनाई गई 3 साल बाद। वो तो 3 साल 2006 को प्राचार्य महोदय बहुत स्मार्ट निकले, उन्होंने कहा हाउ टू deviate his authority, his responsibility. He formed a committee after more than 2.5 years, almost 3 years. क्या कहा आपने? I'll allow this petition. Let state pay the amount. कितना बीमा था? 50,000 रुपए का बीमा था। लिखिएगा। This petition is filed by the petitioners claiming amount of some insured 55,000 था सर, on account of only under the student safety insurance policy, for which a premium of ₹4 was charged from the petitioners while getting admission for their son Ramakant Kushwaha in BA Part 1 at कौन सा कॉलेज है ये? This is what Government Vivekanand College Maihar. Government Vivekanand College Maihar. Full stop. Though respondents have tried to dispute the factum of death within the college premises and have also disputed the fact that death is accidental, and by formulating a so-called committee by the principal of the Government Vivekanand PG College Maihar on 18/4/2006, as is evident from Annexure R1 filed along with the affidavit of Shri G.P. Pandey, son of K.N. Pandey, Additional Director, Higher Education, Rewa Division, Rewa. But said Additional Director has admitted that committee must have been formed by the principal by using his administrative power. Full stop. However, there is no light thrown on the fact that what was the provocation to constitute a committee after almost 3 years of the incident, in as much as incident took place on 11/9/2003 and committee was formed on 18/4/2006. Full stop. Besides this, additional director has mentioned in his affidavit that 2 of the members of the committee, namely R.D. Singh and M.N. Yadav, are no more. Third member, Dr. Abhinath Singh, has informed the deponent that the committee members visited the place of incident. कहाँ है ये कम्युनिकेशन जो उन्होंने बताया अभिनाथ सिंह ने? That is the annexure, but has not enclosed copy of any communication
made or statement recorded by Shri Abhinath Singh in writing. Full stop. Thus, the contention of the Council for the State Government that a committee was constituted and it found that while repairing a Tullu pump, deceased had sustained electric shock, as a result of which he died, is not made out. Full stop. In fact, the deponent additional director has admitted that not a single person permitted the committee members to record their statement in writing. But it is surprising that committee members who were senior professors or assistant professors were so oblivious of the procedure that even they did not record the names of the persons whom they had approached to record their statements. Thus, it is prima facie apparent that the state government and its instrumentalities are trying to hide the facts in as much as they were required to ensure the student from the date when he takes admission. But the additional director has admitted in para 4 that premium was transmitted to the New India Insurance Company for 1156 students on 21/11/2003. Full stop. Reason assigned is that last admission took place on 15/9/2003, but learned additional director has failed to bring on record any document to show that insurance was to be obtained only on completion of all the admissions to the college. Full stop. Policy लाए आप रिकॉर्ड पर? नहीं, विवेकानंद वाली जो पॉलिसी है वो क्या है वो? जिस पॉलिसी के अंतर्गत आप क्लेम मांग रहे हैं वो पॉलिसी लगाई है आपने? एनेक्सर That is annexure P5 पेज नंबर 30 और इनके रिटर्न में 30 करने हैं। इसमें आपको क्या लिखा होता है? आर्टिकल नीचे आ जाएगी तो हमने देखे से नंबर ऑफ स्टूडेंट, रेट ऑफ प्रीमियम, वो तो बात की पॉलिसी है भैया, आप यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट वो पॉलिसी नहीं सर, ये पॉलिसी है पेज नंबर 30 along with the affidavit. You are not trying to understand. Policy मांग रहे हैं। I'm talking of the policy decision which was taken to insure the students. Where is that? Look, that is not it. That's not on it. None of the parties have brought on record the scheme of the state government under which students were to be insured. Full stop. Though in the policy page number 38 full stop. Petitioners' Council has drawn attention of this court to the attendance sheet of September 2003, in which presence of the petitioner's son Ramakant Kushwaha is shown on 11 September 2003. Full stop. Besides this, attention is drawn to the communication annexure P4 made by the then principal of the college, Shri J.P. Shukla on 31/8/2004, asking New India Insurance Company to make payment of the compensation, enclosing therewith copy of the policy of the insurance, FIR, postmortem report, death certificate, and list of the students who were insured, and copy of the attendance register. Full stop. Next paragraph. After Shri Soni opposes the prayer and submits that petitioner is not entitled to any relief. Next. Miss Anushri Chaurasia also opposes the prayer and submits that no insurance was obtaining on the date of the accident and therefore insurance company is not liable. Next, after hearing learned counsel for the parties, it is apparent that annexure P4 is not denied by the respondents to have been written by the then principal J.P. Shukla.
full stop. Once Annexure P4 was Annexure P4 communication dated 31/8/2004 was made by the principal to the New India Assurance Company Limited, then it is evident that there is a tacit admission on the part of the college authorities about death of Ramakant Kushwaha in the college campus. Otherwise, principal before forwarding the claim would have constituted an inquiry committee. Full stop. After almost 2 years thereafter, inquiry committee was constituted. No reason is assigned for constitution of inquiry committee after such a long lapse of time in 2006, but the reason can be deciphered from the record, being that when insurance company refused to pay compensation as insurance was obtained in November 2003 after happening of the incident, then the authorities of the college and the education department, probably in their wisdom, thought it to obviate the burden from their shoulders and dispute the factum of accident, full stop, for which, in the opinion of this court, authorities of the state government were too late to change their stand, full stop. There is no material brought on record to demonstrate that any inquiry was conducted against J.P. Shukla, the then principal, Government Vivekanand College, Mayer, for forwarding the claim to the authorities of the insurance company. Full stop. Taking overall fact situation in the case, it is evident that there is dereliction of duty on the part of the government officials. They did not obtain insurance cover on the the date of the admission, whereas they were required to insure a student from the date of the admission till the date of finishing of the academic session, full stop. Second fact which appears on the ground, which appears to be possible is that when policy was not taken in time, then an arbitrary report was called for from three professors whose committee was constituted by the then principal, full stop. They, as noted above, did not bother to even record names of the persons who were approached by them to cause fact finding, full stop. Even the additional director has not enclosed any affidavit of surviving member Dr. Abhinath Singh, full stop. Thus, in absence of any documentary evidence, it cannot be said that the inquiry report on the basis of which respondents are harping, has any truth or can be relied on in support of the claim of the respondents that disease died at his house and therefore he was not covered under the scheme of insurance to the students taking admission in colleges. Full stop. It is true, next paragraph, it is true that on the date of the accident, there was no insurance policy obtaining in favor of the authorities of the higher education department. Therefore, insurance company cannot be saddled with the liability to pay compensation. Full stop. Another anomaly is that name of the deceased Ramakant Kushwaha is mentioned as a student of BSc Part 1, BA Part 1. इस नंबर पे इसका नाम रमाकांत का पेज नंबर 15 ये अटेंडेंस ही देंगे। अरे अटेंडेंस आप कहाँ पहुँच जाते हैं वकील साहब? सर ये जो मैंने Ramakant Kushwaha is mentioned at serial number 131 as son of Ram Kripal Kushwaha. In the list of insured persons enclosed by the additional director higher education along with his affidavit, full stop. A person who had already died on 11/9, for him premium was forwarded by the principal on 21/11/2003, which again shows the reckless attitude of
the authorities of the higher education department and no, full stop. Reckless attitude and non-application of mind. Full stop. Thus, it is evident that the authorities of the state government were acting without there being any substance in their favor, and to cover up their lapses of not obtaining the cover in time, they have cooked up so many stories which cannot be said to be true in absence of any documentary evidence in support of their claim that they were entitled to take policy, student safety insurance policy on completion of the admission for all the students and were not entitled to take policy floater policy for the students who were taking admission in installments. Therefore, for the fault of the state government, comma, petitioner cannot be penalized. Full stop. Petitioner is entitled to recover the amount of coverage, that is 50,000 rupees, along with interest from the instrumentalities of the state government. Full stop. Petition is allowed. Respondent state is directed to pay a sum of rupees 50,000 in favor of the deceased, in favor of the petitioner, along with 9% interest thereon from the date of death till the date of actual payment. This payment be made within 30 days from today. Full stop. Thereafter, state instrumentalities will be entitled to recover the amount if they so desire from the delinquent officials of the college. ये कौन सा था? एक लॉर्ड मैं मेंशन हुआ था वो एक पॉलिसी रिकॉर्ड पे इन्होंने पेश कर दी। हाँ, क्या हो गया? आपने रिकॉर्ड पे पॉलिसी नहीं है वो आ गया ना? नहीं, ये नहीं आया है, पॉलिसी नहीं है रिकॉर्ड। इन्होंने खुद पेश कर दी। हाँ, ठीक है। ठीक। पॉलिसी नहीं लिखा, वो पॉलिसी जहाँ लिखा है ना रिकॉर्ड पर, वो स्कीम नहीं है। हाँ, स्कीम लिखी है। They adopted the scheme of. I don't know which, whatever scheme, but that scheme is not on record. Lord. Yeah, there are two connected with petitions here. In 8961 of 11, I'm for the petitioner, and WP 271 of 2003, I'm for respondent number 2 million. The fate of 8961 depends on the connected WP. So that will be has to be argued first. For the petitioner, I apologize, Milord, first. Actually, my office file is missing, Milord. Tomorrow we will argue it. We are searching it out. Tomorrow we will argue the matter, Milord. श्री आपका शुभ नाम बताइए। भूपेश तिवारी जी, भूपेश तिवारी। भूपेश तिवारी W 448.1 में लिखिएगा। Submits that his official office file is not available and prays for time. It may be maintained in the list, Milord. Tomorrow हाँ, तो ये रिकॉर्ड पर तो आ जाए। Yes, yes. Let this come on record. Yes, ma'am. आप लोगों को सुविधा नहीं रहती ना वहाँ जाके बताने में कि हमने क्या गलती करी। No, not. Your conduct should be on record. Ma'am. He submits that he will argue this case tomorrow. On his list, let the case remain. On his request, let this case remain in list. It will be taken up tomorrow if time permits. Serial number 52. इसमें 52.1 हाँ, बताइए। पहले 52 सुने कि 52.1 सुने? सुने। जी। Petitioner is challenging an exact P1 university. The petitioner has filed an appeal before learned PDJ level court. University, while pending this appeal, University Council of the petitioner has withdrawn the application appeal. University, that is the annexure P3 at least 16 units. In this appeal, the counsel of the petitioner has withdrawn. The counsel did not appear. नहीं, क्या लिखा? अपीलार्थी एडवोकेट ने व्यक्त किया कि उनका पक्षकार आगे अपील नहीं चलाना चाहता है। एसडीओ के यहाँ क्या ऑर्डर हो चुका है। प्रकरण
समाप्त करने का निवेदन किया गया। Yes, Your Lordship. ठीक है। अतः अपीलार्थी के को ने प्रकरण आगे नहीं चलाने के बाद खारिज किया जाता है। Yes, फिर but in this order sheet, the signature of the appellant was not present, and also only the signature of the counsel of the appellant is there. And ऐसा कहीं प्रावधान है क्या कि वकील की अगर पार्टी के सिग्नेचर नहीं होंगे तो अपील, ऐसा बताइए उनके वकालतनामे में क्या लिखा हुआ था, और आपने उनके खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत करी कि आपके इंस्ट्रक्शंस के बगैर उन्होंने मुकदमा कैसे विड्रॉ कर दिया? कंप्लेंट है, कहाँ है, वेयर इज दी कंप्लेंट? ये आर्टिकल 1 में फाइल है। आर्टिकल 1 क्या होता है? ए सॉरी 50 में सेट हैं? जो 50 नंबर है, आइटम 50 डब्ल्यूपी नंबर 3053। तो इस केस में क्यों नहीं फाइल किया आपने? स्पेसिफिकली अब जब आपकी अपील विड्रॉ हो गई, इसमें लॉर्डशिप एक सेकंड, जब आपकी अपील विड्रॉ हो गई तो इंटरिम ऑर्डर इसको इसके खिलाफ क्या बचा है इसमें? thereafter appellant has filed an application under order 41 rule 19 जी read with section 51 of CPC जी। इसमें जो विथ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन है जी, इसमें ये जो ऑर्डर पास हुआ है एनेक्डर P1 लॉर्डशिप, हाँ ये इसमें पेज 8 में हाँ पढ़िएगा क्या लिखा है? इसमें पेज 9 पे मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए। विचाराधीन आवेदक ने आवेदन में आवेदक ने व्यक्त किया है कि व्यवहार अपील क्रमांक 53 2014 में दिनांक 2/12/14 को आवेदक के अधिवक्ता ने उसे जानकारी दिए बिना उसकी सहमति के बिना अपील नहीं चलाना व्यक्त करते हुए वापस ले ली थी। आवेदक जब भी अपने अधिवक्ता से जानकारी प्राप्त करता तो उसे बताया जाता कि अपील का निराकरण लंबित है, तथा जब भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आग्रह करता तो उसके अधिवक्ता यह कहकर मना कर देते थे कि अपील में पक्षकार की उपस्थिति कोई जरूरत नहीं है। दिनांक 4/3/2016 को वादग्रस्त संपत्ति विक्रय पत्र चलिए, आपने कब कब कंप्लेंट करी है? 2016 में आपको जानकारी हो गई? इसमें योर लॉर्डशिप जो मिस्टेक हुई है, एक सेकंड, आप पहले मुझे डायरेक्ट सवाल का जवाब दीजिए। यस योर लॉर्डशिप। वेयर इज योर कंप्लेंट मेड टू द बार काउंसिल? यस योर लॉर्डशिप, ये है आईए नंबर 14984/2020 14 आईए नंबर 14984/2020 23 कंप्लेंट है जी। एनेक्डर 81। किस तारीख की कंप्लेंट है ये? कंप्लेंट है 10/11/2022 की। फिर आपको 2016 में जानकारी मिल गई, उसके बाद में आप कंप्लेंट लगाएंगे 2022 में? माय हम्बल सबमिशन जी। इसमें क्या है कि इसमें जो लिमिटेशन का जो पीरियड है वो रॉन्गली कैलकुलेटेड हुआ है। किसमें? इस केस में 52.1 में। हाँ पढ़िए ना, बताइए ना कैसे। इसमें क्या है, ये जो ऊपर आप देखिए पैरा फर्स्ट में, इसमें दिनांक 2/12/2014 का की डेट पड़ी हुई है, जबकि एक्चुअली क्या है 2/12/2015 को ये केस विड्रॉ हुआ। 2/12/2015 को जी। एनेक्डर P3 देख लीजिए पेज 16 में, इसमें भी डेट पड़ी है 2/12/2015। अच्छा ठीक है। और इसमें बाद में ये जो पीरियड जो कैलकुलेट किया है पेज आपने एप्लीकेशन किस तारीख को लगाई है? हमने एप्लीकेशन लगाई है 22/3/2016 को। 22/3/16 को जी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो विड्रॉ का डेट है उसमें 14 से मानकर ये उन्होंने हमारा 1 वर्ष 2 माह 20 दिन का डिले मानकर हमारी एप्लीकेशन इन्हें रिजेक्ट कर दी। ये मैं काइंडली सी पेज 10 में ये पैरा 2 अभिलेख से प्रकट होता है कि आवेदक ने 11वें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग जबलपुर के व्यवहार वाद क्रमांक में घोषित निर्णय डिग्री दिनांक 18/7/2014 से व्यतीत होकर नियमित व्यवहार अपील क्रमांक 56 संस्थित की थी, जो इस न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 2/12/2015 के द्वारा अपीलार्थी के अपील नहीं चलाने पर निरस्त की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध 1 माह की अवधि में उसको पुनः स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना था। ये गलती है, ठीक है, टेक्निकल एरर है। चलिए, तो लॉर्डशिप केवल उसमें 80 दिन का डिले था, परंतु डेट ऑफ एरर के कारण ये हो गया 1 वर्ष 2 माह 20 दिन के। ठीक है, उसको करेक्ट कर देंगे, उसको बता देंगे 80 दिन का डिले है। यस। फिर उसके आगे बढ़िएगा। आवेदक ने उपरोक्त विलंब का कारण अपने अधिवक्ता के अनुचित आचरण को प्रकट करते हुए कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 4/3/16 एवं आवेदन दिनांक 10/3/15 की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की हैं।
ये भी 16 कौन सी है वो प्रतिलिपियां बताइए। परंतु पश्चातवर्ती आवेदन कलेक्टर कार्यालय में पेश करने के संबंध में कोई भी प्राप्ति अभी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की आवेदक द्वारा। और कलेक्टर क्या कब से शिकायत होने लगी? कलेक्टर क्या है, इन्होंने इनको पता चला कि वहां पर जो प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री के लिए इन्होंने आवेदन दिया है। आप तो ये अधिवक्ता के बारे में बताइए, इससे प्रतिकूल या विवादित है कि संबंधित अपील में आवेदक ने अपनी पैरवी करने हेतु श्री राजेंद्र विश्वकर्मा को अभिभाषक नियुक्त किया था। आलोच्य आदेश में प्राधिकार के अभाव में किसी भी तथ्य प्रकट नहीं किया है तथा उसने ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रकट हो कि उसने अपने अधिवक्ता को किसी कदाचरण के संबंध में किसी सक्षम फोरम के समक्ष कोई शिकायत प्रस्तुत की थी। उसके बाद आपने 2000 जाके 22 में अनुसार आवेदक प्रस्तुत विलंब को दिन देने से स्पष्टीकरण हेतु दायित्वाधीन है। चलिए 80 दिन मान लिया, 80 दिन का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस योर 80 दिन का ये एप्लीकेशन डेट ऑफ नॉलेज 5/2/12 को रिजेक्ट होने के बाद हमें 4/3/2016 को हमें नॉलेज हुआ। नॉलेज होने के बाद हमने उसमें सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई और हमने उसमें आवेदन फाइल कर दिया। तो उसमें डेट ऑफ नॉलेज से वो डिले भी नहीं है। चलिए, यस। Even otherwise, Marat, there is a delay of 80 days, not 1 year, 2 months. It is true. It seems to be some error. But even otherwise, application under 4119 is not Marat because दिखाइएगा सीधी देगा। because Marat, it is only for dismissal for want of prosecution. देखते हैं ना। Re-admission of appeal dismissed for default. Where an appeal is dismissed under Rule 11 or Sub-Rule 2 of Rule 17, the appellant may apply to the appellate court for the re-admission of the appeal and where it is proved that. तो कैसे लागू होगा ये 4119? In that respect, Your Lordship, there is no objection has been raised by the. अरे ठीक है, तो लीगल बातें तो कभी भी उठाई जा सकती Yes, है। Your Lordship, but my humble submission, that application has been filed order on this rule nice read with section 151. 151 तो जब लागू होता है substantive provision ना हो। I am denying this judgment of लीजिएगा। Supreme Court. दादू दयाल महासभा सुखदेव को आर्य अनादर। क्या है उसमें, क्या है? Power. Court in exercise power under section 151 can vacate its sound order obtained by fraud or misrepresented. लेकिन आपने फ्रॉड के लिए तो शिकायत ही नहीं करी वकील साहब के खिलाफ 2022 तक। 2022 की शिकायत कैसे देख लेंगे? जिस तारीख को proceedings as were obtaining on the date of the passing of the order are to be seen, not the subsequent developments. चलिए लिखिएगा। And Your Lordship, another judgment. एक बार में दे दीजिए फिर। हाँ ठीक है, रख दीजिए। This miscellaneous petition is filed being aggrieved of the orders dated 16/1/2019 passed by learned 8th Additional District Judge Jabalpur in MJC number 172 of 2016. Full stop. Brief facts of the case are that petitioner आप प्लेंटिफ थे ना नीचे,
ट्रायल कोर्ट में Yes, sir. हैं? Yes. Petitioner had filed a suit before the trial court. That suit was registered as तब हवा भाई 53A of 2014. Trial court decided that suit सर वो 128A है. eh? 128A of 12. 120, sorry, had filed a suit bearing number 128A of 2012, which was decided by the learned 11th Civil Judge Class 1 Jabalpur by judgment and decree dated 18/7/2014. Being aggrieved of the said judgment and decree dated 18/7/2014, regular civil appeal number 53A of 2014 was filed. That appeal was withdrawn by the counsel for the appellant on 2/12/2015. Full stop. Next para. Petitioners filed MJC seeking restoration of that appeal. Full stop. It is pointed out that learned 18th additional district judge, वो 8th नहीं है 18th है. 18th additional district judge erred in recording a fact that there was delay of 1 year, 2 months, 20 days. In fact, delay was only of 80 days in filing the application. Full stop. In fact, appellant discovered this fact of withdrawal of the application on 4/3/2016. No, on 18/3/2016. And then he had obtained certified copy of the order on 19/3/2016 and filed MJC on 21/3/2016. Full stop. It is submitted that the delay in filing the application was bona fide. Therefore, delay should have been condoned and application should have been allowed. Next, Shri Mahavar submits that the application under Order 41, Rule 19 CPC read with 141 CPC was not maintainable. Secondly, petitioner, as noted by the learned 18th additional district judge, petitioner had not initiated any action against his counsel even during the pendency of the MJC till January 2019. That is for almost a period of 3 years. Sorry, ये गलती हो गई, ऊपर लिख लेना. Places reliance on the judgment of ये त्रिवेदी जी का. दादू दयाल Mahasabha versus Sukhdev Arya and another 1991 SCC 189 and M.K. Prasad versus P. Arumugam 2001 6 SCC 176. ठीक है ना? Full stop. It is submitted that it is not the question of limitation alone, but it is a question of bona fides of the petitioner. Full stop. Petitioner who it is not the case of the petitioner that he had not authorized the concerned counsel, Shri Vishwakarma, to contest that appeal. Full stop. If Shri Vishwakarma had given an undertaking before the court, had made a statement before the court for withdrawal of the appeal, then that statement was binding on the petitioner. Full stop. It is also submitted that if there was a professional misconduct, then in terms of the provisions contained in the Advocates Act, petitioner was obliged to bring action against the concerned advocate before the Bar Council. Full stop. Next para. Shri Ashish Trivedi at this stage submits that in connected petition WP 3053/15, he has filed IA number 14984/22, an application for taking document to point out that on 10/11/2022, a complaint has been lodged against Rajendra Kumar Vishwakarma. Full stop. However, दीजिएगा जरा एडवोकेट एक्ट दीजिए.
लिमिटेशन क्या है इसमें? What is the limitation? क्या कभी भी कोई भी कंप्लेंट लगा सकता है क्या? ऐसे ही होता है हैं? हाँ तो ऐसे ही होता है वहाँ I तो said this complaint was filed when it was listed for hearing, and when my lords asked that, have you filed any full complaint? stop. Shri Mahavar points out that this complaint has been filed when case was listed before the High Court on It is there in the order sheet. which order sheet? ये date तो याद नहीं है, but I remember that this has happened, man. After the court order only they have filed this up. क्या लिखा? So, submits that as per order dated 15/9/2022, passed in WP number 3053 of 2015, when Shri Ashish Trivedi was granted time to bring on record copy of the complaint as was filed by him before the Bar Council against the council who had not informed him about the dates in the proceedings which were undertaken by him seeking cancellation of mutation in the name of his wife. This complaint was filed. Full stop. This submission made by Shri Mahavar is corroborated from the documents on record. Full stop. A belated complaint filed after more than 6 years cannot be said to be a genuine complaint. Full stop. Aspect of limitation and other ancillary issues are involved. Full stop. Thus, merely filing a bald complaint after 6 years of the incident will not help the petitioner. Full stop. Even otherwise, this court is required to to examine the facts as were operating before the concerned 18th additional district judge on 16/1/2019. On that date, no complaint was on record. Full stop. Therefore, taking the totality of the facts that counsel is entitled to withdraw a case and there being no allegation of professional misconduct, coupled with the fact that Order 41 Rule 19 is not applicable to the facts and circumstances of the case because appeal was not dismissed for want of prosecution, comma. It is true that Section 5 of the Limitation Act bestows discretion, but discretion can be exercised in favor of that party which approaches the court with clean hands. It cannot be exercised to protect the one who has not approached the court with clean hands. Full stop. Since no complaint was lodged before approaching the court against the said council before the Bar Council of Madhya Pradesh, comma, ratio of law laid down in M.K. Prasad will not be applicable to the facts and circumstances of the case. Full stop. Similarly, ratio of law laid down in case of Daudiyal Mahasabha, where it is mentioned that in exercise of inherent powers under Section 151, court can vacate its own order obtained by fraud or misrepresentation. Two will not be applicable because there is no allegation of fraud or misrepresentation. Moreover, petitioner in the MJC never impleaded said Shri Vishwakarma as a party. कहाँ है MJC आपकी? Nexel P4. Full stop. He was obliged to implead NHA P4 कर लीजिएगा MJC. He was obliged to implead said Rajendra Kumar Vishwakarma as a party to the MJC so that he could have had an opportunity of appearing before the court and present his
side of the story as to whether he was instructed to withdraw the appeal or bald allegations are being made as an afterthought by the appellant petitioner. Full stop. Since that too has not been done, comma, no orders can be passed behind the back of the said counsel who is not even impleaded as a party in this writ petition. Full stop. Petition being devoid of merit deserves to be dismissed and is hereby dismissed. Parties to bear their own cost. चलिए अब उसको बताइए 52 में बताइए इसे. Lordship, respondent filed an application for mutation of name with the petitioner ancestral property before the Tehsildar, and ex parte order of mutation has been obtained by order dated 6/8/1998. Your Lordship, thereafter it came to know the petitioner on 6/8/1998. In the year एडिशनल कमिश्नर का ऑर्डर पढ़िए पेज 13 पर. yes, yes. आप कितने विजिलेंट हैं? आपके सारे वकील ऐसे ही हैं क्या? पढ़िए ना इसको, ऑर्डर पढ़िए. तीनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. ये तो सब आपके पिताजी के वोट बैंक हुआ करते थे. जितने वकीलों का आप लगा रहे हैं आरोप यहाँ पर, पढ़िए ना ऑर्डर. अनुभागीय अधिकारी जबलपुर के प्रकरण क्रमांक आदेश के विरुद्ध अपील दिनांक 19/12/2014 को प्रस्तुत किया गया है. हाँ, कितने दिन बाद? 3 साल बाद. 3 साल बाद जी. अधीनस्थ न्यायालय में लगभग 6 वर्ष का विलंब स्वीकार किया था, जिसके विरुद्ध अपील की गई है. समर्थन में धारा 5 परिसीमा अधिनियम पूरा पढ़िए ना. हाँ, समर्थन में धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन नए शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया. विचाराधीन आदेश के अनुभागीय अधिकारी ने उनके यहाँ प्रचलित मूल अपील प्रकरण क्रमांक स्वयं में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किए जाने के आदेश दिनांक 24/11/2005 को निरस्त किया था. इस प्रकरण को पुनः स्थापना का आवेदन दिनांक 30/8/11 को प्रस्तुत किया गया था. अधीनस्थ न्यायालय ने लगभग 6 वर्ष के विलंब को क्षमा करने का आवेदन स्वीकार कर दिया था, जिसके विरुद्ध अपील की गई है. उल्लेखनीय है कि यह अपील भी मूल आदेश के लगभग 3 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है और उसमें भी विलंब क्षमा करने के आवेदन में कोई समाधान कारक कारण प्रस्तुत नहीं बताया गया. तो यह आवेदन भी मानने योग्य नहीं है और उस पर विचार किया जाए तो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई तथ्यात्मक. फिर क्या गलती है इसमें? क्या करें? आपका पक्षकार का भाग्य खराब है जी. क्या करेंगे? इसको विड्रॉ करेंगे. प्लीज फॉर विड्रॉल ऑफ पिटीशन सेम इज डिसमिस्ड एज विड्रॉन. Serial number 53. Sanjeev Kumar from the land belonging to the husband of the petitioner was acquired. जी. Land belonging to the husband of the petitioner was acquired. जी. And by whom? By the JDA. जी. Erstwhile Town Improvement Trust and then vested in JDA. ठीक है. Certain litigation took place, not that compensation till date has not been paid. This Yes. My lord, I am for the intervener. What the problem is, my lord, in 2006, they got a Who is judgment. bearing for the JDA? JDA is the contesting party. In fact, JDA has filed a written in JDA says that since some litigation is pending in writ appeal before this honorable court, therefore for Then have you find out what is the fate of that writ appeal? but that writ appeal they have mentioned in their नहीं तो वो writ appeal का क्या हुआ? अभी pending है. My lord, that writ appeal has nothing to do with this case. ठीक है. वे My lord, it is- इंटरवीनर है. देखिए श्री अविनाश जरगर फॉर द पिटिशनर, नन फॉर JDA. श्री आपका शुभ नाम बोलिए. अच्युत गोविंदम तिवारी. हैं? अच्युत गोविंदम तिवारी. अच्युत गोविंदम तिवारी. कल कोई दूसरे आए थे क्या आप ही आए थे? नहीं था सर. इसी नाम से आप ही आए थे? My brother also Kaustubh Tiwari, so his name was mentioned. Identical name. फिर उन्होंने आपका नाम क्यों बता दिया? No, my lord, it was me only. We look alike. अच्छा, यू ट्विंस हैं आप लोग? No, my lord, he is a younger brother. अच्छा. ये तो सिविल सूट जितना ही गहरा है ये, इनको कमिश्नर अपॉइंट करना पड़ेगा. हाँ, क्या लिखा? हैं? फॉर द इंटरवीनर. ठीक है. JDA has taken a stand that WA 84 of 2016 is pending and outcome of that WA will decide this petition. Office the petitioner to produce copy of
order sheets from WA 84/16 to point out the current status of the pending WA and other connected WA number 872/15 and 938/15. Let needful be done within 2 weeks. List thereafter. We list this case after disposal of said WAs. Period number 85. इसमें आइए जी इसमें रिस्पोंडेंट की डेथ हो गई है। हाँ उसका आइए पे नोटिस किया था लॉर्डशिप ने पिछली बार, पीएफ दे दिया है। आज में लगा दी 13/7 को तो नोटिस गया है। जी जी देखिएगा दिस वो 12/6 की लिस्ट में था इसलिए लग गया लॉर्डशिप। Notices have been issued to the proposed legal representatives of the respondents. Notices were issued on 19/7. Service is awaited. List in the week commencing 21 अगस्त 2023. Number 87. Number 87. But this is an appeal arising out of the order passed by the court whereby my application under Order 9 Rule 13 and application under Section 5 for condonation of delay was rejected. इसके बाद स्टे किस चीज का हो गया? Sir, execution proceedings, sir. अरे Page 33, sir, इसमें हाँ पेज 33 बताइए क्या है? Sir, in this case, the court came to the conclusion that in the original proceedings I was not served. Yet, my lord, the court declines to condone the delay of 7 days. ये lordship में kindly है, my lord, paragraph number 2 नीचे से 7वीं आठवीं लाइन सर। पैराग्राफ नंबर सर दूसरा पैरा इजरा प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है। हाँ सर इसमें नीचे से 7वीं आठवीं लाइन इस संदर्भ के मूल दावा 1 मिनट 2 2 4 5 6 7 1 2 3 4 में से 10-12 लाइन होगा सर। इस संदर्भ के मूल टुवर्ड्स राइट 1 मिनट बीच में सर, वहां से फाइंडिंग है। प्लॉट 1 2 3 18th लाइन का अगर नीचे से लेंगे तो 18वीं लाइन है। इस संदर्भ के मूल 18 लाइन यस इस संदर्भ में मूल दावा प्रकरण क्रमांक 58/11 के अवलोकन से पाया जाता है कि अनावेदक क्रमांक 2 जो इस मामले में आवेदक है उसके संबंध में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दैनिक भास्कर समाचार पत्र भास्कर इंदौर से प्रकाशन हेतु आदेशित किया, परंतु वह प्रकाशन दैनिक भास्कर इंदौर में न करते हुए नई दुनिया ग्वालियर प्रकाशित दैनिक भास्कर टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना और झांसी बुंदेलखंड वाले भाग में प्रकाशित हुआ और वह भी अनावेदक क्रमांक 2 इस मामले में आवेदक है उसके लिए नहीं है बल्कि एक अन्य आवेदक क्रमांक 1 से संबंधित जो मूल प्रकरण में शामिल है और मध्ययुन अनावेदक जो कि नई दुनिया जो इंदौर से प्रकाशित होता है 23 जुलाई 12 का संस्करण प्रकाशित किया, उसमें समाचार पत्र से कोई भी तामीली का आदेश प्रकाशित नहीं कराया गया। सीपीसी के आदेश 5 नियम 20(1) का के अनुसार समाचार पत्र में ज्ञापन द्वारा तामीली का आदेश समाचार पत्र से हो सकता है जिसका परिचालन स्थानीय क्षेत्र में होता हो, जिसमें प्रतिवादी अंतिम बार वास्तव में आप इंदौर के रहने वाले हैं सर। गाड़ी आपकी थी ये? जी सर, हम ओनर हैं सर और एक्स पार्टी अवार्ड था तो क्या इंश्योरेंस है क्या आपका? इंश्योरेंस था सर। पे एंड रिकवर का नहीं तो फिर किस ग्राउंड पे एंड रिकवर हुआ है सर? वो भी गलत है सर। क्या ग्रेजुएट पैसेंजर? नहीं सर, उन्होंने ये बोला है कि एफआईआर में ये लिखा है कि वो एफआईआर जो थी सर उसमें ये था कि वो सड़क से जा रहा था मार दिया, बट द कोर्ट डिसबिलीव दैट मिलॉर्ड एंड सेड कि प्रकरण से दर्शित होता है कि वो बैठ के जा रहा था। एफआईआर इज आल्सो ऑन रिकॉर्ड। अपील है क्या इसमें? तो फिर इसको सेटिस्फाइड करके भेजना पड़ेगा वापस से, लिमिट का ही फायदा है इसको। इतने
इतने साल से ये स्टे पड़ा हुआ है यहाँ पर 8 साल से। किसको? हाँ तो नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर ये रिमांड होगा और ये डिसाइड हो जाएगा कि जो हाँ किसको वापस करना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसमें सिर्फ हम ये कह दें, क्लियर कर देंगे कि सिर्फ लाइबिलिटी हाँ बैंक गारंटी दे दें, बैंक गारंटी दे दें और इंटरसी लाइबिलिटी जो है वो ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा आफ्टर हियरिंग हिम। भाई आफ्टर डिस्प्यूट ये है कि अगर गाड़ी इंश्योर्ड थी, नहीं आज पूरी बात तो सुने, गाड़ी इंश्योर्ड थी वो तो अंडरस्टूड है, तभी तो पे एंड रिकवर हुआ। इंश्योरेंस ही नहीं होता तो पे एंड रिकवर कैसे हो जाएगा? गाड़ी वो गलत है, वो गलत, मेरी ओपिनियन में वो गलत है। इफ देयर इज नो इंश्योरेंस पॉलिसी, ओनली इफ देयर इज वायलेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, देन ओनली देयर कैन बी पे एंड रिकवर। जब बीमा ही नहीं लिया तो कैसे पे एंड रिकवर हो जाएगा? मतलब दिस इज माय व्यू। खैर, तो अगर ब्रीच ऑफ पॉलिसी है, अगर ये प्रमाणित कर देते हैं कि ब्रीच ऑफ पॉलिसी नहीं है, तो लायबिलिटी विल बी बोर्न बाय द इंश्योरेंस कंपनी। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल फेयर बात है। बैंक गारंटी का आइडिया नहीं, आप ऑर्डर कर देते हो, राइट? तो बैंक गारंटी, अरे आप इतने बड़े वकील, बैंक गारंटी का आइडिया नहीं है आपको? नहीं मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी को देना, आप ऑर्डर कर देंगे? हाँ कर देंगे, ठीक है। This writ petition is MA is filed under Order 43, Rule 1D of Civil Procedure Code 1908, being aggrieved of judgment dated 12/2/2015। ये उसी दिन हो जाना चाहिए था रिमांड। एक्चुअल में इन्होंने गलती क्या की, ऑर्डर 9/2/30 की एप्लीकेशन लगाई, वो डिले जो लगाई, और जिस तारीख को एप्लीकेशन पेश की है उस तारीख, जिस तारीख की नॉलेज होगी वो बता रहे हैं, नॉलेज से डिले फाइलिंग तक के जो 7 डेज का जो डिले था वो नहीं है। ठीक है, चलिए उसको क्यों ने खारिज की? हाँ ठीक है, ये इनकी गलती से वो खारिज की। चलिए ठीक है, क्या लिखा? इतना जजमेंट नहीं, ऑर्डर डेटेड इतना whereby Bani passed in MJC number 6 of 2014, whereby learned additional district judge Bijawar Chhatarpur refused to condone the delay in filing the MJC and refused to set aside ex parte judgment and award ex parte award dated इस तारीख का अवार्ड है 18/10/2012 full stop. Next para. It is submitted that the only issue involved is twofold as to whether the deceased was a gratuitous passenger or was injured was a gratuitous passenger or was traveling on road when he was hit by the offending vehicle. Full stop. If he was a gratuitous passenger, then the finding of the tribunal shall remain intact. But if he was traveling on road, then liability may be fastened jointly on the owner, driver, and the insurer of the vehicle. Full stop. However, for the reasons stated in the impugned order, appellant herein could not appear before the tribunal, and there is justification for it which has been accepted by the learned additional district judge Bijawar, that inappropriate publication was made in a newspaper which is circulated in the areas of Tikamgarh, Chhatarpur, Panna and Jhansi, and not the one which is circulated in the area of Indore where the present appellant is residing, though there was direction of the court to publish notification in Dainik Bhaskar circulated from Indore. Dainik Bhaskar published from Indore, and therefore once this finding was recorded, then the learned additional district judge Bijawar was not required to undertake further exercise on the basis of technicalities. Full stop. Thus, it is evident that learned additional district judge Bijawar erred in appreciating the spirit of law and the facts in the correct perspective. Impugned order is set aside. Full stop. At this stage, Shri Rakesh Jain submits that they have already paid the amount of compensation in favor of the claimant. Full stop. Since inter se liability is to be
decided between the owner of the motor vehicle and the insurer, comma, it is directed that present petitioner shall furnish a bank guarantee in the court, in the tribunal for a sum of rupees. कितना amount दिया है आपने? 3,75,000 along with the accrued interest thereon which has been paid by the insurance company, for which insurance company will furnish exact details of exact amount within 7 days. अरे आपका हो गया ठीक, ठीक है ना? आप लोग भी तो इसको क्यों नहीं आपने एप्लीकेशन लगाई? ये कई बार 9, 12, 16 क्या था, 16 को पावर को ये एप्लीकेशन कभी नहीं लगी। हम लोग प्रयास कर रहे थे हो जाए। हम तो खुद जो आज कह रहे हैं वही चीज हम तब भी कह रहे हैं। ये तो मैं हम खुद ही कह रहे हैं कि पहले दिन ही कोर्ट को देख के कर देना चाहिए था ये बात। क्या वो? The amount, exact amount deposited by them in favor of the claimant, and if such bank guarantee is furnished by the present appellant within 30 days from today, then tribunal shall consider and they will permit him to file his WS and lead evidence full stop after giving opportunity to the rival parties, comma, inter se liability be fixed by the tribunal. To that extent the award is satisfied. To that extent award is satisfied. कोई डेट दे दीजिए सर ट्राइब्यूनल की। ट्राइब्यूनल में अपीयर होने की डेट डाल दीजिए 21 अगस्त 2023। On the behalf of the complaint. ये कौन सा नंबर था भाई? हाँ डाल दीजिए इनका नाम, कौन सा नंबर था ये? 87। हाँ इनका नाम डाल दीजिए। बीजे चौरसिया। बीजे चौरसिया। आप बीजे चौरसिया है? मेरा पावर में नाम नहीं है। तो आपका नाम बताइए ना। SN पांडे। SN पांडे। For the complainant. Serial number 96. हाँ? 96 को कल लेना है, कल लीजिएगा फिर काय को फुआ देना आज। Serial number 103. Serial number 103. Sanjeev Banerjee, Rajiv Yadav. None for the appellant. This miscellaneous appeal is filed under Section 173 of the Motor Vehicle Act by the insurance company being aggrieved of award dated 3/8/2018 passed by Learned First Additional Motor Accident Claims Tribunal, Lucknow District, Sivni, in MVC number 10092/2016 on the ground that amount of compensation awarded in favor of the claimant on claimant is excessive. Full stop. Perusal of the memo of appeal reveals that this appeal is filed on the ground that the findings recorded by the tribunal are perverse. Full stop. There is lack of appreciation of the facts. There was no evidence in regard to the income of the claimant, and therefore tribunal erred in considering the income of the claimant at rupees 60,000 per annum. Full stop. It is further mentioned that award of sum of rupees 3,60,000 under the head of loss of income is based on assumption and is on the excessive side. Next para. Nobody is appearing for the respondent claimants also. Next. After going through the record, comma, and the record and impugned award, it is evident that accident took place on 9/6/2016 at about 12:15
hours on Chapara Bhimgarh Road when bus number MP22P-0317 being driven rashly and negligently had hit the vehicle in which claimant was traveling. Full stop. Claimant was traveling, that is vehicle number MP22G3168. Full stop. Factum of accident is not disputed. Full stop. Now the issue is in regard to computation of compensation. Full stop. Issue number 2 was framed in regard to the nature of injuries. Full stop. Dr. P. Surya was examined and he deposed that he was member of the District Medical Board Sivni. He had examined the claimant Sheikh Yaqub. He had issued disability certificate certifying 40% disability. As for the discharge summary, Exhibit P7, it was found that on MRI there was injuries were found on cervical spine, which had which had sustained displaced fractures involving the posterior elements of C5 to C7 vertebra with cord oedema contusion. Full stop. Learned Tribunal has recorded a finding that grievous injuries were caused to Sheikh Ayub. Full stop. Then coming to issue number 5, which deals with the quantum of compensation, comma, it has come on, Learned Tribunal has accepted age of the claimant to be 50 years. Full stop. Learned Tribunal accepted his income at rupees 5,000 per month. Full stop. On the date of the accident, that is 9/6/2016, even minimum wages were of higher rate than the income construed by the tribunal. Therefore, this submission made by the this ground raised in the appeal that income of rupees 60,000 per annum is on the higher side is not made out. Full stop. Thereafter, taking into consideration this finding that this finding recorded in para 24 that claimant would remain immobilized and will not be able to earn livelihood for 6 years is without there being any material available on record. There is no such evidence that claimant will not be able to earn his livelihood for a period of 6 years. Full stop. This finding being cryptic and contrary to the medical evidence led by Dr. P. Surya, deserves to be set aside and is set aside. Therefore, appeal is allowed
it is directed that the amount of sum of rupees 3,60,000 awarded under the head of loss of earning income for a period of 6 years is arbitrary and is not based on any material. Full stop. Therefore, looking to the nature of the injuries, comma, loss of earning capacity for 1 year can be accepted, and therefore the award is reduced by to the extent of rupees 3 lakhs, which in the opinion of this court has been paid in excess. Full stop. Thus, in place of rupees thus in place of rupees 9,12,376, claimant will be entitled to only a sum of rupees 6,12,376. With this modification, appeal is disposed of. Other terms and conditions of the award shall remain intact. नंबर 106 104 का क्या हुआ है? बढ़ गया क्या? आज ठीक है, चलिए लॉर्डशिप इसको कल के लिए रख लें, कल के लिए रख दीजिए। ठीक है, नंबर 100 ठीक है, नंबर 107 None for the petitioner. Petition is dismissed for want of prosecution. इनका नाम डाल दीजिएगा फॉर दिस डेट। वही मैंने देरी खत्म। कितने? हाँ, 16 लीजिए। यस यस लिस्ट ले लीजिए। नंबर 58 Before argument starts, Your Lordship, on last date, subject to deposit cost of rupees 5,000 rupees. Time was granted to file additional return. We have not filed. Though communication has been made. तो फिर क्या चाहते हैं आप? लिखिएगा श्री पीयूष भटनागर, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्री अमित शर्मा, लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट। श्री अमित शर्मा submits that on 11/7/2023, subject to payment of cost of rupees 5,000, time was granted to file additional return in compliance of order dated 20/2/2023. Please stop. It is submitted that despite communication made to किसको दिया communication? Communication to respondent number 1, the collector Bhopal and Respondent number 1 and collector Bhopal and subdivisional officer. and subdivisional officer Tehsil Huzur. No steps have been taken by the respondents to file additional return. Respondent number 3 has to come, Your Lordship, for Full this. stop. Subject to further cost of rupees 10,000 to be recovered from the erring officials. Further 2 weeks time is granted to make compliance of the earlier order, failing which right to file additional return shall stand closed. Your Lordship. Obliged. serial number 52 serial number 52 Get appeal for enhancement. Huh? Appeal for enhancement. जी That of unmarried. future prospect नहीं हैं? Future prospect. ठीक है, दे देते हैं। Future prospect of. डेट ऑफ एक्सीडेंट क्या है? 20/5/19 और इनकम कितनी मांगी? 7700 कितनी है? वही है सर, उसी बेस पे ही है। 20/19 वाला दिया है कुछ
लिखा हो। हाँ 16 का नहीं तो है ये। 20/5/19 जी। 7700 मान लो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देना है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो माइलॉट 1/3 में भी हैं 1/3 भी नहीं किया है, वो क्या है एज पर सलवा मर्मा 19 साल का लड़का था, फादर मदर है, फादर माफी हो बैचलर में तो 50% ही होगा। 50%। देखिएगा दिस अपील इज फाइल्ड बीइंग जाएगा रिसीव्ड ऑफ सीधा द जो अवार्ड ऑफिसर डेटेड 26/11/22 passed by learned 15th additional motor accident claims tribunal Jabalpur in MACC number 2339 2339 oblique oblique 2019 on the ground that deceased was son of the appellants. Full stop. He was aged about 19 years. 19 years. Full stop. Tribunal has though considered income of the deceased at rupees 7,700 per month, but has not added 40% future prospect in the light of the law laid down by Supreme Court in case of Pranay Sethi. Full stop. When 40% is added, then annual dependency will come out to rupees 64,680 after accounting for 50% living expenses, and when multiplier of 18 is applied, total pecuniary compensation will come out to rupees 11 lakhs 64,240 in place of rupees 8,31,600. no, full stop. Over and above which claimants will be entitled to a sum of rupees 30,000 under the head of non-pecuniary compensation. Full stop. Thus, there will be 8 लाख कितना दिलाया था? 8,31,600। इलाज टोटल का दिला है टोटल है 9,54,600। कहाँ है वो पैरा नंबर? पैरा नंबर 36 का है, 37 के ऊपर लास्ट में 9,54,600 टोटल। Full stop. Besides this, tribunal has awarded a sum of rupees 44,000 each to each of the parents under the head of loss of child consortium. Thus, total compensation will come out to rupees 12 lakhs 82,240 against a sum of rupees 9 lakhs 54,600 awarded by tribunal. Thus, there will be addition of rupees 3 lakhs 27,640 in addition to the amount paid by the awarded by the tribunal. This additional amount will also earn interest at the rate of 6% from the date of filing of the claim petition till the date of actual payment. Other terms and conditions of the award shall remain intact. माइलॉट एक प्रार्थना थी मेरी, हाँ। मेरा 49 नंबर पे था, प्रेजेंस मार्क हो जाए। अब तो साइन वाइन नहीं हुआ होगा तो कर दीजिएगा, क्या हो गया? डाल दीजिएगा नाम इनका। क्या शुभ नाम है आपका? सतीश चौरसिया। तो क्या कर दिया उसमें हमने? सर डिस्पोज आप बता रहे हैं। हाँ ठीक है, तो डिस्पोज ऑफ कर दिया होगा। चलिए In terms of the honorable court order, my lords, this affidavit had to be filed, my lords. The affidavit of the superintendent of police had to be filed. नहीं, कोई जरूरत नहीं है भैया, अब आप लोग को नहीं किया तो बस ठीक है। There was an order by my lords. We'll pass order. There was an order by my lords. I seek permission to. परमिशन तो सुबह फाइल होता है, 4 बजे परमिशन नहीं मिलती डॉक्यूमेंट फाइल करने की। You can challenge this order, my refusal to grant you permission. You can. The affidavit came at around. What can I do? What can I do? There is non-compliance of order dated 12/7/23. No affidavit is filed. Subject to payment of cost of rupees 5,000 to be recovered from the erring superintendent of police. 3 days time is granted to file affidavit. List after 3 days. Just most आने दीजिए कॉस्ट पे।
ये तो मैं लगा सकता हूँ। नहीं सर, हाँ। मैं बाकी तो आप लोग जाके वहाँ कुछ बोलते हैं। Lord, there is a connected case also. हाँ, कनेक्टेड केस में भी इनको जवाब देना है क्या? It's a 482 petition, Lordship. हाँ, तो साथ में सुनिए।